Srila Govinda Swami Srila Gurudev ki jai. Samaveda Bhakta Binda ki jai. Gaura Premanande. Hare Krishna. You guys came back? आप सब वापस आ गए। What's wrong with you? आप लोगों के साथ क्या गलत है? I thought we would have scared you off. मुझे लगा कल हमने सबको डरा दिया था। Where's the AC? No AC? No electricity. It's like gymnasium in here, you know? ऐसा लग रहा है यहाँ पे हम Transcendental health program. दिव्य स्वास्थ्य कार्यक्रम हो रहा है। Body, mind, and soul. शरीर, मन और आत्मा। Baladev wanted everything to be very warm in here tonight. बलदेव चाहते थे कमरा बहुत गर्म हो आज रात। So his desire was stronger than our desire. तो इनकी इच्छा शक्ति हमारी इच्छाओं से ज़्यादा मजबूत थी। So therefore he's happy, it's warm, now we can hear something nice. तो अब खुश हैं, अब गर्मी है यहाँ, अब हम कुछ अच्छा सुन सकते हैं। Very good. बहुत अच्छा। So what are we talking about? हम क्या बातें कर रहे थे? Shoulder a little sore? Hare Krishna. Om Jnanatamana Sharananjana Shalakaya Chakshun Militam Jana Tasmai Shri Guru Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Shri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. What's happening? क्या हो रहा है? He's lived in India so long, it's either off or full blast. He doesn't understand like anything in between. You know? भारत में इतना रह चुके हैं, अब इनको समझ में नहीं आता है कि It's confusing. It's either on or off. या पूरी भ्रमित है, या तो ऑन होगा या ऑफ That's होगा। proof you've lived in India for a long time. ये प्रमाण है कि आप भारत में बहुत साल से रह रहे हैं। That's a proof. You're not expecting anything else. It's either on or off. इन्होंने साबित कर दिया है, या तो बंद होगा या चालू रहेगा, बीच में कुछ नहीं होता। Use your common sense. What do you think? अपना सामान्य बुद्धि का Wasn't the idea like not too fast, not too slow, like golden middle? ऐसा एक विचार है कि ना तो बहुत ज़्यादा तेज ना बहुत धीरे, Is that बीच the का। golden middle? तो क्या एकदम बीच का अपने रास्ता निकाला? What numbers are on? कौन से नंबर पे है? 2. So it goes to how many? 8 or 10? 4. Goes to 4? So golden middle means 2? तो 4 तक जाता है, इसका मतलब So 2 it's सबसे more or बीच less 2. कम या ज़्यादा 2 है। Wow, this is going to be fantastic. आज बहुत मजेदार होने वाला है। We're going to jump from this platform to Shuddha Sattva platform. आज इस स्तर से हम शुद्ध सत्व स्तर पे जाएंगे। It's beyond Sattva Gun. जो सत्व गुण से भी ऊपर Forget है। about Sattva Gun. सत्व गुण भूल We're जाइए। going for Shuddha Sattva platform. हम आज शुद्ध सत्व जाएंगे। Because all these topics are on that platform. क्योंकि सारे विषय उस स्तर पे हैं। So problem is we're trying to understand it all on a 3-dimensional materialistic platform. तो समस्या ये हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं 3 आयाम वाले भौतिक स्तर से। We're trying to weigh and measure everything based on our intelligence and our experience in the material world. हम मापने का प्रयास कर रहे हैं हमारे भौतिक जगत के इंद्रियों और हमारे अनुभव के माध्यम से। And Prabhupada said everything in the material world is faulty. और प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत में सभी कुछ गलतियों से। And what are the defects of material consciousness? और भौतिक चेतना के क्या दोष हैं? Imperfect senses, अपूर्ण इंद्रियां, prone to make mistakes. गलती करने की आदत। Number 3, Cheating. illusion. We're easily illusion. तीसरा नंबर। And the 4th one? Tendency to cheat. Oh, come on. He knows very well. तो मोह में चले जाना चौथा है ठगने की प्रवृत्ति। तो इनको बहुत अच्छे से पता है। Prabhupada said these are the problems with material consciousness. प्रभुपाद कहते हैं भौतिक चेतना में ये समस्या है। Imperfect, contaminated mind, intelligence, and senses. अपूर्ण दूषित मन इंद्रिय और बुद्धि होती है। With that contamination, we make so many mistakes. और उस कलमश के साथ हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। We're easily illusioned हम तुरंत मोह में चले जाते हैं। by mis and disinformation, गलत और दोषपूर्ण जानकारी and we से। have a cheating propensity. और हमारे अंदर ठगने की प्रवृत्ति है। And we're in a Kali Yuga और हम कलियुग में हैं, where the brain substance is not so much, जहाँ हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं है।
And we're being inflicted by threefold miseries under material modes of nature. और 3 तरह के भौतिक कष्ट प्रकृति के गुणों के अधीन हमें निरंतर मिल रहे हैं। And then we're trying to understand what's happening in Vaikuntha Loka. और हम ये समझने का प्रयास करें कि वैकुंठ लोक में क्या हो रहा है। So Krishna's devotees, तो कृष्ण के भक्त, holy name, दिव्य नाम, धाम, the leelas, pastimes, उनकी लीलाएं, everything about it is on Shuddha Sattva transcendental platform. उनके विषय में सब कुछ शुद्ध सत्व और दिव्य स्तर पे है। So if we're trying to understand Krishna, Krishna says, I'm in everyone's heart. तो अगर हम कृष्ण को समझने का प्रयास करें, कृष्ण बता रहे हैं मैं सभी के हृदय में। How are we going to understand that unless Krishna reveals himself to us? और इसको हम कैसे समझ पाएंगे अगर कृष्ण स्वयं को हमें प्रकाशित ही नहीं करेंगे। Now it says if you cry to God, you cry to Krishna. और कहते हैं अगर आप कृष्ण के लिए रोएंगे, भगवान के लिए आप रोएंगे। Like baby crying for the mother. जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है। If we don't feel perceived suffering, there's no crying. अगर हम दुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो हम रोएंगे नहीं। But if we're conscious enough, sensitive enough, intelligent enough, then we'll feel the suffering, we'll cry. तो अगर हमारी चेतना पर्याप्त है, हम पर्याप्त अनुभव कर पा रहे हैं, बुद्धिमान है, तो हम सब दुखों Maybe का अनुभव not करके रोएंगे। externally, हो सकता है बाहर से नहीं रोएंगे मेरे but in भाई, the heart. लेकिन हृदय में हम रोएंगे। Srila Prabhupada in Bhagavad Gita said, quotes Henry David Thoreau, that the men lead lives of quiet desperation. और श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक की बातें कही, हेनरी डेविड थ्रो, कि हर एक मनुष्य शांति से दुख का जीवन जी रहा So है। everyone's struggling for existence, तो सभी लोग जीवन के लिए संघर्ष करते leading lives of quiet desperation. हैं और जीवन चुपचाप हताशा के साथ जीते We रहते may हैं। not tell anybody, किसी को हम बता नहीं रहे, but we may try every single material adjustment to see if we can fix it. और हमने हर भौतिक व्यवस्था करने का प्रयास किया ये देखने के लिए कि हम इसको सुधार कर पाएंगे या नहीं। And when nothing material seems to really be working, और जब हमने देखा कोई भी भौतिक चीज काम नहीं आ रही, the heart, the mind is still disturbed, हृदय मन अभी भी परेशान है, still unsatisfied, अभी भी असंतुष्ट है, then we may go to the church, तब हम हो सकता है गिरजाघर जाते हैं, मंदिर go जाते to हैं, some mountain, या किसी पर्वत में go to चले जाते the हैं, ocean, या सागर में चले जाते हैं, somewhere. कहीं तो हम जाते हैं। And somehow or other, some kind of cry out to God. If you're there, if you can hear my prayer, और किसी तरह से हम भगवान के लिए रोते हैं, अगर आप कहीं हैं, अगर मेरी प्रार्थना आप सुन सकते हैं, nothing else working, कुछ भी काम नहीं आ रहा मेरे जीवन में, I can find no peace, no freedom from anxiety, disturbance of my life. मुझे कोई शांति नहीं मिल रही, कोई मुक्ति नहीं मिल रही चिंताओं से, जीवन के परेशानियों से, Therefore, making so many bad decisions, और इसलिए मैं जीवन में बहुत सारे गलत and then फैसले ले रहा हूँ, suffering all of those bad decisions. और सारे गलत फैसलों का दुख भोग रहा So हूँ, we're just digging our own hole, और खुद का ही कब्र हम खोद रहे हैं। and it becomes, Prabhupada said, becomes bewildering. और प्रभुपाद बता रहे हैं हमें भ्रमित कर देना है, Material world is just such a place of complexity. और भौतिक जगत पूरी तरह से जटिलताओं से भरा है। And when all of this material adjustments, psychologically, materially, when none of that really work, then we may turn towards a spiritual life. और हमारी सारी भौतिक व्यवस्था, हमारी मानसिक व्यवस्था से हम जितने भी चीज समाधान प्रयास करते हैं वो असफल हो जाता है, तब हम आध्यात्मिक जीवन के प्रति And जाते the problem is, if we're not in high enough consciousness, we're not feeling any suffering, no real difficulty. हैं। और समस्या ये अगर हमारी चेतना उन्नत नहीं है तो हम किसी दुख का अनुभव नहीं कर पाते We're जीवन में। callous. हम बहुत I जड़ remember my चेतना में हैं। Gurudev used to say, when you first came, you were crying. You were crying to God, please help me, please save me. और मेरे गुरुदेव बताया करते थे जब आप पहली बार आए थे तो आप भगवान के लिए रो रहे थे कि भगवान मुझे बचाइए, Who are you? Can I know you? क्या आप कौन हैं, क्या मैं आपको जान सकता हूँ, Can I serve you? क्या मैं आपकी सेवा कर We're सकता हूँ। asking all those questions, otherwise we wouldn't be here. हमने ये सारे सवाल उठाए वरना हम यहाँ आज मौजूद नहीं होते। But my Gurudev used to say, it's not the one time crying. लेकिन मेरे गुरुदेव कहा करते थे बस एक बार रोना पर्याप्त नहीं है। So Gurudev said, when you came initially, you were very simple. तो मेरे गुरुदेव बताए जब आप शुरुआत में आए थे तो आप बहुत सरल थे, You're just coming for some solution, आप कोई समाधान ढूंढने आए थे, or you want to surrender or serve God. या भगवान को शरणागत या उनकी सेवा करने आए थे। So with that intention, you came to the temple. तो इस भाव से आप मंदिर आए। Everyone remember, first day you got the Prabhupada's books. सभी को याद है पहले दिन प्रभुपाद की कोई किताब मिली You're हो, reading Prabhupada's books, Bhagavad Gita, प्रभुपाद किताब, Science of किताब, Self-Realization. आत्म साक्षात्कार का That was one विज्ञान, of the first books I read. ये सब पहली किताबें जो मैंने पढ़ी थी। And then who convinced us that we should go in this direction? और किसने हमें आश्वस्त किया कि हमें अब इस दिशा में जीवन में आगे बढ़ना चाहिए? Krishna. कृष्णा ने किया, Because he's in the heart of every living entity. क्योंकि वो सभी जीवात्माओं के हृदय में स्थित So when we started reading Bhagavad Gita, we don't know Sanskrit. तो जब मैंने We don't know Hindi. हमने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया था, हम संस्कृत हिंदी नहीं We जानते, don't know about Vedic culture. हम वैदिक संस्कृति के बारे में नहीं जानते थे। The only Indian I knew was Gandhi. एकमात्र भारतीय व्यक्ति जिनको मैं जानता था वो गांधी,
Right? There are no Indians, living in my town. मेरे शहर में कोई भारतीय व्यक्ति नहीं रहता था। I went to Christian schools. There was no Indian going to school there. और मैं ईसाई स्कूल में जाता था, वहाँ पे किसी तरह के भारतीय बच्चे पढ़ने भी नहीं आते थे। So what exposure do we have to Vedic culture? तो वैदिक संस्कृति के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। We're taught that everything started like when Jesus came. हमें तो ये सिखाया कि सब कुछ शुरू हुआ था जब ईसा मसीह आए थे। So if you look at all the historians, all of the philosophers, right? Everyone talking like from Roman, Greek empires, right? और जितने बड़े-बड़े इतिहासकार, दार्शनिक जो है रोमन सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता, वहाँ से शुरुआत बताते हैं। It's almost like nothing happened before that. ऐसा कि उसके पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं था। And it's always so strange to me, like how did the whole world just really dismiss Vedic culture? और ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि पूरा विश्व कैसे वैदिक सभ्यता से अलग हो गया। And I used to work at Harvard University. It's a good university in America. और हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ मैं काम करता था। And they used to have all of these buildings with all different types of explanations of different cultures. और एक अलग बिल्डिंग थी जिसमें अलग-अलग तरह के सभ्यताओं के बारे में, विभिन्न जगहों के बारे में बताया जाता था और कुछ इतिहास के बारे में वहाँ बताया जाता था। And then they're talking about the Sanskrit. और वहाँ पे वो संस्कृत की बातें करते थे। And they're saying it's the first original language known to man. और कहते हैं ये सबसे पहली भाषा जो मनुष्य की जानकारी में है। And so all other language came from Sanskrit. They're admitting that. और सारी अन्य भाषाएं संस्कृत से आती हैं। उन्होंने इस बात So को स्वीकार who's किया। speaking such a sophisticated language of the demigods, of the spiritual world? कौन इस तरह की दिव्य भाषाएं, देवी देवताओं की भाषाएं, स्वर्ग लोक की भाषाएं बोलते हैं? So where's the explanation of that culture? तो उस संस्कृति का विवरण कहाँ दिया गया है? Practically, we don't know anything about तो it. इतिहास में हमने इसके बारे में विवरण कहीं नहीं देखा। And when Srila Prabhupada came in 1960s, New York, Boston. और श्रील प्रभुपाद जब 1960 में न्यूयॉर्क, बॉस्टन आए, Boston, New York. बॉस्टन आए फिर न्यूयॉर्क। Of course, he's from New York. I was from Boston. वो न्यूयॉर्क से है, मैं बॉस्टन से। So we always have this little rasa. हम दोनों के बीच थोड़ा रस है। Don't lean against the wall. दीवार से लगकर मत बैठिए। Please excuse me. कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। My Gurudev, he always taught us like that. मेरे गुरुदेव ने हमेशा ऐसा सिखाया है हमें। He make a joke, say, because you might fall asleep. वो मजाक करते थे, हो सकता है आप कहीं सो ना जाएं। But actually, it's because out of respect of the information. लेकिन असल में वो जानकारी दी जा रही है उसके सम्मान के लिए ऐसा करने के लिए। I told one devotee the other day, I never saw him after that. I don't think he digested it so well. तो मैंने एक भक्त को कह दिया पहले दिन ही, तो उसके बाद हो सकता है उन्होंने हजम नहीं कर पाया, तो उसके बाद से वो दोबारा आए नहीं। And Gurudev would say, like, if I see it and I don't tell you, because I don't want to disturb you, then I'm not being responsible. तो गुरुदेव कहा करते थे, मैंने आपको देखा वो करते हुए, लेकिन मैं आपको कह नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से हट रहा हूँ। So he says, I'm duty bound to say. तो उन्होंने कहा मैं कर्तव्यबद्ध हूँ बोलने के लिए। Even maybe he doesn't want to say. हो सकता है वो कहना नहीं चाहता। Because he knows everyone falsely will not nicely understand or accept it. क्योंकि उनको पता था लोगों का मिथ्या अहंकार है, वो अच्छे से स्वीकार नहीं कर पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। But still helpful to us. लेकिन फिर भी ये हमारी मदद करता है। Before he was sitting on the couch. पहले वो जो है सोफे पे बैठते थे। He was having people fanning him. हम लोग उनके आगे पंखा चलते थे। It was unbelievable. We were sending garlands over there. और बहुत विश्वसनीय बात है, जी हम उनके लिए माला भेजते थे वहाँ। And then he's saying, I don't know why I can't hear anything. और फिर वो कहते थे पता नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। And then somehow Krishna is in his heart. और किस तरह से क्योंकि कृष्णा उनके हृदय में Gave है, him intelligence उन्होंने उनको बुद्धि दी to just be a little humble कि थोड़ा विनम्र होइए and sit on the floor. और जमीन पे बैठिए। And so then he got to ask a question. और फिर उनको सवाल पूछने का अधिकार मिला। Before that, we were having trouble fielding his question. और उससे पहले हमें मुश्किल हो रही थी उनको समस्या उनके सवालों को So we're पूछने। heading in right direction. तो ये सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। You're writing it all down? क्या आप ये सब लिख रहे हैं? So what were we talking about before that? हम क्या बात कर रहे थे इसके पहले? Vedic culture got ignored. Yeah, so we had no experience about that. तो हमारा कोई अनुभव नहीं था इसका। We made somehow praying to God, praying to Jesus. तो हम किसी तरह से भगवान से, ईसा मसीह से प्रार्थना कर रहे थे, अल्लाह। Whatever religion background you might have, or even calling out, is there even a God? Can He even hear me? जिस भी धर्म, जिस भी संप्रदाय का पालन कर रहे थे, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, अगर कोई भगवान है, और अगर मेरी प्रार्थना सुन सकते हैं। Prabhupada gives example how with this electronic machines and now with the internet, right? You can go
thousands and thousands of miles in a split second, right? और प्रभु उदाहरण दे रहे थे जैसे आजकल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ चुके हैं, आप हजारों मील जो है 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। Sound, now picture. और पहले जो है शब्द और अब तस्वीर भी। When we were growing up, they used to have these cartoons, you know, like about driving around in the space. जब हम छोटे थे हम कार्टून देखते थे कि वो जो कुछ है वो लोग अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। And everyone had the Jetsons, right? Do you remember those? और सबके पास कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती थी। They all had the spacecrafts. और जो है अंतरिक्ष विमान लेके उड़ रहे होते थे वो। And then they used to open up this thing and they could talk to someone over it was like a laptop. और फिर वो ऐसा कुछ चीज उठाते थे जैसे लैपटॉप जैसा दिखता था और उसके माध्यम से किसी और व्यक्ति से बात कर रहे होते थे। So it was more than a telephone. You could see them, talk to them, right? तो वो टेलीफोन से ज़्यादा था, उनको देख सकते थे, उससे बात कर पाते थे। 1970s. और ये 1960-70 के दशक की बात है। They have all of this thing already there. तो कैसे ये सारी चीजें उनके पास पहले से थी? And it says the military, they're like 30, 40, 50 years ahead of what comes out here. और ऐसा कहते हैं कि सेना के पास जो ये सारी चीजें 30-40 साल आगे पहले ही हमसे आ जाती है, जिससे पहले हम यहाँ तक आने से पहले। So all of these Facebook and Twitter, right? What is these other ones? Instagram, right? These are all Department of Defense, CIA development. It's called DARPA, Defense Agency Research and Development Department. That's where it all came from. तो ये सारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सारे असल में CIA के सुरक्षा विभाग के बनाई गई चीजें हैं और इसको डार्पा कहते हैं। Also Microsoft. और माइक्रोसॉफ्ट भी वही चीज। So all of those companies, right? That was all being done in the government control. तो ये सारी कंपनियां सरकार के अधीन रहकर बनाई गई। And then they just taxed all of the people, you know, billions and billions of dollars. और लोगों से टैक्स वसूला जाता है करोड़ों रुपए। And then financed the development. और फिर उन सब चीजों को प्रगति करने के लिए और पैसा दिया जाता है। You didn't know all of this, did you? क्या आप ये सारी बातें जानते थे? It's amazing, isn't it? बहुत अद्भुत बात है। Everything impossible can become possible. कि असंभव चीज भी संभव हो जाती है। And then what happened was then when they pretty much perfected all of those Microsoft and Facebook and Instagram, all of these things, right? और बाद में क्या हुआ जब इन्होंने इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, Then they just basically selected Gates and Zuckerberg, right? And Jack Dorsey and all of these people, and they just basically gave them those companies and made them the face of those companies. तो फिर बाद में इन लोगों ने गेट्स, जुकरबर्ग और ऐसे डॉर्सी ऐसे लोगों को जिनके पास चेहरा दिखाने के लिए पूरे तरीके से कि इन्होंने ने ये सारी कंपनी को तैयार किया। And they made a deal with them. और उनके साथ एक Because the citizens who taxes paid for it. क्योंकि जो नागरिक हैं जो टैक्स देंगे इन The लोगों को टैक्स government देंगे। stole it. These people stole it. और इन लोगों ने चुराया, सरकार असल में चुरा रही है। Selected somebody to now manage it. और कुछ लोगों को सरकार नहीं चुना, उन And they कंपनियों made को up all चलाने these के stories. Oh, we were studying at Harvard, and we did this. You know, it's all, they all had some kind of story how it all developed, isn't it? और फिर उसके बाद उसके पीछे की कहानियां बनाई जाती हैं कि वो लोग जो है हार्वर्ड ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। And then they become the richest people on the planet. और फिर वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। Empowered oligarchs with all the money, all the cash, all the influence. और फिर सारा पैसा, सारा प्रभाव उन्होंने सारा सभी जगह प्रभावित किया। And they're controlling all of the narratives. और जितने सारे खबरें अखबारों को उन्होंने नियंत्रण कर लिया। Right? Just like in America, when they started the oligarchs, they bought all the newspapers. तो जब सबसे पहले अमेरिका में होलीगॉड शुरू हुआ तो उन्होंने सबसे पहले सारे अखबारों को खरीद लिया। So there's no television. तो कोई उस समय टेलीविजन नहीं था। Just everyone is getting through the news. सभी लोगों को अखबारों से मिलता था जानकारी। So they just bought all the तो newspapers. उन्होंने सारे अखबारों को खरीद लिया। And then when the television came, then they bought all the television और जब channels. टेलीविजन आया तो उन्होंने सारे टेलीविजन चैनल को पैसे देके खरीद And when the लिया। social media was all developed, then they bought all of that as well. और जब सोशल मीडिया आगे बढ़ा तो उन्होंने सारे सोशल मीडिया को भी So खरीद all लिया। of that information, तो ये सारी all जानकारियाँ, of that perception, ये सारे अनुभव, all of that narrative, ये सारे खबरें, all of that mis and ये disinformation, सारी गलत जानकारियाँ, दोस्त we're जानकारियाँ hearing हम जो सुन रहे हैं day and night, our whole life. दिन रात पूरे जीवन हम सुन रहे हैं।
And the whole thing is faulted. और पूरा चीज The गलतियों whole से thing भरा is है, based on a lie. हर चीज पूरे झूठ पे And they're आधारित just है basically contaminating and controlling everybody's mind and senses. और ये दूषित कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है सभी लोगों के मन और उनके इंद्रियों And को। of course, that's all an extension of Maya's intelligence and Shakti. और ये असल में माया के शक्ति का प्रभाव है And in that way, everyone is contaminated in ignorance. और इसी तरह से सभी लोग दूषित हो गए हैं अज्ञान में आकर And now we're filled with so much disinformation. और हम सारे गलत दोषपूर्ण जानकारियों से हमारा दिमाग And we're भरा हुआ है bombarded with the eyes, the ears, all the senses. और हमारी आंखों से हमारे कानों में सब तरफ से खबरें हमारे अंदर बमबारी की जा रही है। So we're talking about all of the social media companies, हम बात कर रहे हैं all of the सारे television media company, mainstream media, सोशल मीडिया कंपनी और सारे टेलीविजन सबसे मुख्य जो प्रचार करते हैं वो चैनल्स, all of the newspapers, magazines. सारे अखबार, मैगजीन, There's just a select few people who own and control all of those things. कुछ चुने हुए चुनिंदा लोग ही इन सारी चीजों को उन्हें खरीद कर रखा है और उनके नियंत्रण में ये सारा कुछ चल रहा है। Now, when you want to break away from all of that, तो अब आप इन सब चीजों से अगर बचना then चाहते they हैं say, "Oh, you're brainwashed." तो लोग बताते हैं कि आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, But we're being programmed from the beginning of the life लेकिन हमारे जीवन के शुरुआत से ही हमें ब्रेन वॉश with all of this प्रोग्राम किया जा रहा है। disinformation, गलत दोषपूर्ण जानकारी हमारे अंदर डाली जा रही and है it's all based on worship of man and celebrities. और ये सारा आधारित है कैसे लोगों और बड़े-बड़े सेलिब्रिटियों की पूजा की And जाए then it's just a gradual degradation of values and qualities and behavior. और धीरे-धीरे पतन हो रहा है मोल का, नैतिक शिक्षाओं का और व्यवहार का लोगों के So अंदर। it's just contaminating and breaking everyone down personally, तो ये दूषित कर रहा है, लोगों को तोड़ रहा है, व्यक्तिगत रूप से उनको नीचे गिरा रहा becoming है more and more degraded into sinful activity and sense gratification. और ज्यादा पतित होते जा रहे हैं पाप कर्म करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। And then it's systematically breaking up the families. और ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से परिवारों को तोड़ने का काम कर So रहा all the है। families are broken. तो सारे परिवार टूट रहे Now हैं it's all divorces there. और सारे तरह के तलाक हो रहे Right? हैं। Everyone can act independently, go do whatever they want. सभी लोग स्वतंत्र रूप से जो इच्छा चाहे वो कर सकते No one हैं। has to accept any authority. कोई किसी अधिकारी को स्वीकार नहीं करता। You see how they're systematically just breaking everything down? आप देख पा रहे हैं कैसे पूरे व्यवस्थित तरीके से सब कुछ को And तोड़ा then जा what रहा they है do is they want the one world government. और फिर वो बाद में क्या कहते हैं हमें पूरे विश्व में एक So they सरकार don't want चाहिए। any nationalistic person who has understanding of the value of their culture. तो उनको कोई राष्ट्रवादी लोग नहीं चाहिए जिनको अपने देश की संस्कृति सभ्यता का बहुत मूल्य है अंदर Or their language, or their family, or their upbringing. All of this thing is to be dismissed. कि उनकी भाषा, उनका परिवार, उनका समाज, वो सब चाहते हैं सारी चीजों को तोड़ दिया जाए। This is all old. ये सब पुरानी चीजें हैं। So that's why we hear in the history, in the Western culture, definitely, we never heard about the Vedic culture. इसीलिए पश्चिमी देश में हमें इतिहास में हमने कभी भी वैदिक संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ाया गया। We have no idea what is Vedic culture. हमें पता ही नहीं था वैदिक संस्कृति होता All क्या of that information in the schools, and the media, and the social media, everything is based on Roman, Greek, empires. और जितने स्कूल में हमारे सोशल मीडिया में सभी जगह इतिहास के बारे में जो भी बताया गया ये रोमन साम्राज्य, Plato, मिस्र like का they're like the साम्राज्य, original thinkers. कि प्लेटो, सोक्रेट्स ये लोग जो हैं मूल दार्शनिक लोग हैं। In the modern psychology, that's when everyone started trying to figure out, oh, we have minds. और जब आधुनिक मनोचिकित्सा आई तब लोगों ने विचार करना शुरू किया हमारे अंदर एक मन होता है। Right? So all of these historians, all of these scholars, everybody, they're starting on that from that point. तो सारे इतिहासकार, सारे विद्वान उस स्तर से शुरुआत कर रहे हैं, उस जगह से। And practically they present that before that, everyone was like a caveman. और वो ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस सारे सभ्यता से पहले सभी लोग जो है आदि मानव थे। Even not even civilized human beings. यहाँ तक कि एक सभ्य मनुष्य समाज भी नहीं था इन सब के पहले। And then if you talk about, Lord Ramachandra or any Rajarshis or Dhruva Maharaj or Ambarish Maharaj, like anyone who was running Bharatavash, the rest of the world, right? They think this is just mythology. और अगर आप बात करेंगे कि रामचंद्र और राजर्षि, ध्रुव महाराज
और अम्बरीश महाराज, ऐसे महाराज के बारे में, सभ्यता के बारे में बात करें, वो कहेंगे ये सब कहानियां हैं। And then they mix astrology, means mythology. और फिर वो कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, मतलब ये भी एक तरह का कहानियां हैं। So they have no understanding of the factual basis of astrology. तो उनको असल सत्य पता नहीं है कि ये ज्योतिष शास्त्र किस पे आधारित होकर And बनाया they गया just है। lump all of these things together with these fantastical, Greek gods and goddesses, right? और फिर वो इन सबको जोड़ के तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश करते हैं कि ये सब मिस्र के भगवान और देवी देवता हुआ करते थे। And it's all some kind of perverted reflection from some type of information or knowledge or even leelas from Vedic culture. और असल में उन्होंने वैदिक संस्कृति और उनकी लीलाओं को भी तोड़ मरोड़ के दूसरे तरीके से अलग-अलग सभ्यताओं के अंदर डाल के पेश कर दिया लोगों So के when you सामने। look back, right, during before even pre-Christianity and Judaism, right, they're just basically taking bits and pieces from Vedic culture and they don't even know it. तो ये जितने जुडाइज्म, ईसाईज्म, यहाँ तक ईसाई से भी पहले आप देखेंगे वैदिक संस्कृति से ही कुछ चीजों को तोड़ मरोड़ के लेकर आया गया है और उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं। So how can that culture, which is the source of every other language, Sanskrit, तो कैसे वो सभ्यता, जैसे भाषा जो संस्कृत है, जो सभी अन्य भाषाओं का मातृभाषा, even the scholars in Harvard University, they acknowledge that Sanskrit is the first language. Every other language came from Sanskrit. यहाँ तक कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विद्वानों ने भी माना कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। And then such a sophisticated language because it's coming from Vaikuntha. और ये बहुत जटिल भाषा है क्योंकि असल में ये वैकुंठ से So आती it's है। a perfect language from perfect source. क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण स्रोत से। And then everything else is just what type of degradation or percentage away from reality is it? और उसके अलावा जो भी चीजें हैं ये इस मूल चीज से टूटकर, इससे पतन होकर या कुछ प्रतिशत में उससे निकलकर बनी हुई है। So how can the whole world, for the most part, have no understanding about Vedic culture? तो कैसे पूरा विश्व का ज्यादातर भाग को वैदिक संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं। When you read the histories and you read the philosophy and right, there's no higher philosophy. और जब आप इतिहास पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, इससे ऊंचा कोई सिद्धांत या दर्शन आपको There's no मिलेगा। greater, spiritualized place on the planet except Bharatavarsha. We read that other night. और पिछली रात हमने पढ़ा कि भारतवर्ष से ज्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत जगह कोई भी नहीं है पूरी धरती। There's no greater philosophers or spiritualists that ever lived that didn't come from Vedic culture. और कोई भी बड़ा दार्शनिक या इतिहासकार, सिद्धांतवादी आज तक नहीं आया जो भारतवर्ष से नहीं था। Then how is it that practically no one knows anything about it? और ये कैसे अद्भुत बात है कि पूरे विश्व में लोगों को इसकी कोई जानकारी That नहीं। means it's a systematic agreement to basically cover over and hide that culture. इसका मतलब There's no other way you can look at it. यानी कि पूरे व्यवस्थित तरीके से इस संस्कृति को छुपाया गया, इसको ढका गया पूरे विश्व के सामने बाहर आने से। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जैसे आप इसको देखते So हैं। they're trying to deny the existence of God तो सबसे पहले उन्होंने भगवान के अस्तित्व को नकार दिया and His spiritual presentation of the absolute truth. और जो ये आध्यात्मिक जगत की प्रस्तुति जो है परम सत्य की, इसको And नकार all दिया। His manifestations of that truth through Guru Sadhu Shastra, it's all hidden. और जितने गुरु साधु शास्त्र के आधार पर परम सत्य का रूप, इन सारी चीजों को उन्होंने ढक दिया। So this is how Maya is just using all of this type of governments and so-called authorities and scientists and so-called leaders, right, to just purposefully cover the absolute truth. इस तरह से माया सरकार को, वैज्ञानिकों को और अलग-अलग तरह के नेताओं को इस्तेमाल करती है कि जानबूझकर परम सत्य को छुपा कर रखा जाए। So now you're cut off from being able to hear Krishna, to hear Krishna's instructions for the most part. इसका मतलब आप टूट चुके हैं कृष्णा के निर्देशों को सुनने के लिए ज्यादातर समय अपने जीवन में। And then even I came to India in Orissa and I was asking all the school kids, everybody knows Bhagavad Gita, they didn't know what I'm talking about. और यहाँ तक कि मैं उड़ीसा में आया, स्कूल में मैं जब गया बात करने के लिए, तो मैंने सारे बच्चों से सवाल पूछा, आप लोगों को पता है भगवद गीता क्या है? और किसी को नहीं पता था भगवद गीता। First I thought they were just being shy. पहले मुझे लगा वो थोड़े शर्मा रहे हैं। Then I kept saying it like again and again, like, do you understand what I'm asking? और फिर मैंने बार-बार पूछना शुरू किया कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को क्या पूछ रहा हूँ? We understand. और उनका हम समझ I पाए। said, you don't know about the Bhagavad Gita? और मैंने कहा आप लोगों को भगवद गीता के बारे में नहीं पता है? You don't know about Srimad Bhagavatam? आपको श्रीमद भागवतम के बारे में नहीं पता है?
रामायण के बारे में, or Mahabharata. महाभारत के बारे में, You don't know about all of this? इन सारे किताबों के बारे में उनको जानकारी नहीं है। Not really. उन्होंने कहा हमें असल में जानकारी नहीं है, We might have heard something, but we don't know anything about it. हमने इसके बारे में कुछ चीजें सुनी है लेकिन असल में हम जानते नहीं हैं। So that means that the Maya has infiltrated into every single culture and every single heart and mind of all the people in the Maya Jagat. इसका मतलब माया ने सभी देश में, सभी संस्कृति में प्रवेश करके सभी लोगों के हृदय में, मन में प्रवेश कर चुके हैं और ये पूरा माया जगत है। And when you say this is perfect knowledge from perfect source, then they counter and say this is all old. We don't want anything old. We want something new and fresh. और जब हम पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से इस तरह प्रस्तुत करते हैं तो लोग कहते हैं ये पुराना है, हमें कुछ नया ताजा जानकारी चाहिए। So we are being bombarded with the disinformation campaign for a long time. दोषपूर्ण जानकारी हमारे पर बमबारी करके हमारे पर मारी जा रही है, काफी लंबे समय से हमारे पर किया So जा रहा है। therefore Maya is just one of the potencies just covering your good intelligence. तो माया की एक शक्ति है, आपकी सद्बुद्धि को ढक देती है। And then if we don't have a good intelligence, then we don't know what to do, what not to do. और अगर हमारी बुद्धि सही नहीं है तो हमें पता नहीं चलता कि क्या करना है और We क्या don't नहीं know करना। what's in our best interest. हमें ये नहीं पता होगा हमारे लिए सबसे अच्छा क्या Even we है। don't even know we're in suffering condition. हमें ये भी नहीं पता है कि हमारी स्थिति And कितनी Prabhupada दुखदायी saying है। that this is animal और consciousness. गोपाल बताते हैं ये पशु की चेतना है। So this is a systematic plan from Maya. तो ये माया का पूरा व्यवस्थित योजना है। How to manipulate, control the elements to contaminate consciousness. कैसे तत्वों को नियंत्रण में करके लोगों की चेतना को दूषित किया जा सकता है। Therefore, everyone is in a low consciousness. इसीलिए सभी लोग बहुत नीचे चेतना में हैं। Barely we cannot figure out even what's happening materially. तो हम मुश्किल से भौतिक चीजों में क्या चीजें हो रही हैं हम वो भी नहीं समझ पाते। So now different agents of Maya, now it's basically warfare is not just guns and bullets, right? तो अब माया के अलग-अलग एजेंट जो अब युद्ध है, अब केवल गोली और बंदूकों से नहीं होता है। Now it's a war of the narrative. और अब खबरों के आधार पे युद्ध हो रहा है। Who's winning the narrative? कौन जो है इन खबरों को So जीत बना पाएगा? everybody's coming and putting their propaganda. तो सभी लोग आ रहे हैं अपने एजेंट प्रोपेगेंडा And लेकर। everybody has a selfish and extended selfish purpose for producing that propaganda. और सभी लोगों के पास खुद का कुछ स्वार्थ कारण है जिसकी वजह से वो इस प्रोपेगेंडा का प्रचार कर रहे हैं। So we're being, basically infiltrated by imperfect, faulty personalities with the faulty agendas. तो हमारे अंदर इस तरह के लोग अपूर्ण लोग अपने अपूर्ण एजेंडे को लेकर हमारे ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। Who are manifesting demoniac qualities and demoniac agendas. जो असुर जैसे गुण और असुर जैसे एजेंडा प्रस्तुत कर रहे हैं। And then they're all controlling the government and the media and the educational institution. और वो सारे खबरों को और शिक्षण संस्थाओं को, सरकारों को नियंत्रण में रखे हैं। And they're just basically, contaminating and brainwashing everyone from day one. और सभी लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है जन्म के शुरू से। So we have accumulated a bunch of absolutely useless and counterproductive information and so-called realization. तो हमने जमा करके रखा है फालतू जानकारियाँ और जो हमें गलत तरीके से मिला है। But what's the meaning of life? What's the purpose of our life? कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है। They're even telling you this is the purpose of life. और वो आपको बताएंगे कि जीवन का ये उद्देश्य This है, is the perfection of life. ये है जीवन की सिद्धि। Get an education, get a job, get some money, become some famous personality, celebrity, sports figure, musician, right? Then this is a success of life. तो बताते हैं जीवन की सफलता है कि शिक्षा लीजिए, नौकरी लीजिए, पैसे कमाइए और या फिर कुछ खेलकूद में बहुत आगे जाइए, बहुत बड़े सेलिब्रिटी बनिए और बहुत प्रसिद्ध संगीतकार बनिए। इस तरह से वो प्रचार करते And हैं। everybody's worshiping these personalities and jealous and envious of these personalities. Oh, they have made it. और सभी लोग ऐसे लोगों की पूजा करते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं, वो इन लोगों ने जो है कुछ सफलता हासिल की है जीवन में। They have reached the summum bonum in the material world. इन्होंने भौतिक जगत में जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया है। And then they're horrible people, most of them. और ज्यादातर समय वो लोग खतरनाक भयानक लोग होते हैं। Mostly completely demoniac. ज्यादातर वो पूरी तरह आसुरिक लोग होते हैं। And just engage in unlimited sense gratification, और पूरी तरह sinful से activity. असीमित इंद्रिय तृप्ति में पाप कर्म में लगे हुए And हैं। everybody is worshiping these और personalities. सभी लोग ऐसे लोगों की पूजा कर रहे हैं। Anything coming out of their mouth is pure propaganda. It's being controlled by somebody. और जो भी उनके मुंह से आ रहा है पूरी तरह से किसी न किसी स्वार्थ से प्रभावित है और किसी दूसरे के नियंत्रण में आके वही काम कर रहे हैं। Even many of them, they make all of these signs about worshiping the devil.
और बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे इनमें से जो विज्ञान बताते हैं असुरों की पूजा They करते cover हैं। their eye, they make this pyramids and वो आंखों को ढक के या फिर ऐसे पिरामिड का संकेत बनाते हैं। 666. 666 ये जो It's supposed to be like the devil, you know. मानते हैं कि ये जो है शैतान का नंबर है। There's actually, you know, all of the different major corporations, all of their logos are directly related to Satan worship. तो जितने भी बड़े बड़े प्रसिद्ध कंपनियां हैं आप उनके जो लोगो देखेंगे वो बड़े बड़े शैतानों से बहुत संबंधित हैं। I'm serious. और मैं गंभीरता से आपको ये But बात most people, they don't know that. लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं है। Right? But if you know something about what are they doing and how they're worshiping and what are the symbolism of that satanic or evil worship, it's very clear. लेकिन अगर आप थोड़ी जानकारी इसके बारे में प्राप्त करेंगे कि कैसे जो उनके ज्यादातर ये लोगोस हैं जो उनके संकेत हैं जिस तरह की वो पूजा कर रहे हैं पूरी तरह से शैतानों से संबंधित And they don't hide it. और वो उसको छुपाते नहीं They हैं। have secret handshakes. वो अलग खुफिया तरीके से They have हाथ मिलाने का secret तरीका meetings. खुफिया तरीके से वो लोग मुलाकात करते हैं। Right? And it's all based on demoniac, you know, worship of, you know, evil. और ये सारा आधारित है कैसे शैतानों की पूजा की जाएगी। And they're worshiping these demons and bhutas and all of this demoniac sources to get some kind of shakti. और ये भूत और इसी तरह के आसुरिक शक्तियों की पूजा करते हैं ताकि उनसे कुछ शक्ति पा सके। And when they're excelling materially, they're saying they're giving praise and glory to the devil, to evil, right? To all of the bhutas and all the demons who are giving them some kind of ability to be successful. और जब उन्हें कोई भौतिक लाभ या सफलता प्राप्त होती है तो वो श्रेय देते हैं ऐसे भूतों को ऐसे असुरों को कि जिनके माध्यम से उन्हें शक्ति मिल रही है और ये भौतिक लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। What am I talking about? मैं क्या बातें कर रहा हूँ आज? Have you asked yourself that question? Like, why is he talking about? क्या आपने ये सवाल पूछा खुद से कि ये ऐसी बातें Has it crossed your mind at all? क्या इनका थोड़ा दिमाग आज से घूम चुका है? It's important. ये भी महत्वपूर्ण बात है Because this is how we have become so contaminated जो कि इसी तरह से हम इतने दूषित हुए हैं and how we have developed so much misunderstanding and misconception. और इसी तरह से हमने इतनी गलत फहमियां या गलत तत्व भ्रम पाले This is how we have been so brainwashed. और इसी तरह से हमारे आप ब्रेन वॉश किए This is how we're forgetting, you know, Vedic culture. और इस तरह से हम वैदिक सभ्यता को This भूले is how we're not respecting scriptures and spiritual life. और इसी तरह से हम शास्त्रों का आध्यात्मिक जीवन का सम्मान नहीं करते हैं This is why all the families are broken और इसी वजह से परिवार टूट रहे हैं and all the traditions are broken. संस्कृति टूट रही है This is systematically going on. और ये पूरी व्यवस्थित तरीके से This is चलाया जा रहा what we है are up against. अब ये हमारे खिलाफ है ये सारी चीजें So with all of that mis and disinformation, तो ये सारी गलत जानकारियों के बीच with में all that we have heard, every bit of it is completely faulty, जितना भी हमने सुना उसका हर एक चीज वो पूरी तरह से गलत है and we're taking it as reality. और हम उसको सच्चाई मान के रहते हैं We're taking it as valuable. हम उसको मूल्यवान चीजें मानते How हैं can everything that's faulty, which is coming from Maya, how we're seeing reality and value in that? तो कैसे जो सब चीजें गलतियों से भरी है माया से आ रही है उसमें हम कोई सच्चाई देख पा रहे हैं That's also brainwashing. यही है ब्रेन वॉशिंग We're accepting what is untrue. We're saying, no, it's true. जो असत्य है हम उसको कह रहे हैं सत्य है And then what's true, we're saying, this seems odd. और जो सत्य है हम कहते हैं ये थोड़ा विचित्र लग रहा How do है we know that that's true? हमें कैसे पता चलेगा ये सत्य है This is what Maya does. ये माया करती है Right? So what's unreal जो and faulty, we say, no, नकली है, this is real, this is our life. गलती है वो उसे कहेंगे ये असली है ये हमारा जीवन है And what's real, we're thinking this seems unreal. और जो असली है हम सोचते हैं ये नकली है Is this some mythology? Is it some story? ये सब कुछ कहानियां हैं और कुछ It's बताई someone's बात wild speculation? किसी ने बहुत खतरनाक मनोधर्म किया है So what is truth, what isn't? तो क्या सत्य है और क्या नहीं Right? So we're being bombarded by Maya तो माया ने हमारे ऊपर बमबारी की है with all of this mainstream media, social media, educational system. इतना मुख्य From the समाचार beginning of the life. सोशल मीडिया हमारी शिक्षा व्यवस्था ये सारे हमारे जीवन के शुरुआत से ही इन्होंने हमें ऐसा And किया that's what we're up against. और ये सब चीजों के हम खिलाफ And now हैं। everyone who's demoniac has an agenda. और जो भी लोग आसुरिक हैं उनके पास कुछ एजेंडा So होता है everyone has a promotion, तो सभी लोग किसी एक विशेष चीज का प्रचार कर रहे a हैं presentation, a narrative based on their demoniac agenda. प्रस्तुति कर रहे हैं या फिर किसी तरह का
प्रस्तुति दे रहे हैं अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए। And then it's just competing factions of Maya और फिर माया के लिए अलग-अलग रूप हैं, who are basically, trying to canvas us with their presentation. और ये असल में मूल रूप से हमें आश्वस्त करने का प्रयास कर रही है अपनी प्रस्तुति के माध्यम And से, it looks different, और ये बहुत ही अलग लगता है, but it's still Maya. लेकिन ये सब है एक ही It's just माया। another variation of Maya. बस माया का ही एक अलग रूप है, And we're seeing varieties, और हम देख पा रहे हैं कि ये सब अलग-अलग चीजें हैं। and we're listening to everybody's narrative, हम सब अलग-अलग लोगों की खबरें सुन and रहे हैं, everyone's promotion, और सब लोग क्या प्रचार presentation. कर रहे हैं, क्या प्रस्तुति दे रहे हैं, And we're weighing and measuring which one of all of these bogus, demoniac, false presentations should we accept. और हम माप रहे हैं, वजन ले रहे हैं कि कौन इनमें से कौन से असुर लोगों के एजेंडे को हम स्वीकार करेंगे। And we think all of that is positive. और हम ये सोच रहे हैं ये सब कुछ सकारात्मक, We have the ability to, we have independence to decide. There's so much variety. और हमारे पास स्वतंत्रता है चुनने के लिए कि इतने सारी विभिन्नताओं के But it's बीच, all variations of the same thing, लेकिन ये एक ही चीज के अलग-अलग रूप हैं, more or less. कम या ज्यादा। That's when Prabhupada's talking about the politics. He's saying, talking about communism and then this democracy, he calls it demon crazy. इसलिए प्रभुपाद जब राजनीति की बात करते हैं, साम्यवाद या डेमोक्रेसी को कहते हैं डीमंस क्रेजी, यानी कि असुर लोग पागल हो चुके हैं। So when we first came and started to read that the democracy is demon crazy, so जब हम we पहली thought बार it's like the fairest type of government, right? जब हम आए, हमने देखा यहाँ प्रभुपाद डेमोक्रेसी को डीमंस क्रेजी करें, हमें तो लगा था कि सबसे अच्छा सरकार यही होता है। But if you get a bunch of programmed, ignorant people choosing their leader, what kind of leader are they going to choose? कि कुछ अज्ञानी मूर्ख लोग एक नेता चुन रहे हैं एक साथ मिलके, ये किस तरह का नेता चुनेंगे वो? Right? So you have demon crazy people saying, who do we want to be in charge of our government? तो कुछ असुर की तरह पागल लोग हैं, लोकतंत्र उन लोगों का है, और कह रहे हैं कि वो चुनाव करेंगे कौन नेता बनेगा। So Prabhupada said, all these isms, they're all demoniac, they're all faulty, more or less. प्रभुपाद कहते हैं ये सारे वाद, ये सारे आसुरिक हैं, सब में कुछ न कुछ गलतियां हैं। And so we're making choices based on different variations of the same, faultiness. और हम इन्हीं त्रुटियों में से किसी एक का चुनाव कर रहे हैं। That's what we're up against. और ये हम इन चीजों के And so now they have these deep fake videos. और अब जो है नकली वीडियो बनाने का एक नया It चलन looks 100% real. कि देखने में पूरा 100% असली लगेगा। Right. Even they have technology where the person is talking. यहाँ तक एक ऐसा तकनीक आया है कि लोग व्यक्ति ऐसा दिखेगा वो They're बात just कर रहा putting है someone else's face there. और किसी और का चेहरा उसके And सामने he दिख gets the रहा है, same exact sound vibration of the original speaker. और जैसे जो व्यक्ति जैसे बात करता था उसी के आवाज में दूसरा व्यक्ति का चेहरा आएगा, लेकिन वो Well, बात they कर have रहा है these उसी आवाज में। sophisticated types of masks that you can put on now that looks exactly 100% like real. या फिर एक ऐसा तरह का जो है मुखौटा लगा लेंगे कि वो ऐसा लगेगा कोई दूसरे व्यक्ति का है, बट लेकिन पूरा असली लगेगा वो। So as people are becoming more and more aware of all this deception, तो लोग जब जितना ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं नई चीजों के प्रति, and all of these false presentations and propaganda, जो इतना मिथ्या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या and प्रस्तुति now दी जा we're रही है, being bombarded with all of these faulty presentations. और कैसे हमारे ऊपर बमबारी की जा रही है इस दोषपूर्ण प्रस्तुतियों के साथ। People are starting to not even, it says, you basically, there's no intelligence, mind or senses that you can use to absolutely say whether something's real or unreal. यानी कि आप कोई भी मन बुद्धि का इंद्रिय का इस्तेमाल नहीं कर सकते ये बताने के लिए क्या असली और क्या नकली। So somebody says something and it's like, I don't know if that's real or not. अगर कोई कुछ कहेगा तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये असली बता रहे हैं या नकली बता रहे हैं। I don't know if what you're telling me is true or not. आप जो कह रहे हैं मुझे पता नहीं आप सच कह रहे हैं या It's झूठ कह रहे very हैं। sophisticated. तो इतना जटिल हो चुका है, Documents, videos, इतने सारे डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, वीडियो like बनाए high गए हैं, end. बहुत ऊंचाई तक। Right? You try to open a bank account in India. आप भारत में एक बैंक अकाउंट खोलने का प्रयास कीजिए, Right? In the West, it take you 15 minutes. You get all your papers, you walk out. और विदेश में आप जब 15 मिनट में आप सारा पेपर जमा कीजिए और बाहर निकल जाइए। Can you do that in India? लेकिन भारत में ऐसा आप कर पाएंगे?
You basically have to get like fingerprints for all your children. It's just like so sophisticated, right? आपको तो भारत में सारे बच्चों का जो है हाथ के फिंगरप्रिंट निकाल के वहाँ देने होंगे बैंक में, इतना जटिल प्रक्रिया। And I say, why does everything have to be so complicated here? और मैं बोलता हूँ यहाँ इतनी चीजें जटिल क्यों है? And they said because these are all the engineers who are the greatest cheaters on the planet. वो कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो दुनिया के सबसे बड़े ठग हैं यहाँ। Why do you think they're hiring all the Indian engineers? अब लोग क्यों ऐसा लगता है कि सारे भारत से इंजीनियरों को लेकर जाया जाता है? They're the ones programming all of these scams, you see? उन्होंने तो ये सारा स्कैम जो है वो तैयार करते हैं। And they can pay them less money? Come on! और वो कम पैसे में काम भी कर लेते हैं। And now you can do it at home. You don't even have to come to America. और आप तो घर में बैठे आपका ये काम कर सकते हैं, आपको अमेरिका आने की भी जरूरत नहीं है। Right? They're finding out all the voting machines, all of these election machines, right? All the programming is being done in China and India. और ये जितने वोटिंग मशीन, इलेक्शन मशीन जो बनाए जाते हैं, ये सारा प्रोग्राम चाइना और भारत में बनाया जाता है इसका। So they're asking the Chinese Communist Party, you know, can you help us with the software program to make the next election of the President of the United States? No problem. तो ये चाइना के जो माओवादी पार्टियां हैं, इनको कहा जा रहा है कि आप एक मशीन बनाइए वोटिंग करने का, उसमें प्रोग्रामिंग तैयार कीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव उसके माध्यम से We will get right on it. वो कहते हैं हाँ हम जरूर बनाएंगे आपको। And we'll give you a damn good price on top of it. और हम उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा दाम में भी देंगे। We'll give you China pricing. चाइना के दाम में आपको देंगे। Right? And everyone's like, let's go vote at the election box. You know, we have democracy here. और सब लोग सोचते हैं चलिए हम जो है चाइना के इलेक्शन वोट मशीन Whoever में we want to vote for becomes voted in. वोट देने जाएंगे और जिसको हम वोट देंगे वो नेता बनेगा। लोग ऐसा हम सोच के वोट देने जा रहे हैं। So most people, they're taking this as real. ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि ये असली है। They have no idea. उनको पता ही नहीं है। And then if you try to inform them, they kick you off Facebook. और अगर आप ये सब जानकारी लोगों को देंगे, आपको फेसबुक से बाहर These निकाला जाएगा conspiracy theorists. और बताया जाएगा कि ये जो है विवाद बनाते हैं। Then you're kicked off Twitter. और फिर ट्विटर से आपको बाहर निकाला जाएगा। Right? Then you're banned on Facebook. फेसबुक पे आपको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। They say, oh, this information is faulty. It's out of context. Or who are these people? और वो कहेंगे ये जानकारी गलत है या बाहर से जानकारी डाली जा रही है। ये लोग हैं कौन जो ऐसी बातें करते हैं? The fact checkers. ये जो है जो सत्य की पुष्टिकरण करते हैं। The Chinese fact checkers. ये चाइना के तथ्यों का पुष्टिकरण करने वाले Are saying there's nothing wrong with that Chinese software. वो कह रहे हैं कि ये चाइना के सॉफ्टवेयर में कोई गलती नहीं है। Which is electing a communist leader in the name of democracy. और जो एक साम्यवादी नेता को चुन रहा है लोकतंत्र के नाम पे। I'll probably get shot tonight, you know. मुझे आज रात मुझे गोली मार दी जाएगी। If you see, you know, Maharaja slipped off the balcony or something like that, know it was not from my side. I'm telling you right now. अगर आपको खबर मिलेगी कि बालकनी से फिसल के गिर गया, तो आप मान लीजिए मैंने नहीं किया था, मेरे ऊपर किसी ने किया होगा। Right, in Russia, right, they have the top energy circle around Putin. They're dying. और जो रूस में systematically. रूस में जो पुतिन के आसपास जितने भी शक्तिशाली जो बनाया गया सर्कल बनाया गया है, उसमें ज्यादातर लोग जो है अचानक से मर रहे हैं। Not one, एक नहीं, not even two, दो भी नहीं, not even three, तीन भी नहीं, 8 of them. 8 को मार दिया गया। 8 of them have died. उनमें से 8 जो है मारे जा Oh, he was on a sailboat and somehow he slipped off. He went into the ocean. वो समुद्र में जा रहे थे और नाव पे थे और किसी तरह से उनका पैर फिसल गया और वो समुद्र में गिर He गए। was alone on the boat. He wanted to go for a boat ride, you know. वो अकेले नाव में जो है कहीं से बोट में घूमने जा रहे थे। And then this other guy who's in charge of, you know, Arctic drilling, you know, he was in the hospital. He slipped off of the balcony. और एक और जो है हॉस्पिटल में इंचार्ज थे, वहाँ पे वो जो है बालकनी से फिसल के गिर गए। Somehow or other, maybe the ice was out there or something. किसी तरह से बाहर कोई बर्फ जमी होगी इसलिए पैर फिसल गया होगा। Even though it's 90 degrees there, you know. और यहाँ तक कि वहाँ पे 90 डिग्री का तापमान था फिर भी। I'm just saying, this is the world we live in. मैं बस आपको बता रहा हूँ ये ऐसी जगत में And हम when you रह रहे try हैं। to speak the truth in this world,
everyone will go against you. और अगर आप सत्य बोलने का प्रयास करेंगे इस जगत में, सभी लोग आपके खिलाफ जाएंगे, कोई आपको Even the भरोसा नहीं church करेगा। will go against you. यहाँ तक कि गिरजाघर भी आपके खिलाफ They're जाएंगे। supposed to be the upholders of the truth, isn't माना it? जाता है उनको सच को उनको स्थापित करना चाहिए। So to speak the truth in this world, you become most hated person. इस जगत में सत्य बोलेंगे तो आप सबसे ज्यादा आपको नफरत किया जाएगा। Even in Australia, the man's trying to inform his family. The family called the police and said, "My husband has gone mad." यहाँ तक कि एक परिवार जो ऑस्ट्रेलिया में, पति ने अपने परिवार वालों को बताने का प्रयास किया, लेकिन तो उनकी पत्नी ने पुलिस को फोन कर कह दिया कि मेरा पति पागल हो This is चुका how brainwashed the family is. वो कह इस तरह से उनके The परिवार father's वाले trying to को save his family, tell them the truth of the matter. जो पिता जो है अपने परिवार को सच्चाई बताने का प्रयास कर And रहा they है कि send an सच्चाई क्या है। ambulance to his house और वो अपने परिवार घर को बचाने का to प्रयास कर take रहा him to the insane asylum. है और उनको घर से उठा के पागल खाने डाल दिया गया। This is what we're up against. ये हमारे सामने And this is हमारे just खिलाफ है। materially. और ये तो केवल भौतिक रूप से। So everybody is saying, even those who have some faith in God, और सभी लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि जिनको कोई थोड़ी भी श्रद्धा है भगवान में, right? They're saying practically you should not accept anything that's being presented here. और वो ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पे भौतिक जगत में जो भी आपको बताया जा रहा है, कुछ भी आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। Because you don't know what's real, what is not real. क्योंकि आपको पता नहीं है क्या असली है क्या नकली है, What is true, what is not true. क्या सत्य है क्या असत्य है। Right? It's almost impossible to discern it. लगभग असंभव है भेद पता लगा पाना। Right? Is this coming from Krishna कि ये कृष्णा से आ रहा or है is it coming from Maya? या माया से आ रहा है। So some people who have faith, they say, okay, God is in your heart, He's the source of all intelligence, you must pray to Him to give you intelligence. और कुछ लोग जिनको भगवान में थोड़ी श्रद्धा है, जो थोड़े बुद्धिमान है, वो बताएंगे कि भगवान आपके हृदय में है और आपको उनसे बुद्धि मिलेगी, श्रद्धा मिलेगी, कौन सी जानकारी सही है, कौन से आपको सही जानकारी मिल सकती है। Because they're understanding that the cheating is so sophisticated and we are so kind of not qualified to discern that the only way that you won't get cheated is if you depend on God, depend on Krishna within your own heart. क्योंकि वो इस बात को समझ पाए हैं कि ठगी इतनी माहिर तरीके से की जा रही है कि आपके पास ना तो योग्यता है ना ही पता लगाने का कोई तरीका है कि आप कैसे सही जानकारी को पता लगा सकते हैं, बजाय अगर आप भगवान के ऊपर निर्भर ना हो जो आपके स्वयं के हृदय में स्थित है। So when you see what's happening for people who try to speak the truth, they're demonized. तो आप देखिए जो लोग सत्य बोलने का यहाँ प्रयास करेंगे उनको जो है असुर माना जाएगा यहाँ, They're deplatformed. और उनको जो है गिराने का प्रयास किया Even जाएगा। they fire you from your job. यहाँ तक कि आपकी नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा Right? They report you to the government. और सरकार को आपके खिलाफ The जानकारी दी जाएगी। government now is sending different security forces to harass you. और सरकार जो है अलग अलग तरह के सुरक्षा कर्मियों को भेजेंगे आपको प्रताड़ित करने के Right? लिए He's against the government. कि ये सरकार के खिलाफ कुछ चीजें बना So रहे हैं। now he's a domestic terrorist. तो अब ये घरेलू आतंकवादी है। Right? So you went from a conspiracy theorist to a domestic terrorist. तो आप एक विवादपूर्ण कहानी बनाने के बाद अब आपको माना जा रहा है कि एक घरेलू आतंकवादी बन चुके Or insane. हैं या पागल। Right? So someone, your family, the neighborhood, the government, someone's going to say he's insane. तो परिवार, सरकार या पड़ोसी कोई तो कहेगा ये पागल हो चुका Lock him up, give him some shots. है और इनको जो है कमरे में बंद करके कुछ शॉट्स दीजिए। Or you're just a crazy conspiracy theorist. या फिर ये कोई पागल कहानियां बनाता है। But what happens is when the conspiracy theorists, it starts to actually happen in front of everybody's face, then everyone's like, well, this is not really a conspiracy theory anymore because it's happening. तो जब क्या होता है, जब ये जो कहानियां बनाने वाले जो लोग हैं, इनकी कहानियां लोगों के सामने सच होने शुरू हो जाती है, तब कहते हैं वो जरा रुक के मैं देखना चाहता हूँ, ये जो लोग कहानियां बनाते थे इनकी बातें अब सच हो रही हैं। And you know who came up with that term, conspiracy theorist? और आपको पता है कि ये जो शब्द है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये कहाँ से आया गया है? The CIA. CIA से लाया गया है। So as soon as someone's starts to figure out what's really going on, then you just label them a conspiracy theorist. You're just like a nut, cracked. कहते हैं जैसे भी कोई सत्य का पता लगाने का प्रयास करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर खोजबीन करना शुरू कर देता है, तो ये CIA उनको ये नाम दे देती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, मतलब वो विवाद कहानियां बनाते Then no one has to take you serious. कि कोई भी, ताकि उनको फिर If गंभीरता you से speak बातें the नहीं truth सुनेगा। to Sadhu Shastra, oh, he's deviated. कोई अगर सत्य कहेगा गुरु साधु शास्त्र, लोग कहेंगे He's ये अमुक हो रहा है, antisocial. ये जो है He's against the
institution. समाज के खिलाफ है, He's संस्था के खिलाफ है, crazy. पागल है He's ये, dangerous. खतरनाक आदमी है ये। Yeah, this is dangerous coming here. ये खतरा हमारे सामने आ Do रहा you है। feel the danger? क्या आप खतरा महसूस कर रहे हैं? Are you feeling the danger? क्या आप खतरा महसूस कर पा Are रहे you हैं? feeling the love? या फिर आपको प्रेम महसूस हो रहा है? Are you feeling anything? क्या आप कुछ भी महसूस कर रहे हैं? Yes. Thank you for saving me from this धन्यवाद introduction. मुझे बचाने के लिए। This जो is मैं just an introduction. ये तो बस अभी हमने परिचय किया क्लास We में। have a lot to talk about. बहुत सारी चीजें हमें बात करनी है And it's all related, believe me. और ये सब संबंधित है आपस में, मेरा विश्वास कीजिए। All right, tell me. चलिए बताइए। Thank you, Maharaja. So what should we do? Did you get convinced already? तो प्रभु पूछ रहे हैं अब हम क्या करें? तो You गुरुदेव बता रहे you already realize what we're up against already? हैं। तो गुरुदेव सब बता रहे हैं, अब तो आश्वस्त हो गए, अब तो समझ गए हमारे सामने क्या है, अब तो मेरा काम आसान हो गया। I thought you would be much more difficult to convince. मुझे लगा था आपको तो आश्वस्त करना बहुत कठिन होगा मुझे। Looks like you already knew something. लगता है पहले से बहुत सारी चीजें जानते हैं। You must already known something. अब अवश्य पहले से कुछ जानकारियां थी आपके Because you're पास। not really arguing with these points. क्योंकि आप इन बातों के खिलाफ कोई बहसबाजी नहीं कर रहे मेरे साथ। So even people who ordinarily wouldn't be so spiritual, तो सामान्यतः भी जो लोग उतने आध्यात्मिक नहीं हैं, even they're saying it's so dangerous and you don't know who and what to trust. और वो कह रहे हैं ये इतना खतरनाक है, आपको पता नहीं है किसको और किन चीजों पे भरोसा करना है, And the risks are so high और खतरा इतना ज्यादा है and we're so kind of disqualified to even be able to understand it. और हम इतने अयोग्य हैं कि इन सारी चीजों को हम समझ भी नहीं सकते। That means we're in a very, vulnerable and helpless condition. इसका मतलब हम बहुत ही खतरनाक स्थिति में हैं। So their understanding, you have to pray, you have to depend on God, pray to God to give you intelligence and protection to be able to understand what to do, what not to do. There's many people starting to realize this. और बहुत लोग अब इस बात को समझ पा रहे हैं कि आपको भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत है, आपकी मदद करने के लिए क्या सही जानकारी क्या नहीं है, भगवान के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है। Because when we get cheated again and again and again, क्योंकि हम जब ठगे जाते हैं बार बार and we get our heart broken again and again and again, और जब हमारा हृदय बार बार टूट जाता है and we become disappointed again and again and again, और हम निराश हो जाते हैं बार बार, like how much more of that can you take तो कितना और आप झेल पाएंगे उसको before you just want to die? कि आप मरने का फैसला ना ले लें। Someone was making some prayer and they were saying, oh, find somebody, who's full of love and who has all of these wonderful qualities and who's your best friend and right. And I just wrote, these people don't exist here. और मैंने कहा कि हमें ऐसे लोगों को खोजना चाहिए जो पूरी तरह से प्रेम में है और हमें समझ सकते हैं, लेकिन मैंने उनको बताया कि लेकिन ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है इस धरती में। So it shows that everybody wants this type of friend, this type of association. तो ऐसा समझ में आता है कि सभी लोगों को ऐसा दोस्त या ऐसा कोई संग चाहिए अपने जीवन में। So everyone's hankering for that. तो सभी लोग उसके लिए मांग कर रहे हैं। But Prabhupada said if you want that, you have to go to Vaikuntha. प्रभुपाद बताते हैं अगर आपको वो चाहिए तो आपको वैकुंठ लोक में Because जाना this is होगा, the prison house. क्योंकि ये है कारागार। It's like if you go in the prison house and you're like, I'm looking for the perfect gentleman and who's just a manifestation of love and affection and who will never cheat me and who will always speak the truth. It's like, is this the right place to go with that expectation? जैसे कि आप कारागार में गए हैं और मान रहे हैं कि आपको एक पूर्ण सभ्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो पूरी तरह से प्रेम का और स्नेह का प्रकट रूप है, तो ऐसा व्यक्ति कारागार में ढूंढने के लिए सही नहीं है। So the whole thing is faulty. तो सारी We're चीजें looking for the right thing हम सही in चीज the को wrong ढूंढ रहे हैं place. लेकिन गलत जगह पे। Krishna says, I made this place to be temporary and miserable. कृष्ण ने कहा मैंने इस जगत को अनित्य और कष्टों से भरा बनाया। Krishna said, कृष्ण ने ये बात कही। Dukkhalayam Ashasvatam. दुखालयम अशाश्वतम। And what are we doing? और हम क्या कर रहे हैं? We're trying to make it happy हम and इसको permanent. सुखी और नित्य जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। So the supreme engineer, the controller
the supreme controller is saying, I made it, designed it to be temporary and miserable. तो जिन्होंने इसके पूरा निर्माण किया है, इंजीनियरिंग किया है, नियंत्रण कर रहे हैं, वो बता रहे हैं मैंने इस जगत को कष्टों से और दुखों से भरा हुआ अनित्य बनाया है। Oh, and just in case you don't understand what that means, और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, here's the threefold तो miseries. यहाँ मिलेगा आपको 3 तरह का कष्ट। Oh, you're not feeling that yet? Well, here's birth, death, disease, and old age. Maybe you'll feel that. वो भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, शायद ये महसूस कर पाए। Are you getting the picture yet? क्या आपको तस्वीर मिल So रही we're है? like describing like a perfect being. तो Best हम friend, pure, trustworthy, understanding, manifesting all good qualities, manifestation of love and affection, right? Where are those people in the material world? Exactly. Can you tell me? तो ऐसा विवरण दिया जा रहा है कि जो कोई सबसे ज़्यादा प्रेम करता हो, जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हो और बहुत शुद्ध हो और इस तरह के जो अच्छे गुण हैं, ऐसे व्यक्ति का विवरण दिया जा रहा है। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति कहाँ उपलब्ध हैं? Right desire, इच्छा सही है, wrong place. लेकिन गलत जगह पे कर रहे हैं। Unless you find some pure devotees अगर आपको कोई शुद्ध भक्त नहीं who मिल also जाता, want to develop some nice qualities, जो खुद behavior, भी उस तरह का शुद्ध गुण पाना चाहता है या व्यवहार who can प्राप्त at करना least चाहता है, value it and respect it या कम से कम उन चीजों का मूल्य समझ के and उनका are सम्मान करेगा striving for और that, उसको पाने का प्रयास करेगा। it's like kind of the best you can do. ये सबसे श्रेष्ठ चीज वो करने का प्रयास कर सकते हैं। Prabhupada said, make the best use of the best bargain. बाद में कहा है जो चीजें आपके पास उपलब्ध है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने का प्रयास करो। It's so funny when I came out here, I was like nervous because I didn't know what I was going to say. ये बहुत मजाकिया बात है, जब मैं यहाँ आ रहा था मैं बहुत सहमा हुआ था कि मुझे पता नहीं था मैं क्या बातें कहूँगा। I didn't think I had anything to say. मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। And then I over-prepared, which always confuses me. और मैं जरूरत से ज्यादा मैंने तैयारी भी कर ली, जो मुझसे और ज्यादा मुझे And भ्रमित कर then देता है। everything I prepared, I'm not even talking about it yet. और जो भी चीजें मैंने तैयारी की उनमें से ज्यादातर तो मैं अभी बातें भी नहीं की है। So I'm just praying to Krishna, what do we really need to hear? तो मैं बस कृष्णा से प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारी असल में सुनने की जरूरत क्या है? And why this is important is because when we try to understand about the Guru and about Krishna and about the spiritual life, this is on the fourth dimensional platform. और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम समझने का प्रयास कर रहे हैं गुरु के बारे में, कृष्णा के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में, और ये सारी चीजें शुद्ध सत्व स्तर पे, दिव्य स्तर पे हैं। So on our own, we're just gonna somehow or other be able to understand all of that. तो क्या हम स्वयं से अपने आप इन सारी चीजों को समझना शुरू कर देंगे? So this goes back to the original point. We got a Bhagavad Gita. तो ये हमारी मूल बात पे हम वापस आते हैं। It's हमने in भगवद गीता Sanskrit. पढ़ी और वो संस्कृत में था। Right? It's talking about the Vedic culture. उसमें वैदिक संस्कृति की बातें की जा रही हैं। It's saying words we can't even pronounce. ऐसे शब्द हैं जिनका हम उच्चारण तक नहीं कर पाते। कुरुक्षेत्र, Dhritarashtra. धृतराष्ट्र, Right? We never said this type of word before. इस तरह के शब्द हमने कभी बोले तक We नहीं। couldn't even pronounce it. हम तो इनका उच्चारण तक नहीं कर पाते। So I didn't like so much get into like all of those words. I want to understand what's the essence of this book. तो मैं जो है इन किताबों में जो शब्द ये लिखे थे इनके बारे में ज़्यादा जानने का प्रयास नहीं किया। मैं जानना चाहता था इस किताब का सार क्या है। So then I started reading. और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। And I'm praying to Krishna, praying to God in the heart. और मेरे हृदय में मैंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया। What is this book? ये किताब क्या है? What is this ये information? क्या जानकारियाँ हैं? It's saying that this is the words of God. और बताया जा रहा है ये भगवान के शब्द हैं। So is this really you? तो मैंने भगवान से पूछा कि क्या ये आपके Are शब्द you हैं? really speaking this knowledge that's in the Bhagavad Gita? क्या आप ये ज्ञान जो भगवद गीता में है ये भगवान आप ही दे रहे हैं? So because we're depending on the Lord तो क्योंकि हमने भगवान to के ऊपर give us निर्भर हैं, intelligence and faith, उन्होंने हमें बुद्धि दी, श्रद्धा it's दी। Krishna who convinced us that he is God and there's no truth superior to him, and that those instructions in Bhagavad Gita, that person who's giving those instructions is exactly the same person who's situated within everyone's heart. तो क्योंकि कृष्णा ही भगवान है, उनसे ऊपर कोई परम सत्य नहीं है, और भगवद गीता के अंदर जो भी बातें की जा रही है परम सत्य से आधारित, ये सीधे सीधे उनसे ही आ रही है। We didn't have a guru.
हमारे पास कोई गुरु नहीं था। I didn't join another culture. मैंने कोई दूसरी पंथ को मैंने All of that चुना। information came later. ये सारी जानकारी तो मुझे बाद में मिली। I didn't come here to join another culture. मैं यहाँ किसी और एक To put on a संस्कृति से dhoti, जुड़ने नहीं to put आया। on tilak and all of this thing. धोती लगाने, तिलक लगाने ये सब करने नहीं आया। Right? We just found out that, you know, that Krishna culture is Vedic culture. हमें बस ये बात समझ में आई कि कृष्णा की संस्कृति वैदिक संस्कृति है। So if you want to worship Krishna and you want to please Krishna, then you have to participate in the Vedic culture. तो अगर आप कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं, तो आपको वैदिक संस्कृति का भाग बनना होगा। But that came after. तो ये सारी चीजें बाद में आई। So then who convinced us was Krishna? हमें किसने आश्वस्त किया यहाँ आने को? वो थे कृष्ण। Isn't it when you read Prabhupada's books, right? Whenever you got Prabhupada's book, didn't Krishna convince you? कि जब आपने प्रभुपाद की किताबें पढ़ी, जैसे आपको प्रभुपाद की किताबें मिली, तो कृष्ण ने आप लोगों को आश्वस्त किया। Did you have a guru at that time? No. क्या आप लोगों के पास उस समय गुरु थे कोई? नहीं। Wasn't it Krishna convinced? क्या कृष्ण ने आपको आश्वस्त नहीं किया? And even Prabhupada said, you know, to the new people trying to preach, he said, really, like, what will your preaching do? और जो प्रभुपाद ने कहा करते थे, जो नए प्रचारक होते थे, उनको कहते थे, आपका प्रचार क्या करेगा? If they just read one line of this book, अगर वो मेरी किताब का एक वाक्य भी they पढ़े, get some, that book is non-different from Krishna. और वो किताब कृष्ण से अलग है। Krishna wants to shower some mercy and blessing on them, और अगर कृष्ण कुछ कृपा आशीर्वाद उन लोगों को देना चाहते हैं, especially if they're crying in their heart. और विशेष करके अगर वो हृदय में Want to रो रहे हैं understand it. और वो समझने का प्रयास कर रहे Krishna हैं, says, I'll give you intelligence and faith to understand me, to come to me. कृष्ण बताते हैं, मैं आपको बुद्धि दूंगा, श्रद्धा दूंगा मुझको समझने के लिए, मुझ तक पहुंच पाने के लिए। So, without Krishna, within the heart of every living entity, where would the intelligence and faith have come from for us to accept the Shastra, the scripture? तो ये श्रद्धा अगर हमें बुद्धि अगर कृष्णा से नहीं मिलेगी, जीवात्मा के हृदय में स्थित है, तो कैसे हम शास्त्र के अंदर श्रद्धा पाएंगे? Who convinced us to accept these scriptures? किसने हमें आश्वस्त किया कि हमें ये We don't शास्त्रों know को स्वीकार about करना चाहिए? Arjuna and Shukadev Goswami and Sutta Goswami and all of these previous acharyas. We don't know all of these people. हमें अर्जुन के बारे में, सुखदेव गोस्वामी के बारे में, सूत गोस्वामी, इन सारे लोगों के बारे में हमें कोई कुछ पता नहीं था। Later on, we came to hear about them. और बाद में हम इनके बारे में हमने सुनना शुरू So किया। Krishna is Adi Guru. तो कृष्ण है आदि गुरु, Is the original guru. वो है आदि गुरु। And when he goes in the heart, then he's a Chaitya Guru. और जब वो हृदय में आते हैं, प्रवेश करते हैं, वो है चैत्य गुरु। So Krishna says, I'm in the heart of everyone. From me comes knowledge, intelligence, तो remembrance. कृष्ण कहता है, मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ज्ञान, बुद्धि और स्मरण And शक्ति what आती is है। the remembrance? We are eternal servants of Krishna. और क्या We're स्मरण- supposed to serve God. और क्या स्मरण शक्ति आती है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और हमें कृष्ण की सेवा So if करनी we चाहिए। remember that and we accept that, तो अगर हम इसका स्मरण कर पाते हैं और हम इसको स्वीकार then करते you're हैं, going to the church or the temple and we're praying that, how can I serve you? और फिर आप गिरजाघर में, मंदिर में जाते हैं, भगवान से पूछते हैं, भगवान कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? Right? I'm your eternal servant. I'm supposed to serve you. What is my seva? What is my service? मैं आपका नित्य दास हूँ, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, तो मेरी सेवा क्या है So आपकी? that intelligence, faith, and remembrance is only to bring us to that one point to find out what is my service to God. What is He expecting from me? तो ये सारी बुद्धि, श्रद्धा, स्मरण सिर्फ एक बात को हमारे सामने लेने के लिए किया जाता है कि हाँ, कृष्णा की सेवा क्या है मेरे लिए, कैसे मैं उनकी सेवा And कर then सकता we're हूँ? praying to Krishna in the heart. Now, okay, before God is in the heart. Now I understand through Bhagavad Gita that's Krishna is in the heart. तो हम पहले भगवान से प्रार्थना कर रहे थे अपने हृदय में, भगवद गीता के माध्यम से हमें समझ में आया कि वो कृष्ण है जो हमारे हृदय में भगवान रूप में मौजूद है। And then we're reading about Srila Prabhupada, this pure devotee of Krishna. और जब हमने प्रभुपाद के बारे में पढ़ा कि ये कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। Actually, before I heard about Prabhupada, असल में प्रभुपाद से के बारे में सुनने से पहले I भी thought whoever is actually following these instructions in the Bhagavad Gita, जो भी भगवद गीता में बताए गए निर्देशों को असल में पालन कर रहा है, they are absolutely the most serious and sincere servants of God. वो If they निश्चय can ही follow that, there's no one more elevated than those personalities. निश्चय ही वो सबसे गंभीर, सबसे एकनिष्ठ भगवान के सेवक है। अगर कोई इन चीजों का पालन कर पा रहा है जीवन में, तो उससे बेहतर कोई भगवान का सेवक नहीं है। Whoever can follow those instructions, they're serious. और जो इन निर्देशों का पालन कर रहे हैं, वो असल में गंभीर Then my है। next question is, are there any of those serious people on this planet? और मेरा अगला सवाल ये था, इनमें से कोई भी गंभीर व्यक्ति क्या इस Did you धरती ever में think मौजूद like है? that? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? And then you say, well, you know, if they are available,
और फिर आप कहते हैं अगर I'd वो love उपलब्ध to है have their association. तो मुझे बहुत खुशी होगी उनका संग पाने में। And then you read about Prabhupada and it's just, well, this is certainly one of those pure devotees of God. और जब आप प्रभुपाद के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है वो निश्चय ही ये वो एक शुद्ध भक्त है कृष्ण Who के, has unflinching faith in Krishna's instruction, following Krishna's instructions. जिनको अटूट श्रद्धा है कृष्ण के निर्देशों में और कृष्ण के निर्देश को पालन कर रहे हैं। Then we think, oh, I want a guru like that. तो हम सोचे थे हमें ऐसे गुरु चाहिए। Because then we found out later that Prabhupada he left his body in 1977, right? और बाद में हमें ये पता चल पाया कि प्रभुपाद ने अपना शरीर 1977 में छोड़ दिया है। But we understand this is the, I don't even want to say gold standard because gold is like dirty. This is like, you know, Vaikuntha standard. तो ये जो है सोने का स्तर, मैं तो सोना भी नहीं कहना चाहता, Vrindavan standard. ये वैकुंठ का स्तर था, गोलोक वृंदावन का स्तर, Highest devotee. सबसे ऊंचे भक्त, Right? Associate of Srimati Radharani, श्रीमती राधा रानी के who Krishna says is most advanced Vaishnava. पार्षद, कृष्ण बताते हैं सबसे उन्नत वैष्णव है। So could you imagine if you get this type of association, how much benefit you'll get in your spiritual life? तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर आपको ऐसा संग मिलेगा तो क्या आप उन्नति कर पाएंगे अपने आध्यात्मिक जीवन में? And then when you met some kind of person in your life who was a little bit spiritually advanced, और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिल पाए अपने जीवन में जिनको जो आपसे ज्यादा आध्यात्मिक रूप से they उन्नत थे, inspired us, तो उन्होंने हमें प्रेरणा दी, they were different, वो थोड़े अलग लोग, they gave you some hints, some information, some knowledge, उन्होंने हमें कुछ जानकारी दी, कुछ ज्ञान दिया, which is way beyond what we presently have. और जो उनसे कहीं ज्यादा परे था जो हमारे पास So that we मौजूद could था। understand this principle that if you associate with people who are more advanced than you, then you could advance much quicker. और तब हमें ये सिद्धांत समझ में आया अगर हमसे जो उन्नत लोग हैं अगर हम उनका संग कर पाएंगे तो हम बहुत तेजी से प्रगति कर पाएंगे। So if we want to advance spiritually, we should desire to have the most spiritually advanced persons available, wherever they may be, wherever they may be. अगर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें ये इच्छा रखनी होगी सबसे ज्यादा आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति हैं जहाँ भी वो मौजूद हों, जहाँ पे भी हों, हमें उनका संग चाहिए। So when I met Srila Prabhupada's disciple, तो जब मुझे श्रील प्रभुपाद के शिष्य मिले and I became convinced by Prabhupada's books, और प्रभुपाद की किताबों को पढ़ के मैं आश्वस्त हो गया। the only question I asked him was, who is the most spiritually advanced person in this movement? एक ही मात्र सवाल मैंने इनको पूछा, हमारे आंदोलन में सबसे उन्नत भक्त कौन है? I want that teacher. मुझे वो शिक्षक चाहिए। Because I understood, like, if you're going to go for it and you want to learn something, then try to get the best teacher you can get, right? क्योंकि मुझे समझ में आया अगर आप उस चीज को समझना चाहते हैं और उसके बाद उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका सबसे श्रेष्ठ शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। And when we were in the university, you had to pick different courses, right? तो जब हम विश्वविद्यालय में जाते हैं तो अलग-अलग तरह के हमें And then you विषय चुनने found होते out, depending on which day and which time, there's different professors are teaching that same course. हैं। और आप देख पाते हैं अलग-अलग समय, अलग-अलग दिन के आधार पे अलग-अलग प्रोफेसर हैं जो उन विषयों को सिखा रहे हैं। So if you like that subject matter, तो अगर आपको कोई विषय बहुत पसंद then है you're going to find out who's the, out of those 3 or 4 professors, who's the most elevated and the most experienced and the most interesting person if you have to choose amongst those other professors, right? और जब आपको चुनना होगा विषय आपको किन से पढ़ना है उन 4-5 प्रोफेसर्स में से तो आप देखना चाहिए कौन ज्यादा बुद्धिमान और कौन ज्यादा अनुभव है उस विषय में। So no matter what happens, we should always cultivate that desire to get the most advanced spiritual association that's possible on this planet. तो कुछ भी हो हमारे अंदर केवल ये इच्छा होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा कोई उन्नत आध्यात्मिक रूप में मौजूद व्यक्ति है हमें उसका संग मिलना If we really चाहिए। want to advance as quickly as possible, अगर हम असल में प्रगति करना चाहते हैं जितना ज्यादा तेजी से हो सके if संभव, we understand that principle, this is the best, fastest, quickest way to advance in your spiritual life. अगर हम इस सिद्धांत को समझ पाते हैं ये सबसे श्रेष्ठ सबसे तेजी से जाने वाला तरीका है आध्यात्मिक जीवन And this is में। the only smart thing to desire spiritually. और यही एकमात्र बुद्धिमानी वाला फैसला है या इच्छा है जो आपको आध्यात्मिक रूप Because से that's करना how Krishna is going to help us. क्योंकि इसी तरह से कृष्ण He's हमारी giving मदद करने वाला है। intelligence and faith who to go hear from. वो हमें बुद्धि दे रहे हैं, श्रद्धा दे रहे हैं, किससे हमें जाकर श्रवण करना चाहिए। Because if we're conditioned soul and new devotee, how do we know who's the most advanced spiritual personality available? और क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हमारे पास तो इतना बुद्धि श्रद्धा नहीं है, कैसे हम पता लगा पाएंगे सबसे ज्यादा उन्नत भक्त कौन है? What do we have to measure that? हमारे पास क्या है जिससे हम उनको आकलन कर सकते हैं?
imperfect mind, intelligence, and senses, अपूर्ण मन बुद्धि इंद्रियां, prone to illusion, prone to mistakes, cheating propensity. मोह में पड़ने की आदत है, ठगने की आदत है. That's what we're going to use to measure who's the most advanced spiritual persons who are available on this planet. तो उन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे ये पता लगाने के लिए कि आध्यात्मिक सबसे उन्नत व्यक्ति कौन है इस जगत में. So that's why it gets back to this other point that even materially people are understanding, I have no ability to know what's true and what's real and what isn't. और इसीलिए बात आकर वहीं पे आ जाती है कि हमें भौतिक रूप से भी ज्ञान नहीं है ये पता लगाने का कि क्या सत्य है और क्या असत्य है. So if that's true materially, what to speak about the spiritual? तो अगर ये भौतिक रूप से सही है तो आध्यात्मिक रूप से क्या कहना? That material knowledge is all within the three-dimensional platform. भौतिक ज्ञान हमेशा तीन आयामों वाले स्तर पे. And even that you can't understand what is what. और यहाँ तक कि वो भी हम समझ नहीं पाते हैं क्या क्या है. That's why Prabhupada says conditioned soul doesn't know what to do, what not to do. और श्री प्रभुपाद बताते हैं बद्ध जीव को पता नहीं होता क्या करना है और क्या नहीं करना. When we met Srila Govinda Swami, he said you're all spiritually deaf, dumb, and blind. जब हम श्री गौरव से हमारा से मिले उन्होंने कहा तुम सब आध्यात्मिक रूप से अंधे गूंगे और बहरे हो. How do you meet someone in 5 minutes who's telling you you're spiritually deaf, dumb, and blind? आप 5 मिनट पहले किसी से मिले हो और वो आपको कह रहे हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से अंधे गूंगे और बहरे हैं. I just told you not to sit against the wall. मैंने आपको कहा था कि आप बस दीवार से I सटना didn't मत say करिए. you were spiritually deaf, dumb, and blind. मैं ये नहीं कहा कि आप आध्यात्मिक रूप से अंधे गूंगे बहरे हैं. Does it make sense? Are you guys all right? क्या आप सभी ठीक हैं? Do you have बातों an का सही appointment or anything? आप लोगों की मुलाकात किसी से करने जाना है? It's very important. ये And बहुत it's ही महत्वपूर्ण related बात to है. what we talked about last night. क्योंकि वो उन चीजों से संबंधित है जो पिछली रात हमने बातें की हैं. So, when they say you need a spiritually advanced person, you need a guru to advance in your spiritual life. जब वो कहते हैं आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति या गुरु की जरूरत है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, You know, go pick one. तो जाइए एक चुन लीजिए. Go pick one. जाइए एक चुन लीजिए. People look nice, they're chanting, they're all talking about Krishna. लोग दिखने में अच्छे लग रहे हैं और कृष्णा की बातें कर रहे हैं, कृष्णा का नाम ले रहे हैं. I remember the first day I went in the temple and I met different devotees. They were all demigods to me. मैं जब पहली बार मंदिर में आया मैंने सारे भक्तों को देखा, मुझे ऐसा लगा था ये सब देवता हैं. Compared to where I was at, उनसे तुलना करें everyone's a demigod. मैं कहाँ हूँ और ये लोग कहाँ हैं, ऐसा लगता था ये सारे लोग देवता हैं. I'm like, people are coming in, these gurus, right? I'm on the floor doing dandavat pranams. I'm like, how did I get on the floor? कि जब लोग आते थे कोई गुरु सन्यासी तो आते थे मैं पूरे जमीन में दंडवत प्रणाम कर रहा था. मैं सोचता था अरे मैं जमीन में कैसे गिर गया. Right, next thing you know, I'm like dandavat pranams. अगली चीज मुझे पता चली मैं जमीन में दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ. मुझे लगा ये हो कैसे रहा है मेरे साथ. Shakti or something. इन लोगों के भीतर किसी तरह की शक्तियाँ हैं. So when you're brand new and you experience this type of shakti, right? They're demigods. They're all talking about Krishna, quoting Shastra, right? They're all gods. They're all demigods. तो जब आप नए होते हैं और सब लोग कृष्णा की बातें कर रहे होते हैं ऐसा लगता है और शास्त्र की बातें कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है ये सारे देवी देवता हैं इनके अंदर कुछ शक्तियाँ हैं. Right? Then if everyone's a demigod, you can't go wrong. You just pick one of the demigods, right? अगर सारे देवता जैसे हैं तो आपकी गलती तो हो ही नहीं सकती. किसी को भी एक को चुन लीजिए आप. Why are you complicating this thing? क्यों इतना जटिल बना रहे हैं आप चीजों को. Now, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, you do not recognize the guru by your eyeballs. और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं आप गुरु को अपने आंखों से नहीं पहचान पाएंगे. You recognize by your ear. आप अपने कानों से गुरु को पहचान But पाएंगे. Prabhupada said the problem is you think seeing is believing. लेकिन प्रभुपाद बताते हैं आपकी समस्या ये है कि आप जो दिखता So है you're उसमें trying विश्वास to use करते हैं. your eyeballs to understand everything. तो आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं सारी चीजों को Instead समझने of के लिए, your ears. अपने कानों को छोड़कर. So Prabhupada says the advantage of the ear is that even if you're sleeping, the only thing that will save you is your ear. और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर आप सो रहे हो तब भी एक ही चीज आपको बचा सकती है वो आपके So कान. it's active even if you're sleeping condition तो वो काम करती रहती है अगर आप सो भी रहे हैं in तो order to save you or to protect you. ताकि आपको बचाने के लिए आपका रक्षा की जा सके. So my Gurudev would say that, what has the ring of truth? तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे जहाँ पे भी सत्य की आपको घंटी सुनाई Right? देती If it's really coming from Krishna, अगर like वो असल Krishna में has this special ringtone. अगर वो असल में कृष्णा से आ रहा होगा सत्य होगा तो कृष्णा का एक अलग रिंगटोन होता You know है. how it says, according you can make some friends, you can have ringtone, your family some ringtone, your wife some ringtone, right? Your girlfriend some ringtone. जैसे फोन में किसी तरह की व्यवस्था होती है कि परिवार के लोगों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऐसे किसी तरह का रिंगटोन आप सेट कर सकते हैं.
I shouldn't say that. मुझे ये नहीं कहना But चाहिए, it's reality. लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा ही होता So है। everyone has a certain ringtone, सभी right? का एक अलग अलग रिंगटोन है, So Krishna also has a ringtone. तो कृष्णा का भी एक रिंगटोन है। So if Krishna doesn't say, this is my ringtone, तो अगर कृष्ण आपको बताएंगे नहीं कि ये है मेरा रिंगटोन, then how are you gonna know? तो आपको कैसे पता चलेगा ये उनका है? You're just gonna go through the list and say, okay, I'm gonna give one of these sounds, so I'm gonna call it Krishna's ringtone. तो आप ऐसा नहीं कह सकते, अपने लिस्ट में जाएंगे, देखेंगे, उसमें से कोई एक चुन लेंगे और कहेंगे हाँ मैं मानता हूँ ये कृष्णा का रिंगटोन है। All right, Krishna is the intelligence of every technologist that ever lived, past, present, and future, including Tesla. उन सारे तकनीकी लोगों के दिमाग का स्रोत हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, यहाँ तक कि टेस्ला के भी। So can't he pick his own ringtone? तो क्या वो खुद का रिंगटोन नहीं बना सकते हैं? So if you ask Krishna, can you give me your ringtone अगर आप कृष्ण से पूछेंगे कृष्णा क्या आप मुझे अपना रिंगटोन दे सकते हैं, so that I can understand what's coming from you? ताकि मैं समझ पाऊँ क्या चीजें आपसे आ रही हैं, Because you said all intelligence and faith and remembrance that will come from you. क्योंकि आपने कहा है सारी बुद्धि, सारा श्रद्धा, सारा स्मरण शक्ति आपसे आती So how did we accept Bhagavad Gita? है। तो कैसे हम भगवत गीता हम Who स्वीकार told कर us सकते to accept the Bhagavad Gita as absolutely true? हैं? किसने हमें कहा कि भगवत गीता को परम सत्य मान के जीवन में स्वीकार कृष्ण। कीजिए? कृष्णा ने हमें बताया, Krishna convinced us. कृष्णा ने हमें आश्वस्त That's a किया, Daushara. वो है अदाउ श्रद्धा। So now if Krishna is manifesting in the Guru, right? Krishna says, I also speak to purify medium of the Guru. तो कृष्णा जब गुरु के माध्यम से बातें करते हैं, कृष्णा ये भी कहते हैं कि मैं अपने शुद्ध माध्यम के माध्यम से बात करता हूँ। तो गुरु कौन है? Everyone's saying they're the Guru. They're all सभी- saying Hare Krishna. सभी They're कह all रहे talking हैं- about Krishna. Everyone's a Guru. सभी कह रहे हैं वो गुरु हैं, वो हरे कृष्णा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो गुरु हैं। Right? And in America, when we grew up on a Sunday, every channel, they would have a different preacher. और अमेरिका में जब हम पल्ले बढ़ रहे थे, हमने देखा हर रविवार के हर एक चैनल में आप देखते थे कोई कुछ ना कुछ प्रचार कर रहा It's होता था। supposed to be God's day. उस दिन कहते थे वो रविवार का दिन भगवान के लिए So होता है। every channel, when we grew up, there was some other preacher was there. God wants you to do like this, you know. हर एक चैनल में कोई प्रचार कर रहा होता था, भगवान चाहते हैं आप ऐसा कीजिए। And then you turn the channel, okay, that guy sounds a little cuckoo. फिर आप अगला चैनल बढ़ाते हैं क्योंकि वो थोड़ा आपको पागल जैसा लगता है आदमी, तो And अगले the चैनल next में person saying, God is telling me right now that you should do like this. And I was like, oh, okay. और फिर दूसरा आदमी कह रहा था भगवान मुझे अभी बता रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, फिर कहता है ये भी पागल है, तो अगला चैनल में हम जाते हैं। And then sometimes you'd find someone, they were like kind of reasonable and they speak some kind of truth. It's like, well, okay, they're speaking some truth is there. और कभी-कभी कुछ लोग देखते हैं कि वो थोड़ी गहराई से कुछ सत्य की बातें कर रहे होते हैं, कुछ उनमें सत्य होता है और थोड़ा ठीक ठाक लगता है, तो फिर आप उनको सुनना शुरू करते हैं। I hope you're praying for me. मुझे उम्मीद है आप मेरे लिए प्रार्थना कर I रहे हैं। need all the mercy I can get. मुझे उतनी सारी कृपा की जरूरत है जो मैं पा सकता हूँ, Because it's not easy subject matter. क्योंकि ये इतना आसान विषय नहीं है। Yes, sir. I was just getting ready to answer your question. मैं बस तैयारी कर रहा था आपके सवाल का उत्तर देने के लिए। He's just encouraging me, like Krishna's moving me along, you know. ये मुझे अंदर प्रोत्साहन दे रहे हैं, जैसे कृष्णा मुझे रास्ते पे लेके आ रहे हैं। Because it's unlimited information. I don't know where to even go with all this information. क्योंकि ये असीमित ज्ञान है, मुझे पता ही नहीं इस सारे ज्ञान के अंदर हम कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे। So direct me. तो मुझे दिशा दिखाई थोड़ी। In terms of praying, Praying. yeah, and like you mentioned about Krishna can give us the intelligence. So if we have some problems, and then we pray for the intelligence or for whatever, some signs or something, is it the purity or is it the sincerity that will? Is it a conspiracy? And I'm just. Is it a conspiracy theory? Or is it real? No, What's the question? So you said Krishna is giving intelligence in the heart. Yes. So if we have problems and if we pray, then how can we hear? Is it like the purity or the sincerity what makes us be able to hear? If we have real faith in God, in Krishna, and we know He's in our heart, and He's our best well-wishing friend, He's trying to help us, right? तो प्रभु का प्रश्न है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कृष्णा
कैसे हम कृष्णा को सुन सकते हैं अपने हृदय में, और क्या सही है और क्या सही नहीं है, उसकी बुद्धि हमें श्रद्धा हम कृष्ण देते हैं तो हमें कैसे वो चीज़ मिल पाएगी। वो भी बता रहे हैं कि अगर हमारे पास श्रद्धा है कि कृष्ण हमारे हृदय में स्थित हैं और सारे बुद्धि और ज्ञान के स्रोत हैं, अगर हम उनके ऊपर निर्भर हो रहे हैं, So he's there and he wants to help us. तो वो हमारे शुभचिंतक मित्र है और वहाँ हमारी मदद करने के लिए। We're convinced. तो अगर हम इस बात से Now we're आश्वस्त trying हैं, to convince Krishna. और अगर हम कृष्ण को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, That's why we say two people have to be convinced. इसलिए मैं We हमेशा have कहता to be हूँ convinced. दो लोगों को आश्वस्त करने की जरूरत है, हमें But स्वयं it's को not a आश्वस्त करने की conspiracy जरूरत theory. है। ये कोई कहानी नहीं बनाई जा रही है, And then we have to convince Krishna. और हमें कृष्ण को आश्वस्त करने की जरूरत है। Right? Because Krishna says, if you're sincere and you're serious, क्योंकि कृष्ण बताते हैं, अगर आप एकनिष्ठ हैं, अगर आप गंभीर हैं, then I'll give you intelligence and faith. तो मैं आपको बुद्धि दूंगा और मैं आपको श्रद्धा दूंगा। Okay, so now let's quote Shastra. तो चलिए अब हम शास्त्र से Because बात that's what he was waiting for. क्योंकि इसका ये इंतजार कर रहे हैं। I promised him that. और मैंने उनको ये वादा भी किया था, So I'm ready, man. मैं तैयार हूँ। This is proof. I didn't have to go try to pick it up and find it like last night. I'm ready for you, man. यहाँ मेरे सामने प्रमाण है, अभी मुझे खोजबीन करना नहीं पड़ेगा, क्या जैसे मैं कल रात कर रहा था। आज I मैं filled तैयारी up my करके tank, मैं अपना टैंक पूरा भर लिया है, petrol. पूरा पेट्रोल ले लिया है। We have nothing but time. हमारे पास समय ही समय है। That's why I said everything up to this point was just introduction. इसलिए मैंने कहा अब तक जो भी बात किया ये सब अभी परिचय भूमिका हो रही है। So this is related to how Krishna is helping us. तो ये संबंधित है कैसे कृष्ण हमारी मदद कर रहे हैं। And I have lots of them. और मेरे पास बहुत सारे हैं। So how much Shastra do you want? आपको कितना शास्त्र चाहिए? Right? I can't convince you. मैं आपको आश्वस्त नहीं कर पाऊंगा, But Krishna can convince लेकिन you. कृष्ण आपको आश्वस्त करेंगे। And if Krishna knows that I know, then he'll convince you that I know. और अगर कृष्ण जानते हैं कि मैं आपको आश्वस्त कर पाऊंगा, तो मैं जान पाऊंगा कि मैं आपको आश्वस्त कर I पाऊंगा। can't convince you that I know something मैं or आपको आश्वस्त realize something. मैं आपको आश्वस्त नहीं कर पाऊंगा कि मैं कुछ Only जानता हूँ, Krishna मैं can कुछ convince you. साक्षात्कार मैंने कुछ साक्षात्कार किया, केवल Alright, कृष्ण so आपको let's read आश्वस्त the करेंगे। चलिए इनमें से हम कुछ पढ़ते हैं। And they're all special and they're all loaded. और ये सारे विशेष हैं और सारे भारी हैं। Okay. And I'm trying to find the ones that are related to everything that we're talking about, so it just like gives you like a all-inclusive opportunity. और मैं उस एक को ढूंढने का प्रयास उन चीज़ों को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ जो हमने आज जितने भी सारी बातें की और उन सारी चीज़ों से संबंधित है, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। Srimad Bhagavatam 3:31-16. श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 31 अध्याय 16 श्लोक। In the purport, तात्पर्य में बता रहे हैं। Srila Prabhupada says, when one is very anxious to get free from material entanglement, प्रभुपाद बता रहे हैं अगर कोई बहुत व्याकुल है भौतिक बंधन से मुक्ति पाने के लिए, he gets enlightenment तो उसको एक जागृति मिलती है through Krishna कृष्ण से and the spiritual master. और गुरु से। This means that Krishna, as the super soul, इसका मतलब कृष्ण जो परमात्मा है, he's seated within the heart of every living entity. जो सभी जीवात्माओं के हृदय में बैठे हैं, And when the living entity is serious, और जब कोई जीवात्मा गंभीर होता है, then the Lord directs him to take shelter of his representative. तो परमात्मा उनको मार्गदर्शन करते हैं उनके प्रतिनिधि को शरणागत करने के लिए, The bona fide spiritual master. प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु को। So this is how he's helping us. इस तरह से वो हमारी मदद If करते we हैं। are sincere and serious, we want to get free from suffering and anxiety of this material entanglement. अगर हम गंभीर हैं, एकनिष्ठ हैं, भौतिक जगत के बंधन से और दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, And we pray and cry to God, cry to Krishna, please help me, please give me direction what to do. और अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके सामने रोते हैं, मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, Then how Krishna will help you, Prabhupada says, the Lord will direct you who to take shelter of.
और प्रभुपाद बताते हैं कैसे भगवान आपकी मदद करेंगे, वो आपको दिशा दिखाएंगे कि आपको किन को जाके मदद लेनी चाहिए, किन So व्यक्ति से। you will be directed from the Lord within तो भगवान आपको भीतर से दिशा दिखाएंगे and then guided externally by the spiritual master without. और बाहर से आपको मार्गदर्शन देंगे गुरु के माध्यम से। In this way, one attains the path of Krishna और consciousness, इस तरीके से कोई कृष्ण भावनामृत के पद को प्राप्त करता है, which is the way to get out of the suffering of the material clutches. और जो माध्यम है कैसे आप भौतिक दुखों से बाहर निकल सकते हैं। That's nice, right? We're talking about suffering and then wanting to be a human, saying, why am I suffering? How do I get out of suffering condition? कि हम बात कर रहे हैं दुखों की और मनुष्य कैसे उसका अनुभव कर सकता है और कैसे फिर दुखों से बाहर निकलने का प्रयास कर सकता है। And nothing material really is working. और कोई भी भौतिक चीज जब काम नहीं आती है, So then God, Krishna, please help me. Please direct me. I don't know what to do, how to do. कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे दिशा दिखाइए, मुझे नहीं पता, मुझे मदद कीजिए क्या करना And है, क्या नहीं Krishna करना है। guides you, directs you to his representative bona fide guru. तो कृष्ण आपको दिशा दिखाएंगे, उनके प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे। Bhagavad Gita 9:2, भगवद गीता 9 अध्याय 2 श्लोक, Calcutta, कलकत्ता March 8, 8 मार्च 1972. 1972। I'm quoting authorities here. मैं यहाँ I'm शास्त्र not की बात कर रहा हूँ, speculating. मैं कुछ मनोधर्म नहीं Do करता। you accept Prabhupada as ultimate authority? क्या आप मानते हैं प्रभुपाद अंतिम अधिकारी हैं? Right? We all accept. हम सभी स्वीकार करते हैं, Right? We're all followers of Srila Prabhupada. हम सभी श्रील प्रभुपाद के अनुयायी We're हैं। taking him as our preeminent Shiksha Guru. हम उनको सबसे पहला शिक्षा गुरु मानते Nitya हैं। Siddha, Mahabhagavata, Premi Bhakta. नित्य सिद्ध महाभागवत प्रेमी Descending here just like Krishna descends here. वो यहाँ अवतार लेते हैं जैसे कृष्ण यहाँ अवतार लेते हैं, This type of guru. इस तरह के गुरु। So we're accepting Srila Prabhupada as our authority. तो हम श्रील प्रभुपाद को अपने अधिकारी के रूप में स्वीकार करते हैं। Prabhupada says if you are sincere, प्रभुपाद कहते हैं अगर आप गंभीर हैं, then Prabhupada says again, if you are sincere, प्रभुपाद फिर से कह रहे हैं अगर आप गंभीर हैं, एकनिष्ठ हैं, then Krishna will first of all be merciful to you. सबसे पहले कृष्ण आपके ऊपर कृपालु होंगे, Then Krishna will guide you. तब कृष्ण आपको मार्गदर्शन देंगे If you're sincere. अगर आप एकनिष्ठ हैं। And of course, Krishna is the witness and the judge of our sincerity. और कृष्ण हमारे गवाह हैं, न्याय करता है I हमारे। remember I gave class in the temple in ISKCON a couple of years ago, and I was talking about sincerity and seriousness as prerequisite to get the bona fide guru. और मुझे याद है इस्कॉन के मंदिर में कुछ सालों पहले मैंने एक क्लास दिया था कि मैं बात कर रहा था एकनिष्ठता और गंभीरता कृष्ण को शरणागत करने के लिए ताकि आपको प्रमाणिक गुरु मिल सके। And I was reading all of these quotes from Srila Prabhupada, from their guru. और मैं श्रील प्रभुपाद के वाक्यों को उनके गुरु जो हैं And उनके they वाक्यों को became, कह रहा था। some devotees became very, very uptight with me, very angry at me. और कुछ भक्त मुझ पे बहुत गुस्सा होने लगे And I was so bewildered, you know. और मैं इतना भ्रमित हो गया ये बात देख के। And they were basically saying, you know, who are you to say we're not sincere and serious? और वो ऐसा कहने लगे आप कौन होते हैं हमें बताने के लिए हम एकनिष्ठ नहीं हैं, हम गंभीर नहीं हैं। I said, look, I'm just quoting your guru's instructions. I'm not the judge of whether you're sincere or serious. That's not my job to figure that out. मैंने कहा देखिए ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके गुरु की बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहे हैं एकनिष्ठता और गंभीरता की। मैं गवाह या न्याय करता नहीं हूँ आपकी गंभीरता का, ये Krishna is the judge of that. कृष्णा उसका निर्णय करेंगे। Right? So they get so uptight. Are you questioning my sincerity and my seriousness? तो वो मुझ पे गुस्सा हो गए कि आप मेरे गंभीरता एकनिष्ठता पे What do सवाल you उठा think? रहे You're हैं। so sincere and serious? आप क्या सोचते हैं आप गंभीर और एकनिष्ठ भक्त हैं And you're going to be the judge of my sincerity and seriousness? और आप हमारी एकनिष्ठता और गंभीरता का निर्णय हमें देंगे। Who are you? आप होते कौन हैं? I said, no, this is your guru's saying. मैंने कहा आपके गुरु यहाँ बता रहे If हैं you're sincere, अगर आप if you're एकनिष्ठ हैं, sincere, अगर आप Krishna will एकनिष्ठ be हैं, merciful to you. कृष्ण आपको He will कृपालु guide होंगे, you. वो आपको If you're मार्गदर्शन देंगे। sincere, अगर आप 3 एकनिष्ठ हैं, times, 3 बार प्रभुपाद Krishna will direct you. कृष्ण आपको दिशा दिखाएंगे Quote, और एक approach such and such a guru. उस गुरु के पास जाइए। Krishna will direct you and tell you, कृष्ण आपको दिशा दिखाएंगे और बताएंगे approach such and such a guru. उस गुरु के पास जाइए। And then if that guru is pleased with you, और फिर वो गुरु अगर आपसे प्रसन्न होते हैं then you'll get Krishna. तब आपको कृष्ण मिलेंगे। Guru Krishna Kripa. गुरु कृष्ण कृपा। Both. 2 दोनों। mercies required, 2 कृपा की जरूरत है, parallel line. दोनों एक समानांतर रेखा Krishna है। Kripa, Guru Kripa. कृष्ण कृपा गुरु कृपा। If you are sincere. अगर आप एकनिष्ठ हैं
So the problem becomes when someone's like, well, I don't know who is my guru. समस्या तब होती है जब कोई कहता है कि मुझे नहीं Like पता Krishna not directing it to approach anybody. और कृष्ण मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं किसी व्यक्ति के पास जाने के लिए। So, but I'm sincere. लेकिन मैं एकनिष्ठ हूँ, I'm serious. मैं गंभीर हूँ। Well, if you're so sincere and serious, why isn't Krishna approaching you and telling you to go surrender to this person and accept him as your spiritual master? तो अगर आप एकनिष्ठ हैं, गंभीर हैं, तो क्यों कृष्णा आपको बता नहीं रहे हैं कि उस व्यक्ति के पास जाइए और उसको गुरु के रूप में ग्रहण करके उनको शरणागत कीजिए? So you can feel all sincere and serious as you want. आप जितना खुद को माने गंभीर एकनिष्ठ, But if it doesn't translate into getting Krishna's intelligence and mercy, then maybe we should question our so-called sincerity and seriousness. लेकिन अगर वो परिवर्तित नहीं हो रहा है कि हमें सही गुरु के प्रति मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो हम जितना चाहें खुद को माने हम गंभीर एकनिष्ठ हैं। Srimad Bhagavatam 5.5.18. श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय 18 श्लोक। We're like a lawyer. We're just quoting the law book. हम वकील के जैसे हैं, यहाँ पे कानून की किताबों से बातें कर रहे हैं। The lawyers can disagree, वकील जो है असहमति जता सकते हैं, but when they're going in front of the judge, you have to quote the law book. लेकिन जब न्यायाधीश के सामने होते हैं तो What is कानून the की किताबों से बातें precedent? What करते is हैं the law? कि नियम क्या कहता है, How कानून क्या all the कहता है। previous judges acted on this very same similar circumstance. और पूर्व जजों ने इन ऐसी परिस्थितियों में क्या-क्या निर्णय दिए थे, उसको आधार मानकर। These are the law books. तो ये सारे कानून की Prabhupada said किताबें। these are the law books for next 10,000 years. प्रभुपाद ने कहा ये कानून की किताबें हैं अगले 10,000 सालों के So लिए। Prabhupada is giving instruction in a law book. So we have to accept it. तो प्रभुपाद इन कानून की किताबों में निर्देश दे रहे हैं, तो हमें People उसको say, स्वीकार well, करना है। you know, how do they say it? That we are the real Prabhupada disciples. How do we say that? We're Prabhupada's man. हम प्रभुपाद के आदमी हैं। We're Prabhupada's man. हम प्रभुपाद के आदमी I हैं। said, wow, he's a Prabhupada's man. प्रभुपाद के लोग हैं। I can't say that like that. मैं उनकी तरह ये बात बोल नहीं पाता हूँ। Then I start questioning, you know, my humanity. You know? तब मैं खुद के ऊपर ही मैंने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया, खुद के Prabhupada's man. प्रभुपाद के आदमी हैं। And then you present the Prabhupada instruction, and they're like, you know, why are you quoting all of these things? You know? और जब प्रभुपाद के निर्देश उनके सामने बताना शुरू करते हो, कहते हैं ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? We're not quoting this one. हम ये सब बातें नहीं बताते। Well, your guru's quoting this one. मैंने कहा आपके गुरु लेकिन बताते हैं, you know? Krishna's quoting this one. और कृष्णा ये बात बता So रहे हैं। it's acceptable, right? तो इसको जरूर स्वीकार किया जाना चाहिए Prabhupada's man. क्योंकि आप प्रभुपाद के आदमी हैं। They gotta go lift weights and then they come with Prabhupada. पहले वो जाके कसरत करके वजन उठा के आते हैं, फिर वो ये बात कहने के लिए आते हैं प्रभुपाद के आदमी हैं। Some of them do like that. और कुछ जैसे ऐसा करते भी हैं। It's true, I'm not making it up. ये सच बात है, मैं बना I've नहीं been रहा हूँ। invited to the gym many times with these guys. इन लोगों ने मुझे जिम में कई बार बुलाया है साथ में कसरत I करने। always had to fake an injury, you know, like, I've got a bad elbow, you know. और मैं bad हमेशा shoulder. बहाना बनाता हूँ, मेरे को थोड़े कंधे में चोट आई है और Otherwise, I'd do some satsanga with you. वरना उनके साथ मुझे सत्संग नहीं करना पड़े। You Prabhupada man. प्रभुपाद के लोग हैं। I was even in front of the mirror, like, you know, I'm a Prabhupada. और मैं आईने के सामने How जाके believable is it? अभ्यास करने का प्रयास कर रहा था, मैं भी बोलूँगा मैं प्रभुपाद का आदमी हूँ। You see how I go off track, I get sarcastic, आप देखिए मैं this is कैसे a problem. रास्ते से भटक जाता So हूँ। मैं let's get थोड़ा back, let's ध्यान convince करना शुरू him. करता हूँ। चलिए हम वापस रास्ते पे He आते हैं। wants to hear Shastra. हम इनको शास्त्र सुनाने का प्रयास करते हैं। He's trying to overcome his mind. वो अपने मन से आगे जाने का प्रयास कर No, रहे he's हैं। praying to the super soul. अब वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। Yes, this is good. ये अच्छी बात है। So, Srimad Bhagavatam 5.5.18, Vrindavan, श्रीमद् भागवतम 5:5-18 वृंदावन, November 6, नवंबर 6, 1976. 1976। Where were you? आप कहाँ थे उस समय? Oh, you weren't here yet. और आप यहाँ थे ही नहीं। What did they say? You were just a thought in mother and father's mind? कहते हैं कि आप Not अपने even. Wow. माता पिता के ख्यालों में थे, मन में थे, मतलब या वहाँ भी नहीं पहुँचे थे। Okay. I better stop while I'm ahead. और मैं रुक जाता हूँ। Now, Prabhupada says here in a lecture, और प्रभुपाद इस प्रवचन में बता रहे हैं, so if by you are sincere,
अगर आप एकनिष्ठ हैं, actually, असल में, Prabhupada says actually. प्रभुपाद क्या करें, असल में एकनिष्ठ। So when he wants to go from theoretical to realized, he uses words like actual, factual, तो जब मौखिक से in reality. बातें आती हैं कि व्यवहारिक अनुभव करने की बात हो तो वो बात करते हैं So if असल you're में, सच्चाई में। actually sincere. तो अगर आप असल में, And then when I'm explaining like actually sincere, it's like, wow, are you saying I'm not actually sincere? और जब मैं ऐसे बताना सभी बताऊं, जब हम असल में एकनिष्ठ होते हैं, और कहते हैं आप क्या सोचते हैं, हम असल में एकनिष्ठ नहीं है क्या? If we actually want Krishna, अगर हम असल में कृष्णा को चाहते हैं, what do you think we're doing here? आपको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? If you actually want Krishna, अगर आप असल में कृष्णा को चाहते हैं, then Krishna is within your heart. तो कृष्णा आपके हृदय में है। Ishvara Sava Bhutana Hrideshe Rajuna Tishati. Bhagavad Gita 18:61. भगवद गीता 18:61। When Krishna sees जब कृष्ण देखते हैं that here is a sincere soul कि यहाँ पर एक एकनिष्ठ आत्मा है and he wants me, और वो मुझे चाहता है, it's that simple. Here's a sincere soul who actually wants me. इतना सरल है। यहाँ एक एकनिष्ठ भक्त है, आत्मा है जो मुझे चाह रहा है। Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam uryogam dadami tam. Prabhupada's quoting from Bhagavad Gita 10:10. प्रभुपाद भगवद गीता 10th अध्याय 10वें श्लोक को बता रहे हैं। As soon as Krishna sees that here is a sincere person who actually wants me, तो प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसे ही कोई कृष्ण देखते हैं यहाँ पर कोई एकनिष्ठ आत्मा है जो असल में मुझे ढूंढ रहा है, he'll give you a nice guru. तो वो आपको एक अच्छे गुरु देंगे। He'll give you a nice guru. वो आपको एक अच्छे You गुरु, don't have to go try to find one. आपको एक ढूंढने की जरूरत नहीं है। He'll automatically make an arrangement. That guru will be sent to you, or you'll be sent in front of that guru. Krishna will make some arrangement. ऐसी व्यवस्था होगी, या तो वो गुरु आपके पास आएंगे या आपको गुरु के पास चले जाना होगा। ये व्यवस्था कृष्ण बनाएंगे। If you actually convince Krishna that you sincerely want him, Krishna will give you a nice guru. अगर आप कृष्ण को असल में आश्वस्त कर पाएंगे कि आप उनको शरणागत करना चाहते हैं, कृष्ण को अच्छे Krishna Kripa. गुरु कृष्ण कृपा। Yasha Prasadat Bhagavat Prasadat. If you have a really bona fide guru, और असल में आपके पास कोई प्रमाणिक गुरु है, a really bona fide guru, असल प्रमाणिक गुरु अगर आपको, not just like if you have a guru, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई गुरु and not even if you have a bona fide guru. और बस केवल आपके पास कोई If you प्रमाणिक have गुरु, like a really bona fide guru, if you know what I mean. अगर आपके पास असल प्रमाणिक गुरु है, अगर आप Then, बारे में क्या कहना by चाहते हैं, pleasing him, तो उनको प्रसन्न करके you will get the favor of Krishna. तो आपको कृष्ण की कृपा मिल जाएगी। Is there no electricity? Nothing? No। Okay. Baladev's praying. पूरी प्रार्थना कर रहे हैं आज। This is conspiracy theorist. This is this conspiracy theorist in me that Baladev has sabotaged the whole thing. ये मैं एक विवाद बना रहा हूँ कि बलदेव ने सारे बिजली यहाँ बंद कर दी है। If you go into his bag, I guarantee you he has tools in them. अगर आप उनके बैग चेक करेंगे, देखेंगे उनके बैग में कुछ आपको उपकरण मिलेंगे बिजली काटने वाले, उनके बैग चेक करना होगा। I don't think he did this by munchers, so he must have some tools. मुझे पता है इनको मंत्र से सब करना नहीं आता है, कोई उपकरण इस्तेमाल किया होगा। And in Srimad Bhagavatam 6:1-15, श्रीमद् भागवतम 6:1-15, I'm getting heated up. मुझे गर्मी लग रही है। We're gonna have a long night, man. We're gonna give you so much Shastra, you will not be able to sleep tonight. हम आपको इतना सारा शास्त्र सुनाएंगे आज कि आप सो तक नहीं पाएंगे। You'll be shaking. आप हिल रहे होंगे। So Srimad Bhagavatam 6:1-15, श्रीमद् भागवतम 6:1-15, Auckland, New Zealand. ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। That's a whole nother. Anyway, we'll talk about New Zealand another time. तो न्यूजीलैंड के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे क्या है। February 22, 22 फरवरी 1973. 1973, If you surrender to Krishna, अगर आप कृष्ण को शरणागत करते हैं, then also Krishna's first mercy तो कृष्ण की पहली कृपा is that he will send you his representative. कि वो आपको आपके उनके प्रतिनिधि को भेजेंगे। If anyone अगर कोई भी is serious to surrender to Krishna, कृष्ण को शरणागत करने के लिए गंभीर है, then Krishna will help him तो कृष्ण उनकी मदद करेंगे from within भीतर and से from without. और बाहर से।
within as the super soul, भीतर से Paramatma, परमात्मा के रूप में he will help you वो आपकी मदद करेंगे and he will dictate to you. और वो आपको बताएंगे You go to this person. आप उस व्यक्ति के पास जाइए। So if we don't have faith, sufficient faith that Krishna is within the heart and he's giving intelligence and faith, then how we can understand that this personality is going to dictate to you that you should go and approach such and such person and accept him as your guru? तो अगर हमें ये श्रद्धा नहीं है कृष्णा के ऊपर जो हमारे हृदय में है, वो हमें बुद्धि देते हैं, हमें श्रद्धा देते हैं और कि वो हमें बताएंगे कि आप चाहिए उस व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। So when I went to hear from Srila Govinda Swami, I wasn't looking for guru. तो जब मैं श्री गौर गोविंद साहब महाराज के पास आया श्रवण करने के लिए तो मैं गुरु की तलाश नहीं कर रहा I था। had Prabhupada. मैं सोचता था मेरे पास प्रभुपाद हैं, Prabhupada's my guru. प्रभुपाद मेरे गुरु हैं। Everyone Shiksha Guru trying to help me, but really Prabhupada is my guru. बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं, लोग मेरी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असल में प्रभुपाद ही मेरे शिक्षा Then when गुरु I हैं। started to hear from Srila Govinda Swami, like my total consciousness was completely changing. और जब मैं श्री गौर गोविंद साहब महाराज से मैंने सुनना शुरू किया, मैंने देखा मेरी पूरी चेतना जो है परिवर्तित हो रही है। And it was like purifying me and humbling me out. और मुझे शुद्ध कर रहे थे और मुझे विनम्र बनाते जा रहे थे। And I tell the devotees all the time. At first I was like, oh, I was sitting there like, let's see what this Maharaj has to say. और पहले मैं जब गया था महाराज सुनने के लिए, इसे तन के बैठा था मैं कि सोचा था चलो देखते हैं महाराज क्या कहना चाहते हैं। Because I wasn't looking for guru. क्योंकि मैं कोई गुरु की तलाश में नहीं आया। And the more Maharaj was speaking, the more I was getting like humbled out. और जैसे जैसे महाराज बातें कर रहे थे उतना ज्यादा मैं नीचे झुकता जा रहा था, विनम्र And I होता जा रहा started like bending over. था। और मैं जो है ऐसे झुकता गया, Like, you know, spiritually, emotionally, even physically. आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, यहाँ तक कि शारीरिक रूप से भी। And then getting towards the end of the class, I remember I literally was thinking, I'm laying on the ground right now. और क्लास के अंत तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पूरी तरह से झुक के दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ जमीन में। And no one in my life और किसी ने could do that to me. पूरे जीवन में मेरे साथ कोई ऐसा नहीं कर पाया था। And within like 1 hour, he has me doing like dandavat pranams, completely purified and humbled out. और 1 घंटे में उन्होंने पूरे मुझे शुद्ध करके मुझे विनम्र बना के मुझे दंडवत प्रणाम करवा दिया। So I could see by the results and the effect, like this is not ordinary situation. तो फलों से और प्रभाव से मैं देख पाया कि ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। And I listened to many Maharajas, many nice classes, and he's quoting Shastra, and many, almost all of them. और मैंने कई महाराज से प्रवचन सुना, उनका क्लास सुना और वो शास्त्र कोट करते थे और मैंने लगभग सभी से सुना था। All over the world. पूरे विश्व में। And in America, I was on traveling Sankirtan, so I went temple to temple for years, so I met almost all of them. और अमेरिका में मैं जो है संकीर्तन में था, जो घूम फिर के हम किताबें बांटते थे, तो हम सारे मंदिर में एक-एक करके जाते थे, तो हम सारे लोगों से मिल चुका था। I never had that experience before. तो मेरा कभी भी किसी व्यक्ति से ऐसा अनुभव नहीं था। And then he's spontaneously answering all of my questions. I'm not even asking any questions. और वो अपने आप ही मेरे प्रश्न को उत्तर देते जा रहे हैं और मैं इनको एक भी प्रश्न भी नहीं पूछ रहा हूँ। So how he's doing that? तो वो ऐसा कर कैसे रहे हैं? And then he's destroying my doubts, giving me strength. और वो मेरे संदेहों को नष्ट कर रहे हैं और मुझे और शक्ति देते जा रहे हैं। So then, when I saw those results, I was feeling like, you know, this is he my guru? और जब मैंने ये फल देखना शुरू किया मेरे अंदर ये सवाल आने लगे, क्या ये मेरे गुरु हैं? Because I didn't come there for a guru. क्योंकि मैं वहाँ गुरु के लिए आया I just नहीं went to था। go hear Maharaj talk about Krishna. मैं तो बस सुनने के लिए गया था कि कोई महाराज कृष्ण के बारे में बात कर रहा है। So then I started praying to Krishna in heart. तो मैंने कृष्णा से अपने हृदय में प्रार्थना करना शुरू And किया। I said, Krishna, you know, did you make this arrangement? मैंने कृष्णा से पूछा, क्या कृष्णा आपने ये व्यवस्था की है मेरे लिए? Because this is like extraordinary situation going on here. क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा था ये कोई असामान्य परिस्थिति मेरे सामने आई है। And I said, can you please give me intelligence and faith whether this is your arrangement and whether I should accept this person as my guru. और मैंने कृष्णा से ये प्रार्थना किया कि मुझे बुद्धि दीजिए और मुझे श्रद्धा दीजिए ये बताने के लिए कि ये व्यवस्था आपने की है और मुझे इस व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए या नहीं। And I also prayed to Srila Prabhupada. और फिर मैंने श्रील प्रभुपाद से भी प्रार्थना की। So then all of a sudden Maharaj says, और फिर अचानक से महाराज कहते हैं, like immediately, तुरंत ही उन्होंने कहना शुरू किया। Maharaj says something like this, that महाराज ने कुछ ऐसी बातें कही, you know,
I know my words are pinching you, Murali. मैंने कहा मुझे पता है कि मेरे शब्द तुम्हें चुभ रहे हैं मुरली। And he said, but please understand, I am not your enemy. लेकिन कृपया समझने का प्रयास करो, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। I am your well-wisher, Murali. मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ मुरली। Do you understand? I have come here for you, Murali. उन्होंने कहा तुम समझ पा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ मुरली। Won't you help me? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? And I was like, उन्होंने कहा हे भगवान। unbelievable. अविश्वसनीय अनुभव था ये। So those words and the way he said it, and we know what is the meaning of those words. और जिस तरीके से उन्होंने वो शब्द कहे, And उन I would शब्दों का just pray to समझ में आ रहा Krishna, था। please give me intelligence and faith. और मैं बस कृष्णा से प्रार्थना करता हूँ, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे श्रद्धा As दीजिए। soon as Maharaj spoke like that, immediately I accepted him. जैसे ही महाराज ने ये बातें कही, तुरंत ही मैंने उनको स्वीकार कर लिया। Immediately I understood this Satguru. तुरंत ही मैं समझ गया ये सद्गुरु, Jambi Prabhu say, his pure via medium of Krishna. ये जन्मे जन्मे प्रभु से शुद्ध माध्यम कृष्ण के हैं। Then I prayed to Prabhupada. और मैंने प्रभुपाद से प्रार्थना I की। said, Prabhupada, I don't even know that I need a guru. और प्रभुपाद को मैंने कहा मुझे पता था नहीं था कि मुझे गुरु की जरूरत Because है, you're my guru. क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। But you know लेकिन आपको पता है I need a guru. कि मुझे गुरु की जरूरत है। And therefore you've mercifully made this arrangement and sent my spiritual master. और इसीलिए कृपा करके आपने मेरे लिए ये व्यवस्था की और मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री गौरव महाराज को मेरे सामने भेजा। And then just after that, the class was over. और उसके तुरंत बाद क्लास And खत्म हो Maharaj गई। came and gave me his garland. महाराज आए और उन्होंने मुझे माला दी। And when the garland went around me, everyone around me said, "What did you do? How did you get so much mercy?" I said, "I don't know. I don't know what happened. I don't know exactly what just happened to me." और मेरे पास जब ये माला आई तो सब लोग कहने लगे ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें ऐसे कृपा कैसे मिली? मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे मिली। And then the whole night I could not sleep अब पूरी रात मैं सो नहीं पाया, because my Gurudev awakened my soul ecstatically that I could not sleep. कि मेरे गुरुदेव ने मेरी आत्मा को इस तरह से जगा दिया कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया। And that never happens. और ये पहले कभी ऐसा That's कभी होता नहीं। another sign, you know. या एक और Ecstatically awake. What does that even mean? कि आप भाव विभोर होकर जगे ही रह गए, इसका मतलब क्या हुआ? That night I understood what it meant. उस रात में समझ पाया कि जब आप And जगे then the होते next हैं पूरी day I रात। asked Gurudev, I asked, please accept me as your shishya. और अगले दिन मैं गुरुदेव के पास जाकर मैंने कहा आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। And Gurudev immediately said yes. और गुरुदेव ने तुरंत कहा हाँ। And then everyone was shocked और सभी आसपास लोग चौंक गए because they knew I had another guru. क्योंकि उनको पता था मैंने किसी और गुरु से दीक्षा ली है। So then some of them started complaining to Maharaj. You know, he has another guru, and like a bunch of girls. You know, excuse my language. You know. और फिर कुछ लोग जो है शिकायत करने लगे महाराज से कि इनके पहले दूसरे गुरु हैं, जैसे कुछ लड़कियां जो शिकायत करती He already has a guru. और उसके पास एक गुरु है पहले से। And Gurudev said, okay. और गुरुदेव ने कहा ठीक है। So you just get permission and blessing from your other guru. उन्होंने कहा आप आशीर्वाद दीजिए और अनुमति लीजिए अपने पूर्व गुरु से। There's a Vaishnava etiquette. ये है वैष्णव सदाचार। And he's Vaishnava, definitely he'll give you the mercy and blessing. If he's Vaishnava, he'll give mercy and blessing too, because he'll understand Krishna's arrangement. क्योंकि अगर वो वैष्णव है तो वो आपको कृपा देंगे, आशीर्वाद देंगे, अनुमति देंगे, क्योंकि वो समझ पाएंगे वो भी कि ये कृष्णा की व्यवस्था है। And then I went back, immediately I left, went back to my apartment. और तुरंत ही मैं वापस जाके अपने अपार्टमेंट में गया। And I called the temple. और मैं उस मंदिर में मैंने I फोन called the किया। general number. I'm in California, I called all the way to Boston. और मैं कैलिफोर्निया में था और मैंने बॉस्टन में फोन घुमाया। And I just remembered, somehow I remembered the temple number. और किसी तरह से मेरे मन में उस मंदिर का नंबर याद था। And Maharaj answers the phone. और महाराज ने फोन भी उठा I लिया। was like, oh Krishna. मैंने कहा हे कृष्णा। Because now I have to ask him, I want to go to other guru. क्योंकि अब मुझे उनसे पूछना था कि मैं दूसरे गुरु के पास जाना चाहता हूँ। So I don't want him to feel bad. तो मैं नहीं चाहता था उनको बुरा लगे। I don't want to offend him. मैं उनको बुरा लगाना नहीं चाहता, अपराध नहीं करना चाहता। But I know this is not going to be an exactly easy conversation either. लेकिन मुझे पता था कि हमारी बातचीत इतनी My brother Bob, you understand the complexity of that? वो आप समझ पा रहे हैं क्या जटिल परिस्थिति थी उस समय मेरे साथ।
So then he's saying many things, Maharaj, and then finally he said, well, this has never been done before in ISKCON, brother. तो मैंने इस तरह से बात की, महाराज ने और भी कई सारी बातें की। उन्होंने कहा मुरली, इस्कॉन में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। So that means it'll have to go to the GBC. इसका मतलब हमें GBC में जाना होगा। And they'll have to do a whole, you know. What do you call it? Shastic Advisory Committee, you know. Put all the scholars on that one, you know. और फिर उनको जो है शास्त्रिक सलाहकार समिति बनानी पड़ेगी और सारे शास्त्रों को लाके जमा कर सारे विद्वानों को बैठाना पड़ेगा शास्त्र खोजने के लिए। Very awkward. तो ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति और ये पहले कभी हुआ नहीं है। GBC. हमें GBC में जाना होगा। And I just felt like, oh my God, you know, it's not sounding good. You know, I just went from not sleeping all night to wanting to jump off the bridge. You know what I mean? अब पूरी रात जगह मैं सोया नहीं, अगले दिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पुल से कूद जाऊँ। And then so Maharaj said, so because of that, I'll have to say no. और महाराज ने कहा इस सारे कारणों की वजह से मैं तुमको अनुमति नहीं दे सकता। So I crawled back to Maharaj. तो मैं महाराज के पास वापस रेंगते हुए गया। To Srila Govinda Swami. Srila Govinda I went to his room. उनके कमरे में We गया। got more shastra for you. हमारे पास और भी शास्त्र हैं आपके लिए। Locked and loaded. पूरी अभी बंद करके और तैयार करके रखा है। Then I went back to Maharaj. और फिर मैं महाराज के पास वापस गया। And Maharaj, I said, he said no. और मैंने महाराज से कहा महाराज उन्होंने मुझे ना कर दिया है। Murali, you have accepted me in your heart. उन्होंने कहा मुरली तुमने मुझे अपने हृदय में स्वीकार किया है। And I have accepted you in my heart. और मैंने तुम्हें अपने हृदय में स्वीकार किया है। Krishna wants it. और कृष्ण ने चाहते हैं। It will happen. और ये होगा। But just be a little patient. बस थोड़ा धैर्य रखना। And he just pacified me. और उन्होंने मुझे पूरा संतुष्ट शांत कर दिया। Then somehow Maharaj finally wrote me a letter. और अंत में महाराज ने मुझे एक पत्र Gave लिखा permission. और मुझे अनुमति मिल गई। Then I immediately went to Bhubaneswar. तुरंत मैं भुवनेश्वर आ गया। And Lord Nityananda's appearance day was coming. और नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस आ रहा था। And Maharaj gave me second initiation. और महाराज ने मुझे दूसरी दीक्षा दी। He kept the first, the Harinam initiation. और जो हरि नाम दीक्षा जो उन्होंने मेरा वही जारी रखा। And gave second Brahman Diksha. और मुझे दूसरी जो है ब्राह्मण दीक्षा मुझे दी। So this is very practical also. तो ये बहुत ही व्यवहारिक भी है। So what I'm speaking is not theoretical because all the acharyas say like this. तो मैं जो बोल रहा हूँ ये कोई मौखिक ज्ञान नहीं है क्योंकि सारे आचार्यों ने ये बात कही है। And the Shastra says like और that. शास्त्र ऐसा कहते हैं। And this practically also, I witnessed that. और मैंने खुद उसको That was अपनी आंखों also से my गवाह किया। experience. That's why I have so much faith in them. और यही मेरा अनुभव है ये, इसीलिए मुझे इसमें इतनी श्रद्धा भी है। So that intelligence and faith तो will come from Krishna. ये बुद्धि श्रद्धा ये कृष्ण से आती है। Now when I read the Bhagavad Gita and Krishna said, okay, no truth superior to me. तो जब मैंने भगवत गीता पढ़ी और कृष्ण बताते हैं मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं है। I'm the source of all material spiritual worlds. मैं सारे भौतिक आध्यात्मिक जगत का स्रोत हूँ। I'm the seed-giving father of all living entities. मैं सारे जीवात्माओं का बीज प्रदाता पिता हूँ। So Krishna convinced me. कृष्ण ने मुझे आश्वस्त कर दिया, हम सभी को आश्वस्त किया कृष्ण। Then I said, okay, Krishna, how am I supposed to serve you? तो मैंने कृष्णा से पूछा, कृष्ण मैं कैसे अब आपकी सेवा करूं? I'm a soul surrendered unto you. मैं आपको शरणागत आत्मसमर्पण करता हूं जैसे Please tell me decisively, specifically, how can I serve you? कृपया मुझे निश्चित रूप से विशेष करके बताइए कैसे Then मैं आपकी no सेवा कर answer सकता was हूं? coming to me. तो मुझे जब कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, I kept asking, no answer. मैं पूछता रहा, लेकिन मुझे कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा था। And then finally, some intelligence came. You need to find someone that I can speak through. और कहीं किसी तरह से मुझे एक बुद्धि मिली कि तुम्हें ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत है जिसके माध्यम से मैं तुमसे सीधे बात कर पाऊंगा। So you need a guru. इसका मतलब तुम्हें गुरु की जरूरत है। So for conditioned soul, especially in beginning, the only real intelligence is who you should accept as a guru. You Prabhupada said, you go to this person. और बद्ध जीव के लिए विशेष करके शुरुआत में उनको जो बुद्धि मिलती है कि आप जाइए और उस व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। Within his super soul Paramatma, he will help you and he will dictate to you that you should go and accept this person as your guru. परमात्मा आपको भीतर से मदद करेंगे, आपको सीधे बताएंगे आप जाकर इस व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। If one becomes serious,
then Krishna sends him to proper guru. और अगर कोई गंभीर होता है तो कृष्णा उनको प्रमाणिक सही गुरु के पास भेज देते हैं. Krishna is there within the core of the heart of everyone, and if somebody is serious, Krishna sends him to a bona fide guru. कृष्णा सभी जीवात्माओं के हृदय में स्थित हैं और जब वो देखते हैं कोई जीवात्मा एकनिष्ठ है तो कृष्णा उनको गुरु के पास भेज देते हैं. So in this science of self-realization, this Mr. what's his name? Mr. O'Grady. तो ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान Mr. जो होता है, O'Grady? जो मिस्टर Mr. O'Grady. ओग्रेडी का एक वृत्तांत है. So Mr. O'Grady said to Srila Prabhupada, it seems like the problem is to find the spiritual master. तो मिस्टर ओग्रेडी श्रील प्रभुपाद को कह रहे हैं ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक गुरु को ढूंढ पाना बहुत कठिन है. And Srila Prabhupada said, this science self-realization. ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान किताब है. Prabhupada said, that is not the problem. प्रभुपाद कहते हैं ये कोई समस्या नहीं है. The problem is whether you are sincere. समस्या ये है कि आप एकनिष्ठ हैं या नहीं. You have problems, तुम्हारे पास समस्याएं हैं, but God is within your heart. लेकिन भगवान तुम्हारे हृदय में मौजूद God है. is not very far away from you. भगवान तुमसे बहुत दूर नहीं है. If you are sincere and serious, अगर आप एकनिष्ठ हैं, गंभीर हैं, then God will send you a spiritual तो master. भगवान आपको एक आध्यात्मिक गुरु भेज That देंगे. Chetu Guru, God in the heart, Chetu Guru, the spiritual master within the heart, जो चैत्य गुरु भगवान जो आपके हृदय में मौजूद हैं, he will give you direction. वो आपको दिशा देंगे. The Lord says, और भगवान बताते हैं you wanted to do this, आप ऐसा करना you चाहते want थे, to surrender and serve me, अगर आप मुझे शरणागत सेवा करना चाहते थे now here is your तो chance. अब आपके पास ये मौका है. Now go and do it. आप चाहिए और ऐसा कीजिए. If you are sincere and you say, now God, I want you, अगर आप एकनिष्ठ हैं, गंभीर हैं, भगवान कहेंगे भगवान अब मैं आपको चाहता हूँ, then he will give you directions. तो वो आपको दिशा देंगे. Yes, now you come and get me like this. जब आप आओ और मुझे इस तरीके से प्राप्त करो. So questions so far? कोई Anything? प्रश्न, कोई बात अब तक में? You get anything? Question? आपके पास कोई प्रश्न? No? Are we answering everything? क्या आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? Oh no. Huh? Just keep going. You what? Just keep going. Keep going. Keep going? Really? जारी You रखिए. guys have patience with me? आप सबके पास धैर्य है मेरे What's साथ? wrong with you people? आप लोगों के साथ क्या गड़बड़ी है? I'm dangerous. मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ. I'm deviant. मैं एक भटका हुआ आदमी हूँ. I'm speculating, I'm manufacturing, I'm concocting. मैं मनोधर्म कर रहा हूँ, मनगढ़ंत चीज बना रहा हूँ. Why are you listening to me? आप लोग क्यों सुन रहे हो मुझे? Anyway, let's continue. चलिए जारी रखिए. Do you like these quotes? क्या आपको ये समझ में अच्छे लग रहे हैं ये सारे कथन? Now, when I met Srila Govinda Swami, he was explaining all of this and pointing out all of these quotes, and I was like, why did I never see this before? तो जब हम श्री गौर गोविंद महाराज से मिले तो वो हमें ये सारे कथन प्रभुपाद किताबों से दिखा रहे होते थे और मैं सोचता था कि हमने ये सारी चीजें पहले कभी क्यों नहीं देखी. For years, I'm reading the Shastras, सालों सालों से मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ. right? 2-3 hours a day दिन में 2-3 for घंटे पढ़ रहा हूँ. 5 years. 5-6 सालों से. And I never saw this, और कभी भी ये नहीं and पढ़ I पाया. never heard कभी this, सुना तक नहीं. and no Guru, Maharaj ever spoke about this. और किसी गुरु ने किसी महाराज ने इसके बारे में कोई बात नहीं की. Why? क्यों? Is this not important information? क्या ये महत्वपूर्ण Like, जानकारी shouldn't नहीं है? people understand this before you tell them you need a guru? क्या पहले लोगों को ये समझने की जरूरत नहीं है इससे पहले कि आपको एक You गुरु don't की know जरूरत है. anything. आपको कुछ भी You जानकारी need a guru. Go pick a guru. कहते हैं आपको गुरु चाहिए. गुरु लेना है, गुरु चुनिए जाके. What's a guru? तो हम कहते हैं गुरु क्या होता Where do है? you find a guru? गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे? Yeah, just pick one of those. हाँ, इनमें से कुछ एक चुन लीजिए. There's a bunch of gurus. यहाँ बहुत सारे गुरु हैं. It's like sending someone out to go buy some diamonds, you know? जैसे किसी को हीरे You खरीदने के लिए know भेजा जाता nothing है about diamonds. और उसको हीरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है. And someone's got some shiny glass and you're like, oh, I got some diamonds, you know? और कोई चमकता हुआ वो कांच खरीद के आएगा कहेगा मैंने हीरा खरीद लिया. Then you bring it home to your wife and she's looking at it, but she's like throwing it out the kitchen window. You know? और फिर आप पत्नी के पास लेके आते हैं, पत्नी You देखती got है cheated. और उसको खिड़की के किचन की खिड़की से बाहर फेंक It's a देती है. diamond. कहती है तुम तो ठगे गए, तुमको पता ही नहीं हीरा क्या होता है. I hope you didn't spend too much money on that. मुझे उम्मीद है आपने उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगाए होंगे.
So all of these quotes is just about sincerity and seriousness. तो ये सारे वाक्य गंभीरता और एक निष्ठता के ऊपर है। That's a very personal thing. ये बहुत ही व्यक्तिगत चीज है। And so, are we really convinced of our sincerity and seriousness? क्या हम असल में आश्वस्त हैं अपनी गंभीरता और अपनी एक निष्ठता को लेकर? Because if we're not really convinced, तो अगर हम क्योंकि आश्वस्त नहीं then हैं, how are we going to convince Krishna? तो हम कैसे कृष्ण को आश्वस्त And करेंगे? then if we don't convince Krishna, अगर हम कृष्ण को आश्वस्त नहीं then करेंगे, what is the meaning of accepting a guru? तो गुरु स्वीकार करने का मतलब क्या है? And is that guru sent by Krishna और क्या वो गुरु कृष्ण के द्वारा भेजा गया or है sent by या Maya? माया के द्वारा भेजा गया है? Let me give you some of those quotes. उनमें से भी कुछ मैं आपको वाक्य सुनाता Let's give you the other side of the coin. हूँ। सिक्के के दूसरे पहलू को भी हम आपको देते हैं। How's that sound? कैसा लगा सुनने में वो? He says you're so enthusiastic. कहते थे आप बहुत उत्साही हैं। Oh, here's an interesting one. I told you I get all kinds of interesting ones there. ये बहुत दिलचस्प चीज मुझे I'm like these guys who are looking for gold. मैं वैसे आदमी हूँ जो सोना ढूंढते हैं। They're like a mining for gold. Oh, just Once I heard they talking about all these stuffers, I was like literally like looking for nuggets of gold. तो जब गुरुदेव ने मुझे ये सारे तत्व सिखाए तो मैं जैसे इन सारे जगहों पे सोना ढूंढता रहता था। ये सोने कहाँ मुझे मिलेंगे ये तत्व? And I spent years studying, researching, pulling out all of the gold. और मैंने सालों अपना खोजबीन किया इन सारे सोने को यहाँ से बाहर निकाला। Because what happened was when I left the family life to go preaching, then I started traveling in ISKCON and preaching in all the temples. क्योंकि क्या हुआ जब मैंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग करके इस्कॉन के अलग-अलग मंदिरों में जाकर प्रचार करना शुरू किया। And then I was preaching in Bombay. और मैं बॉम्बे में प्रचार कर रहा And I was talking about Srila Govinda Swami and my experience, and people were like not happy with me. और मैंने देखा मैं श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज और उनके साथ मेरा कैसा अनुभव रहा इसके बारे में बात कर रहा था। लोग मुझसे सुनकर सुखी नहीं थे इस सारी बातें। And one Indian devotee friend of mine, he told me, he said, you see, most of these people in the temple, they just have faith in Srila Prabhupada. और फिर एक भारतीय भक्त ने मुझे आकर कहा कि इस मंदिर में जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोगों को प्रभुपाद के ऊपर विश्वास है। They don't really know so much about your spiritual master at that time. और उस समय वो लोग श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में बहुत I'm saying ज़्यादा like नहीं 20 जानते। years ago. और ये 20 साल पहले Now की he's बात है। become more and more prominent, more and more famous. और अब वो और ज़्यादा प्रसिद्ध होते जा रहे हैं और लोगों के बीच में जानकारी आती जा रही है। But you know, in 2004 or 2006, it was not so much yet ready. लेकिन 2004 में 2006 में ये सब उतना लोगों के बीच में जानकारी नहीं थी। So he said, you see, you have faith in your guru, and you're explaining your guru and your experience, but these people don't know your guru, they don't really know you, and really they just have faith in Srila Prabhupada, so better you just present Prabhupada. तो उन्होंने कहा आपको आपके गुरु के ऊपर श्रद्धा है और ये लोग आपके गुरु को नहीं जानते, आपको नहीं जानते क्योंकि इनको केवल प्रभुपाद के ऊपर विश्वास है, प्रभुपाद की वजह से आए हैं। And they were saying like privately, because really we don't have faith in these people, we have faith in Prabhupada, so we're kind of like Ritviks, but we're living in ISKCON. असल में वो कह रहे थे हमें So असल we're में like covered Ritviks. असल में हम इस्कॉन में हैं लेकिन असल में हमें कि बहुत सारे लोग आते रहे यहाँ पे उनके ऊपर हमें श्रद्धा नहीं। असल में हमारे श्रद्धा प्रभुपाद में, हम असल में ऋत्विक जैसे हैं लेकिन ढके हुए मंदिर में ही रहते हैं लेकिन हम हैं ऋत्विक जैसे। So what I did was everything I learned from Srila Govinda Swami, तो मैंने क्या किया, जो भी मैंने श्रील गौर गोविंद से महाराज से सीखा I just went into Srila Prabhupada's books, तो मैं श्रील प्रभुपाद की किताबों में गया and I found where Srila Prabhupada is saying exactly the same thing. और मैंने वो चीज पाई जो जहाँ पे श्रील प्रभुपाद बिल्कुल वही चीजें कह रहे हैं जो श्रील गौर गोविंद से So महाराज। if they will accept it from Srila Prabhupada because they're accepting Prabhupada as authority, that means you have to show them that Prabhupada is speaking like this. You have to quote the law books. तो अगर वो केवल प्रभुपाद की बातों को स्वीकार करते हैं, प्रभुपाद को अधिकारी मानते हैं, तो प्रभुपाद की किताबों से मुझे उनको दिखाना पड़ेगा क्योंकि प्रभुपाद किताबें कानून की किताबें हैं। So in Bombay, January 8, 1977, बॉम्बे जनवरी 8, 1977, the one guest is asking, how do we get a guru? तो एक गेस्ट सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे हमें पता चलेगा गुरु कौन है। Now some other guest says the guru will find you. और एक दूसरा गेस्ट कह रहा है कि गुरु आपको ढूंढेगा। How do we get a guru? Oh, the guru will find you. कैसे हमें गुरु मिलेंगे? तो एक और गेस्ट कहता है गुरु हमें ढूंढेगा। And then Srila Prabhupada says
not that the guru finds you. तो प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसा नहीं गुरु आपको ढूंढेंगे, You have to find out the guru. आपको गुरु को पता लगाने की जरूरत होगी। The guru is there. गुरु मौजूद है, The guru is there. गुरु मौजूद है, But if you want to be cheated, लेकिन अगर आप ठगाना चाहते हैं then you find out. तब आप पता लगाइए। So basically it's coming down to what do you want? What do you deserve? बात यहाँ आ जाती है, आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज के लायक हैं। Prabhupada says, if you want to be cheated, then the cheaters will come. तो प्रभुपाद कहते हैं अगर आप ठगना चाहते हैं तो ठग आएंगे आपके लिए। So if we're cheating and want to be cheated, then there's also cheating guru will be there. तो अगर हम ठग रहे हैं, ठगना चाहते हैं, तो हमें ठग गुरु भी उपलब्ध है। Guru Krishna Kripa. गुरु कृष्ण कृपा। If you are actually serious to serve Krishna, अगर आप असल में गंभीर हैं कृष्ण की सेवा Hare करने, Krishna, हरे कृष्ण, then Krishna will give you, तो कृष्ण आपको देंगे, here is Guru. यहाँ है गुरु। So first, Krishna says, what do you want? तो सबसे पहले कृष्ण देखेंगे Are आप we क्या चाहते cheating? हैं। Want to be cheated? Are we serious, sincere or not? Krishna is the witness and the judge. हम ठग रहे हैं, हम ठगना चाहते हैं, हम एकनिष्ठ हैं, गंभीर है या नहीं, कृष्ण उसका न्याय करेंगे। If you want to, if you deserve to be cheated, you get cheated. तो अगर आप ठगी के लायक हैं तो आप ठगे If जाएंगे। you're actually sincere and serious to want to surrender and serve Krishna, Krishna will give you and say, here is a guru, here is your guru. तो अगर आप एकनिष्ठ हैं, गंभीर हैं, कृष्ण को शरणागत करने के लिए, कृष्ण आपको देंगे, यहाँ है गुरु। The guru is there. गुरु मौजूद है, Guru is there. गुरु मौजूद है, But unless you are actually serious, लेकिन अगर आप असल में गंभीर हैं, again, actually serious, असल में गंभीर हैं, factually serious, तत्व में गंभीर हैं, really, really, really bona fide guru. असल में प्रमाणिक गुरु। So if you are actually serious, तो अगर आप असल में गंभीर हैं, then you can get the real guru. तब आपको असल गुरु मिल सकते हैं। If you want to be cheated, अगर आप ठगाना चाहते हैं or if you are a cheater, या आप ठग हैं, then you get a cheater guru. तो आपको एक ठग गुरु मिलेगा। So somebody's cheating, they get a cheating guru, right? And they're saying, oh, this Maharaja, he's offending my guru, he's calling him a cheater. तो अगर आप ठग हैं, आपको ठग गुरु मिल रहे हैं, तो वो ये महाराज जो हैं अपराध कर रहे हैं, मेरे गुरु को ठग कह रहे हैं। I'm not calling anybody. I'm not the witness and the judge. मैं कोई गवाह नहीं, मैं कोई न्यायकर्ता नहीं हूँ। Right? Why are you feeling that all of a sudden you're feeling like you got a cheating guru? क्यों आपको अचानक से ऐसा लग रहा है कि आपको ठग गुरु I मिला? never said he's a cheating guru. मैंने तो नहीं कहा वो ठग गुरु है। Are you cheating? क्या आप ठग हैं? Did you get cheated? क्या आप ठगे जा चुके हैं? Why are you all of a sudden shaky about your guru? तो क्यों आप अपने गुरु के प्रति आपका विश्वास हिल रहा That's है? another question. तो ये एक और प्रश्न है। Don't blame me. मुझ पे आप क्यों दोष दे रहे हो? Are we good? क्या हम ठीक हैं? Wow, you guys are really fired up. अब सब लोग पूरे उत्साह में हैं। All right, Prabhupada speaking in 4, Bhagavad Gita 4:34, New York, भगवद गीता 4 अध्याय 34 श्लोक न्यूयॉर्क में वक्त प्रभुपाद बता रहे हैं 1968. 1968। This is the process. ये है प्रक्रिया। When we are seriously anxious about understanding the science of God, जब हम गंभीरता से व्याकुल हो जाते हैं भगवान के विज्ञान को समझने के लिए, then God is within you, तो भगवान आपके भीतर है and He will make your relationship with such a spiritual master और फिर वो आपका संबंध ऐसे आध्यात्मिक गुरु से who बनाएंगे will enlighten you further and further. जो आपको और ज्यादा जागृत करेगा और आगे लेके जाएगा। So practically, the spiritual master is the representative of Krishna. तो व्यवहारिक रूप से आध्यात्मिक गुरु कृष्णा के प्रतिनिधि है Now this depends on me. और on ये us. अब मेरे ऊपर निर्भर है। Yayatamam prapadyante tam satava bhajamyaham. The degree of my serious thought. जितनी गंभीरता से मैं विचार कर रहा हूँ, Right, what is the degree of my serious thought? कितनी गंभीरता से मैं विचार कर रहा हूँ, If I'm really seriously desiring about actually understanding the Supreme Lord, कि अगर मैं असल गंभीरता से विचार कर रहा हूँ परम भगवान को समझने का, then I will get such a spiritual master तो मुझे ऐसे आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे
who can give information and reveal to me the Supreme Lord. जो मुझे जानकारी दे सकते हैं और परम सत्य को मेरे सामने प्रकाशित कर सकते But हैं। if I want something else, लेकिन अगर मैं कुछ और चाहता हूँ, then Krishna will help you in that way also, तो कृष्ण आपको उस तरीके से भी मदद करेंगे and you'll get something else. और आपको कुछ और मिल जाएगा। So what do you want? तो आप क्या चाहते हैं? That's why I always say, we have to be convinced. What do we want? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ What's the plan? आश्वस्त होना होगा। हम क्या What's चाहते हैं? the हमारी क्या ultimate योजना desire? है? हमारी अंतिम इच्छा क्या है? Otherwise, how's Krishna going to know? वरना कैसे कृष्णा को ये बात पता चलेगी? So I want Krishna. बोले, हमें कृष्णा चाहिए। I want to surrender to Krishna. मैं कृष्णा को शरणागत करना चाहता हूँ। I want to go back to Godhead. मैं भगवत धाम वापस जाना चाहता हूँ। Why does Prabhupada say hardly anybody wants to go back और to प्रभुपाद Godhead? ऐसा क्यों कह रहे कि मुश्किल से ही कोई भगवत धाम जाना चाहता Hardly anybody's serious about the spiritual life. है, मुश्किल से ही कोई गंभीर आध्यात्मिक जीवन के लिए। Well, what does that mean? इसका अर्थ क्या है? We're not prepared. We're not prepared to accept it. हम तैयार नहीं है उसको स्वीकार करने के लिए। We're not prepared to accept the process to qualify ourselves to deserve that. हम उस प्रक्रिया को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिससे हम स्वयं को योग्य बना सकते हैं कि हम उसको पाने के No लायक devotee बने। will say, of course we want to go back to Godhead. और हर एक भक्त कहेगा हाँ अवश्य मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। But practically speaking, लेकिन अगर व्यवहारिक बात are की we जाए, willing to do the work, क्या हम उसको करने के लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं, उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार which is हैं, not easy. जो इतना आसान नहीं है। Prabhupada said, chant, dance, take prasad, go back to Godhead. और हाँ कहा कि जप कीजिए, नाचिए, प्रसाद दीजिए, भगवत धाम What's जाइए। the problem? समस्या क्या है? And Prabhupada said, you see, if I told you really what it's going to take, nobody would have came. और प्रभुपाद ने कहा अगर मैं आप लोगों को असल में बता देता, आप लोगों को क्या करने की जरूरत है यहाँ, तो आप में से कोई आता तक नहीं। So Prabhupada laughing, he said, therefore I have to cheat you. प्रभुपाद हंसने लगे, कहने लगे इसलिए मुझे आप लोगों को थोड़ा ठगना पड़ा। Chant, dance, take prasad, go back to Godhead. बहुत आसान है, नाचिए, गाइए, प्रसाद लीजिए, भगवत धाम जाइए, Chaitanya चेतो दर्पण मार्जन कीजिए। Just get the feather duster and get the dust off the mirror. कि थोड़ी सी धूल है और उसको धूल को बस झाड़ कर हटा देना है आईने Dust से। on the mirror. ये थोड़ी सी धूल है आईने What's the में। problem? समस्या क्या है? Then after 20, 30 years, I'm like, what kind of dust is that? लेकिन 20-30 साल से पहले ये कैसा धूल है? That's why Guruji said, thick layer, Baba. Like the Himalayan mountain. मोटी परतें, हिमालय पर्वत के जैसा। So can you imagine Prabhupada saying to the hippies, it's a thick layer, क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रभुपाद जो हिप्पियों को बताएंगे कि मोटी परतें हैं हिमालय पर्वत जैसी। Anyway, I was going to make a joke, but I better not. तो मैं एक अभी मजाक करने वाला था लेकिन मैं अब नहीं करूँगा। They'd be like, thick layer of what, man? हिप्पी कहते क्या मोटी परतें हैं वो? Well, I'm dreaming about that. Where do we go for that? वो मुझे उसके सपने आ रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा? Thick layer, मोटी man. परतें हैं। I wasn't going to say it, but it was too good, मैं इसको बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे इतना It अच्छा had to be said. मुझे बोलना ही पड़ा। There was no option. मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। Then one reporter is asking Prabhupada, तो एक पत्रकार प्रभुपाद को पूछ रहे हैं। he says, frankly, what's worrying me is that since the arrival in Britain some time ago of these Indian Swamis, वो कह रहे हैं आश्चर्य की बात है क्योंकि बहुत सारे ब्रिटेन में अभी भारत से स्वामी आ रहे हैं, who was the first guru, उनमें से कुछ जो पहले गुरु थे, that most of the people, they never heard of any gurus before. तो बहुत सारे लोगों को गुरु के बारे में पता नहीं था, गुरु शब्द Now सुना all of a नहीं था, sudden all these gurus are coming out of nowhere. और अचानक से इतने सारे गुरु आ रहे हैं अभी कहाँ से? And the reporter is saying, sometimes I get this feeling that not all of them are as genuine as they should be. और वो पत्रकार पूछ रहे हैं कई बार ऐसा लगता है कि वो गुरु उतने सही गुरु नहीं है जितना वो देखने में लग रहे हैं। So he started questioning, like, who are these swamis? Who are these gurus, right? तो असल में उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया, ये स्वामी कौन है, ये गुरु कौन है? And then he says to Srila Prabhupada, would it be right to warn people who are thinking
about taking up spiritual life, that they should make sure that they have a genuine guru to teach them? Should we warn them? और पत्रकार ने पूछा क्या ये सही होगा कि लोगों को हम चेतावनी दें ये जानने के लिए कि अगर वो जो आध्यात्मिक जीवन को चुनना चाहते हैं कि वो सही स्वामी या गुरु के पास जा रहे हैं या नहीं? And Srila Prabhupada says, yes, of course, to search out a guru, this is very nice. और प्रभुपाद ने कहा हाँ गुरु ढूंढना बहुत ही अच्छी बात है. But if you want a cheap guru, लेकिन अगर आप कोई सस्ता गुरु चाहते हैं, or if you want to be cheated, अगर आप ठगना चाहते हैं, then you will find many cheating gurus. तो आपको बहुत ठग गुरु मिलेंगे. But if you are sincere, लेकिन अगर आप एक निष्ठ हैं, then you will find a sincere guru. तो आपको एक निष्ठ गुरु मिलेंगे. So again, question of sincerity and seriousness. तो फिर एक निष्ठता गंभीरता का प्रश्न आता है. There's a morning walk with Prabhupada, December 7, 73 in Los Angeles. और ये प्रभुपाद जब सुबह के सैर के लिए निकले थे दिसंबर में 1973 में. And one disciple of Srila Prabhupada is saying, Prabhupada, if someone is actually sincere, can he be cheated? और एक भक्त प्रभुपाद से सवाल पूछे अगर कोई भक्त असल में एक निष्ठ है क्या वो ठगा जाएगा कभी? Or will he always get a bona fide guru? या उसे हमेशा कोई प्रमाणिक गुरु ही मिलेंगे? And Srila Prabhupada says, no, if he is sincere, then he'll get bona fide guru. और प्रभुपाद ने अगर कोई एक निष्ठ है तो उसे प्रमाणिक गुरु मिलेंगे. Guru is in Krishna. Guru and Krishna. Krishna is within inside of you. If he sees that you are sincere, he'll give you the right person. कृष्ण देखेंगे जो आपके भीतर है कि अगर कोई एक निष्ठ है तो वो उसको सही व्यक्ति के पास भेजेंगे. And then Bali Madan Prabhu, he said, so if you're not completely sincere, और बलि मर्दन प्रभु पूछ रहे हैं अगर आप पूर्ण रूप से एक निष्ठ नहीं है, then you might get one of these Guru Maharajis, one of these bogus gurus. तो आपको इनमें से कोई गुरु महाराज जी या फालतू बोगस गुरु मिलेंगे. And Srila Prabhupada said, yes, और प्रभुपाद ने कहा हाँ, because you want to be cheated. क्योंकि आप ठगाना चाहते थे. You want to be cheated, so therefore you go to a cheater. That's all. तो आप ठगाना चाहते थे इसलिए आप एक ठग के पास गए, बस इतना ही. Deyatam mam prapadyante tam sataiva bhajameham. Krishna is very intelligent. कृष्णा बहुत बुद्धिमान है. He's super intelligent. वो सभी से सबसे ज्यादा बुद्धिमान है. If you are a cheater, अगर आप एक ठग हैं, he will cheat you. वो आपको ठगेंगे. He will cheat you. वो आपको ठगेंगे. He's a first class cheat. वो सबसे उत्तम श्रेणी के ठग हैं. कृष्णा. Krishna is a first class cheat. कृष्णा प्रथम श्रेणी के ठग हैं. But if you are actually sincere, लेकिन अगर आप असल में एक निष्ठ हैं, then he'll give you the right thing. तो वो आपको सही चीज देगा. A bona fide guru. एक प्रमाणिक गुरु. Krishna says, 15:15 Bhagavad Gita, Mata Shmitya Jnanam Aponam Cha. Everything is coming from me, Krishna says. कृष्णा 15वें अध्याय 15वां श्लोक में बता रहे हैं कि सब कुछ मुझसे आती है. Even forgetfulness. यहाँ तक कि विस्मरण भी. So if you are a cheater, तो अगर आप एक ठग हैं, Krishna will give you such intelligence that you'll forget Krishna forever. कृष्णा आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि आप कृष्णा को हमेशा के लिए भूल जाएंगे. Then one disciple says, so Srila Prabhupada, is it so that birds of the same feather, they flock together? और श्रील प्रभु बता रहे हैं कि एक पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं. Then the cheaters, they also flock together? तो क्या ठग भी एक साथ उड़ते हैं? And Prabhupada laughing, he said, yes, birds of the same feathers, they flock together. कहते हैं हाँ एक पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं. This will be the last one because I don't want to take advantage of your time. तो ये सबसे आखिरी है क्योंकि मैं आपके समय का ज़्यादा लाभ नहीं उठाना चाहता. Krishna, is this enough? We're getting there? तो क्या आपके लिए पर्याप्त है? हम पहुँच रहे हैं आपके नज़दीक. Srimad Bhagavatam 1:16:35. श्रीमद् भागवतम 1:16:35. Hawaii, हवाई में January 28, 1974. जनवरी 28, 1974. This is Srila Prabhupada speaking on the Bhagavatam class. भागवतम के प्रवचन में बता रहे हैं. And Srila Prabhupada says Krishna comes himself और प्रभुपाद बताते हैं कृष्णा स्वयं आते हैं.
He is within everyone's heart. वो सभी के हृदय में मौजूद हैं He's instructing. और वो निर्देश दे रहे हैं He is ready to instruct you. और वो आपको निर्देश देने के लिए तैयार हैं But he'll only instruct to such persons who have engaged themselves in serious devotional service. लेकिन वो उन्हीं लोगों को निर्देश देते हैं जो गंभीर भक्तिमय सेवा में लगे हैं Krishna is there. कृष्ण मौजूद हैं वहाँ Just like the master is there and there are many workers that are also there. जैसे कोई मालिक हैं और बहुत सारे उनके काम करने वाले नौकर काम कर रहे हैं So Prabhupada says like in a construction site you have the foreman and then you have the workers. तो प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं कि आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं वहाँ पे एक मुख्य कार्यकर्ता है और बाकी उसके सारे अलग अलग लेबर्स हैं So the owner, he just speaks to the foreman. He doesn't speak to the laborers. तो जो मालिक हैं वो सबसे मुख्य कारीगर से बात करते हैं बाकी सारे लोगों से वो बात नहीं करते Prabhupada said he only speaks to the important people. प्रभुपाद बताते हैं मालिक जो है केवल महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बात करता है So here Prabhupada is saying that Krishna is there like the master and there are many workers are also there. तो इससे कृष्ण बता रहे हैं कि वो मालिक हैं और बहुत सारे नौकर मौजूद हैं But the master speaks to the important persons, लेकिन मालिक जो है केवल महत्वपूर्ण लोगों से बात करते हैं not to ordinary persons. सामान्य व्यक्तियों से नहीं So that master is there within everyone's heart. तो वो मालिक सभी के हृदय में मौजूद He's है guiding as our friend. और हमारे मित्र के रूप में हमें मार्गदर्शन He दे रहे हैं speaks directly to the living entity as soon as we are purified by devotional service. वो तुरंत जीवात्मा से बात करना शुरू करते हैं जैसे कोई स्वयं को शुद्ध बनाता है भक्ति में सेवा करके Krishna says, I will give you intelligence how to come to me. कृष्ण बताते हैं मैं आपको बुद्धि दूंगा कैसे आप मुझ तक पहुंच So सकते हैं Prabhupada says we have to become qualified to talk with the Supreme Person. तो प्रभुपाद बताते हैं हमें योग्यवान बनना होगा कि हम परम व्यक्ति के साथ बात कर सकें And then he will give us advice. और फिर वो हमें परामर्श देंगे So if all the intelligence and faith comes from Krishna and we're not conscious of Krishna, we don't have relationship with Krishna, we're not depending on Krishna, then how do you know who's guru, who's not the guru? तो सारी बुद्धि सारा ज्ञान सारा श्रद्धा कृष्णा से आता है और अगर हम उसके प्रति चेतन नहीं है हम उसके ऊपर निर्भर होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं उनसे गंभीरता से संबंध बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो कैसे हमें पता चलेगा कौन है क्या है गुरु So that a Tao Shraddha must be there. तो ये अदाऊ श्रद्धा अवश्य होना चाहिए If Prabhupada says we have to become qualified to talk with the Supreme Person, he will give us advice. अब प्रभुपाद कहते हैं हमें योग्यवान बनना होगा परम व्यक्ति के साथ बात करने के लिए और फिर He's वो हमें giving सलाह us देंगे advice. और वो हमें सलाह देंगे He's ready to give us advice from within and from without. और वो तैयार है हमें सलाह देने के लिए भीतर से और बाहर से From within as the super soul, भीतर से परमात्मा के and रूप from में without as the spiritual और master. बाहर से गुरु के रूप में Both things are required. दोनों चीजों की जरूरत है Guru and Krishna's mercy. गुरु और कृष्ण की कृपा If we are sincere, अगर हम एक निष्ठ if we actually want Krishna, अगर हम असल में कृष्ण को चाहते then हैं Krishna is within your heart तो कृष्ण आपके हृदय में and है he will help you और वो आपकी मदद in करेंगे meeting bona fide spiritual master, Krishna's representative. प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि से मिलने में So it's amazing how many quotes and instructions are there like तो that. ये बहुत ही अद्भुत बात है इतने सारे निर्देश इतने सारे प्रभुपाद के कथन है And इस how बात को critical this information is to understand how to understand and accept the Guru. और ये कितनी महत्वपूर्ण बात है समझने की जरूरत है कि कैसे आप पता लगा पाएंगे कौन है So if we don't explain the process and the understanding of Guru Tattva, then what is the meaning of telling someone, oh, you need a guru? You have to go select some guru. अगर हम उनको बताएंगे नहीं और प्रक्रिया गुरु तत्व के बारे में और कैसे हम किसी को कह सकते हैं कि आप जाइए किसी को गुरु को चुनिए Actually serious, factually serious. असल में गंभीर तत्व में गंभीर That's the question. ये प्रश्न That's what I said. That's the problem. इसलिए कहते हैं ये है समस्या प्रभुपाद कहते हैं So if we can't answer that problem, तो अगर हम उस समस्या का talking समाधान नहीं कर about पा who's रहे the guru, is he my guru, is she my guru, or he my guru, right now it's she my guru. तो फिर सवाल उठाना क्या वो मेरे गुरु हैं क्या वो मेरी गुरु हैं इस तरह से बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है This is a wokeism. अब जो है ये The नया woke. बात शुरू है वो भी गुरु है Progressiveness.
अब प्रगति हो रही है, Progression उन्नति हो रही है, to where? किधर? To hell. नरक की तरफ प्रगति हो रही है। Progressive. प्रगति, Yeah, it's progressive. हाँ प्रगति हो रही They है। should call it digressive. इसको जो है पतन कहना चाहिए, Degrading. पतन हो रहा है। That which is perfect, it doesn't need any change. जो पूर्ण है उसमें कोई परिवर्तन करने की It जरूरत doesn't नहीं, need any interpretation. उसमें कुछ तोड़ मरोड़ Nothing to करने की, manufacture, nothing to concoct, कुछ भी बनावट करने की जरूरत नहीं, कुछ मनगढ़ंत चीजें डालने की जरूरत नहीं, nothing to make up or imagine. कुछ बनाने की, कुछ कल्पना करने की जरूरत नहीं है। So I'm quoting authority. तो मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ, So that's a good sign, तो ये एक अच्छा संकेत है, isn't it? ऐसा है नहीं? So if someone doesn't tell you and teach you to the point that you realize what is Guru Tattva, then you're getting cheated. तो अगर आपको कोई बताएगा नहीं, सिखाएगा नहीं इस बात तक पहुंचने के लिए कि गुरु तत्व क्या है, तो आप ठगे जाएंगे। Because then you have no means in understanding the process of how to make this type of understanding or connection. क्योंकि आपको वो माध्यम नहीं पता है कैसे आप इस तरह के समझ या इस तरह का संबंध कैसे पा सकते हैं गुरु के बीच में। So I have a very simple question. तो मेरे पास एक बहुत सरल प्रश्न है, Shouldn't the guru, who's claiming to be the guru, shouldn't he know what is Guru Tattva? कि जो गुरु जो खुद को गुरु होने का दावा कर रहे हैं, उन्हें कम से कम गुरु तत्व तो मालूम होना चाहिए। Is that not a basic first requirement of the guru? Shouldn't he know Guru Tattva? क्या सबसे मूलभूत जानकारी नहीं होनी चाहिए गुरु के पास, कम से कम गुरु तत्व का ज्ञान तो उसको होना चाहिए। You know, someone's a cook, right? Says a gourmet cook, or okay, you know, can you boil some rice at least? कोई अगर कहीं बहुत बड़ा रसोइया है, तो कहेंगे कि आप थोड़ा चावल उबाल सकते हैं। You know, boil some rice. Let me show me you can make some rice. चलिए मुझे चावल बना कर दिखाई कि आप चावल बना It's like सकते a हैं। basic. ये सबसे मूलभूत चीज है। I'm gonna make this and that, right? It's all like, wow, sounds fantastic. मैं ये चीज बना सकता हूँ, ऐसा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत लग रहा है। Some question? कोई प्रश्न? Srivas had that look on his face. श्रीवास के चेहरे He's got a पर question. दिखाई दे रहा है कि उनके पास कोई प्रश्न He है। always acts like someone's writing in, but it's actually his question. ऐसा वो दिखाते हैं कि वहाँ कोई लिख रहा है प्रश्न, असल में उनका ही प्रश्न होता है, बस कंप्यूटर में देखने का नाटक करते हैं। It's like his own doubt and question, but he's like, well, somebody has this question. ये खुद का ही प्रश्न संदेह होता है, लेकिन वो कंप्यूटर की तरह से कहते हैं वो कोई प्रश्न पूछ रहा है, किसी का संदेह है। Just asking for a friend. मैं अपने एक दोस्त के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। Isn't that the way they say it? I'm just asking for a friend. ऐसा कहते हैं वो लोग कि मैं अपने मित्र के लिए एक सवाल पूछ So रहा हूँ। who's your friend? तो कौन है आपका दोस्त वहाँ? So one devotee is asking one question. Oh, Srivas, you're a little uptight about that. श्रीवास गुस्सा आ रहा है। I was just joking with you a little bit. मैं भगवान से मजाक कर रहा I था। think I hit a raw nerve there or something. ऐसा लगा मैंने गलत नस दबा दी उनकी। I felt like a dentist. Sometimes I hit the wrong nerve. जैसे कोई डेंटिस्ट होता है वो गलत जगह मार Got a देता है, little jolt out of it. थोड़ा हिल जाता है वो। That means I'm heading in right direction. इसका मतलब सही रास्ते में जा रहे हैं। I'm sorry. I can't help myself. मैं स्वयं को रोक नहीं पाता कई बार। So what's the question? तो क्या सवाल है? So he's asking, is this Maharaj ISKCON? Like you? Huh? Like he's asking, are you ISKCON? Of course I'm his guy. तो प्रश्न पूछा जा रहा है What a stupid question. क्या ये महाराज इस्कॉन में है? I just spent 3 hours quoting Srila Prabhupada, मैं 3 घंटे से शिला who's the प्रभुपाद की बात founder बता रहा हूँ, acharya of ISKCON, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। and the only thing you can come up with is, am I ISKCON? और आज आखिरी सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये इस्कॉन में है या नहीं। That's a foolish question, क्या मूर्ख वाला सवाल है ये? isn't it? ऐसा है या नहीं? What is ISKCON? ये इस्कॉन का मतलब क्या है? One who follows the teachings and instructions of the founder acharya, isn't it? जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के निर्देश को पालन कर रहा है और उनको बता रहा है। So did I not show you my faith and my realization in Srila Prabhupada's teachings and instructions? Was that not proven to you? क्या मैंने अपनी समझ या अपना श्रद्धा श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं में उनके निर्देशों में आपके सामने साबित नहीं किया? I hope that answers their question. मुझे उम्मीद है इनके प्रश्न का उत्तर हो गया है। What a stupid question. क्या मूर्ख वाला बेवकूफी वाला सवाल है ये?
Yeah, give me another stupid question. और एक बेवकूफ़ी वाला सवाल लीजिए मुझे। This person will never ask another question again, you know? अभी आदमी दोबारा कोई सवाल नहीं पूछेगा कभी। Hey, ask a stupid question, get a perfect answer. पूछा है बेवकूफ़ी वाला सवाल। Stupid questions, perfect answer. नई चीज़ आई, बेवकूफ़ी वाला सवाल और आदर्श उत्तर। As you surrender to me, I reward you accordingly. जैसे आप मुझे शरणागत करेंगे वैसे आपको फल मिलेगा। Yeah. So the second question is, do you think that ISKCON is full of cheating gurus? What? Do I think what? That ISKCON is full of cheating gurus? Absolutely. 100%. No doubt about it. वो पूछ रहे हैं क्या ISKCON में ठग गुरु उपलब्ध है? तो गुरुदेव बता रहे हैं हाँ बिल्कुल उपलब्ध है। Ask an कोई honest शक ही question. नहीं। Can an honest answer? ईमानदारी से सवाल पूछा, ईमानदारी से This is उत्तर दे रहा हूँ। fantastic. ये इतनी अद्भुत बात है। Right? If Prabhupada says most people aren't serious, और प्रभुपाद कह रहे हैं ज्यादातर लोग गंभीर नहीं हैं and hardly anyone wants to go back to Godhead, और मुश्किल से कोई भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं। that means there needs to be more cheating gurus, यानी कि isn't it? ज्यादा ठग गुरु के होने की जरूरत है। It's very rare to find sincere, serious people. बहुत ही मुश्किल है गंभीर एकनिष्ठ लोगों को ढूंढना। So, what do you think? There's like a pure via medium like on every corner? आपको क्या लगता है कि कृष्णा के शुद्ध माध्यम हर कोने में मिल जाते हैं? I give this example of like the cell towers, right? So you have a cell tower, and it can handle say like 100,000 phones. तो जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल का टावर है और वो 1,00,000 फोन को संभाल सकता है। Right? And then in that area, because it's a new area, right? There's only 20,000 people staying there. और कोई नया जगह है जहाँ पे केवल 20,000 लोग ही रहते हैं उस So जगह। it's well within the ability of that one tower, right? Because there's only 20,000, but it can take up to 100,000. तो उस जगह पे अगर वो टावर लगाएगा जो 1,00,000 संभाल सकता है और वो वहाँ पे 25-20,000 उपलब्ध है तो वो आसानी से उसको झेल पाएगा। It's based on the need and the requirement, right? तो वहाँ क्या जरूरत है उसके आधार पे चीजें बनाई गई हैं। So are you going to start like building like towers in the town? तो क्या आप वहाँ पे उस शहर में और भी टावर खड़ा करने लगेंगे? They're like all over the place? मतलब सब जगह उसके टावर ही खड़ा कर देंगे जब उतने जगह उतनी उपलब्धि नहीं। What would be the need? उतनी जरूरत ही क्या है लगाने की? And then pure devotee comes and you have no respect for him. और जब शुद्ध भक्त आते हैं और हमारा You पास कोई cannot सम्मान नहीं recognize him. हम शुद्ध भक्त को पहचान नहीं पा रहे हैं You cannot humble yourself before him. और वो स्वयं को उनके You सामने cannot विनम्र नहीं learn बना पा रहे anything हैं। from हम him. उनसे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं And that's the gurus, और वो गुरु ही हैं, so-called gurus. वो नाम मात्र के गुरु। So these people don't even recognize who's a Vaishnava, how to behave to a pure Vaishnava, and they're guru? और ये They're लोग demon. जो है वैष्णव को न तो पहचान पा रहे हैं कैसे वैष्णव का सही तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और ये लोग गुरु हैं, गुरु बने हुए हैं, गुरु नहीं है, असुर हैं, Kali Chena. कली चेला है वो, Yeah, that's cheating guru. वो है ठग गुरु। Yeah, there's plenty of them. और बहुत सारे उपलब्ध हैं, Be careful. सावधान हो जाइए। I remember someone asked Srila Govinda Swami in Australia this question. मुझे याद है श्री गौर गोविंद साहब महाराज को ऑस्ट्रेलिया में किसी ने ये सवाल पूछा And Maharaj basically said, what kind of guru do you want? और महाराज ने उनको सवाल पूछा आप किस तरह का Do गुरु you want चाहते the हैं? guru sent by Krishna? आप कृष्णा के द्वारा भेजा हुआ Or गुरु you चाहते want the हैं guru sent by Maya? या माया के द्वारा भेजा हुआ गुरु चाहते हैं? You get what you deserve. आपको वो मिलेगा जिसके आप लायक हैं। That means it's available. इसका मतलब वो उपलब्ध है। Bridge preaching. अब जो है ब्रिज प्रीचिंग करना होगा, That's cheating. ये है ठगी। Yes. Wow, this is getting interesting now, huh? अब बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। I was They wish they could throw me out of ISKCON. वो सोचते हैं आशा होगा कि हम इसको बाहर ISKCON से बाहर निकाल पाएं। And they keep saying I'm not ISKCON. और वो कहते रहते हैं कि ये ISKCON से नहीं है। But Srila Prabhupada keeps telling if you're preaching boldly
my teachings and instructions, then you're in ISKCON. और श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर आप पूरी हिम्मत से मेरी शिक्षाओं का मेरे निर्देश का प्रचार कर रहे हैं तो आप ISKCON में हैं। So Prabhupada keeps telling me, you're in ISKCON and never leave ISKCON. और प्रभुपाद मुझे हमेशा कह रहे हैं कि तुम ISKCON में हो और ISKCON को कभी नहीं छोड़ना। So that's my faith and realization. तो ये मेरा श्रद्धा, ये मेरा अनुभव है। Who cares if some, how do I say it? Politicians. Huh? Politicians. Politicians? Who cares what anyone else says? तो किसको फर्क पड़ता है कोई भी क्या भी बातें कहे? Prabhupada told them, make a constitution for the institution. प्रभुपाद ने कहा हमारे संस्था के लिए कुछ संविधान बनाइए। Right? And now it's, practically 50 years later, there's no constitution. और 50 साल बीत गए, अभी तक एक कोई संविधान नहीं बना पाए। Right? Don't centralize power. शक्ति का केंद्रीकरण मत कीजिएगा। Decentralize everything. सारे केंद्रों को अलग-अलग जगह पे। Otherwise, you centralize, it will create the power politics. अगर सभी केंद्रों को एक जगह लेकर आ जाएंगे, If तो you शक्ति के create लिए the power राजनीति होगी। politics, it will choke and kill bhakti. अगर ये शक्ति की राजनीति करना शुरू हो जाएगी, तो भक्ति को दबा के उसको So मार दिया those जाएगा। people who are disregarding Prabhupada's instructions, are they ISKCON? तो जो लोग प्रभुपाद के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, क्या वो ISKCON है? Are they bona fide gurus? क्या वो प्रमाणिक गुरु है? How's that for an answer? ये कैसा रहा उत्तर के लिए? Anything else? कोई अन्य चीज? Yeah. In the Bhagavad Gita, where it's being explained about 4 different kinds of people approaching Krishna, Yeah. I was wondering, is sincerity based on circumstances? If what? Is or sincerity? Sincerity, is it based on circumstances? Is there what? Is sincerity, is it based on certain circumstances? These 4? Yeah, when you're getting burned in a fire and you call the fire department, right? You're really serious. You need help, right? तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवद गीता बताया 4 तरह के लोग कृष्ण के पास आते हैं, तो क्या ये एकनिष्ठता परिस्थिति के आधार पे निर्भर करती है कितने एकनिष्ठ हैं? तो गुरुदेव बता रहे Very हैं sincere. You're very serious. तो जब आग लगेगी तो आप आग से बचाने वाले लोगों को फोन करेंगे, I तो आप बहुत गंभीर want होंगे, to survive. एकनिष्ठ होंगे, I उनसे don't want to die. बुलाने के लिए कि मैं जीवित I रहना don't चाहता want to हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं दुख में नहीं रहना चाहता। And we have sincere, serious faith that only God, only Krishna can help us. और हमारा एकनिष्ठ गंभीर श्रद्धा है कि केवल भगवान कृष्ण हमें बचा पाएंगे, That's why we came. और इसीलिए हम यहाँ आए हैं आज। Does that help? क्या आपकी मदद की? So that sincerity could change over time. The sincerity? Yeah, because once we get a little relief, we stop crying, we stop praying. तो जब एक बार हमें थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाती है, तो हमारी एकनिष्ठता कम होने लगती है, हम रोना धीरे-धीरे कम कर देते हैं। That's why we always need a chakra. इसलिए हमें हमेशा Durvasa एक Muni. चक्र चाहिए, जो दुर्वासा मुनि की तरह है। That chakra is always chasing him. वो चक्र हमेशा उनके पीछे Because लगा he's रहता making था, aparad. क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। And as Prabhupada says, as the chakra is chasing Durvasa Muni, और वो बात बताते हैं, जैसे जैसे चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे जा रहा था, he's becoming very humble तो दुर्वासा मुनि विनम्र होने and लगे very और intelligent. बुद्धि उनके आने लगी। So when the chakra is chasing you, तो you जब become चक्र humbled out, जब चक्र आपके पीछे आएगा, and तो आप hopefully very intelligent. तो आप उम्मीद है विनम्र होंगे और बुद्धि भी आपकी वापस आएगी, Otherwise, you're just like, just relax. और ना केवल बस आराम से आप बैठे रहेंगे, Then we become complacent. और फिर हम ढीले ढाले हो जाएंगे। That's why Krishna always keeps his devotees in some kind of trouble. इसीलिए कृष्ण हमेशा अपने भक्तों को किसी तरह की कठिनाई में डालकर रखते हैं, Otherwise, we'll forget. वरना हम भूल जाते हैं। That's his mercy. ये उनकी कृपा है, In not letting us forget. वो हमें भूलने But नहीं if दे we रहे just keep भगवान। saying, no, I want to forget, then Krishna's going to make you forget. लेकिन आप बस कहते रहे मैं भूलना चाहता हूँ, मैं भूलना चाहता हूँ, तो कृष्ण आपको भुलवा देंगे। That's why it says, be careful what you desire. इसलिए कहते हैं कि सावधान रहिए कि आपके अंदर क्या Because इच्छा you है, might just get that. क्योंकि हो सकता है आपकी इच्छा पूरी हो जाए। When you look at my presentation, you hear my presentation, right? Do you consider that I'm ISKCON?
जब आप मेरी प्रस्तुति सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है, विचार कर पाते हैं क्या मैं इस्कॉन में हूँ? Do I appear to be ISKCON to you? क्या ऐसा लगता है कि मैं इस्कॉन में हूँ देख के? Or am I part of some hidden, you know, how do you say, like foreign infiltration? या फिर मैं कोई छुपा विदेशी किसी तरह का एक संस्था हूँ? Maybe I'm with the CIA. हो सकता है मैं CIA के साथ मिला हुआ हूँ। Right? I'm a spy. मैं एक जासूस हूँ। So if I act like I'm part of Vedic culture, तो मैं ऐसा दिखावा करूँगा कि मैं वैदिक संस्कृति and में I act like I know what is bhakti, और मैं ऐसा दिखावा करूँगा कि मुझे पता है भक्ति क्या होती है, then I could be a really good spy, right? तो मैं एक बहुत अच्छा जासूस बन सकता हूँ। Sometimes I say like this and then everyone's like, you know, this guy is a spy. कभी-कभी मैं ऐसा बोलता हूँ और आसपास के लोग सोचने लगे हैं ये व्यक्ति जासूस होगा जरूर। You're already speculating, right? So now I just added like another doubt and question, right? और पहले ये सब मनोधर्म करते रहते हैं और ऊपर से मैंने और इनके मन में और एक I wasn't संदेह even डाल दिया। thinking he's a spy, but you know what? He's probably could be a good spy, you know? मैंने कभी सोचा नहीं था ये जासूस है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद He's ये अच्छे mentioned जासूस हो about the सकते हैं। CIA and you know all these different programs, and maybe he went through a few of these programs. या ये अलग-अलग प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है खुद ही किसी प्रोग्राम से भाग रहे हैं। MK Ultra. MK Ultra। Where do you think I got my name? आपको क्या लगता है मेरा नाम कहाँ You से आया? guys are gonna need an ISKCON psychologist after this one. इसके बाद आप लोग को इस्कॉन के मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ेगा अपने मन का इलाज कराने के लिए। I don't want to make it too easy for you, you know what I mean? मैं नहीं चाहता आप लोगों के लिए चीजें इतनी I आसान gotta keep बनाऊं। you guessing. I gotta keep you praying, you know? मैं आप लोगों को चाहता हूँ लोग प्रार्थना करते रहे, मन में अंदाजा लगाते रहे। Yeah. So the question is, if Srila Prabhupada and also Srila Gaur Govinda Swami Maharaj, they are both guru, but they have left this world. So now, who to take shelter today? Who did they what? Now, whom should we take shelter today because they left? Why don't you pray to both of them and have Prabhupada and Srila Gaur Govinda Swami give you intelligence and faith where you should go, who you should listen to. If you have faith in Prabhupada and faith in Srila Gaur Govinda Swami, pray to them. You're physically departed, so how and where I should go, who should I hear from? तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर आप श्रीला प्रभुपाद और श्रीला गौर गोविंद महाराज आप प्रकट हो चुके हैं तो अभी वर्तमान में हमें किसे जाकर शरणागत करना चाहिए? गुरुदेव बता रहे हैं अगर आपको श्रद्धा है प्रभुपाद में श्रीला गौर गोविंद महाराज में तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए और आपको बुद्धि देंगे, श्रद्धा देंगे कि आपको किन के पास जाके शरणागत करना चाहिए। And if you're sincere and serious, और अगर आप एकनिष्ठ हैं, आप actually, असल factually, तत्व में, then they'll give you intelligence and faith how and what to do. तो वो आपको बुद्धि देंगे, श्रद्धा देंगे कैसे और क्या करना है। And then from our side we should think, okay, who has heard perfect knowledge from perfect source, who has understood it and presenting it as it is? That's also a good sign. और हमें हमारी तरफ से ये सुनिश्चित करना होगा किसने सही स्वरूप से श्रवण किया है और किसने उसका साक्षात्कार किया है और कौन उसको यथारूप में पूरे साक्षात्कार के साथ हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। So if you're quoting Guru Shastra with realization and with faith, that's a good sign. तो अगर कोई गुरु साधु शास्त्र पूरे साक्षात्कार के साथ श्रद्धा के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा है तो ये भी अच्छा संकेत है। And then what is the result? What is the effects of hearing? और आपके अंदर क्या प्रभाव पड़ा उनसे श्रवण करके? See for yourself. स्वयं अपने If अनुभव it's से देखिए। empowered, if it's really coming from Krishna and Krishna Parampara, the effects will also be there. तो अगर सशक्तिकरण है उसको कृष्ण परंपरा से तो उनके श्रवण में आपको कुछ शक्ति मिलेगी। Then that will also be undeniable. और वो भी एक अविश्वसनीय अनुभव होगा। And Prabhupada said you're judged by the results. और ऊपर बताते हैं आप फल के आधार पे निर्णय कर सकते हैं। Find out from previous acharyas who they ordered and instructed to become guru. पूर्व आचार्य से पता लगाइए कि उन्होंने किनको आदेश दिया है, अधिकार दिया है गुरु बनने का। Prabhupada said that's the easiest way. प्रभुपाद कहते हैं सबसे आसान तरीका है ये गुरु। So who did Prabhupada order and instruct to be guru? Who did Srila Gaur Govinda Swami order and instruct to become a guru? प्रभुपाद ने किसको आदेश दिया, अधिकार दिया गुरु बनने के लिए? श्रील गौर गोविंद महाराज ने किसको आदेश दिया, निर्देश दिया, अधिकार दिया गुरु बनने के लिए? That will also help you. तो ये भी आपकी मदद कर पाएगा। All of the above. इन सारों में से आपको पता लगा।
You think I'm doing this on my own authority? आप क्या सोचते हैं मैं खुद के ही मैंने अधिकार से ही करना शुरू कर दिया? You think I'm that crazy, that stupid, to try to do this on my own authority? क्या आप सोचते हैं मैं इतना पागल हूँ कि इतना बेवकूफ हूँ कि मैं खुद के अधिकार से ही मैंने ये करना शुरू कर दिया? You think I'm that insane? आपको लगता है मैं इतना पागल हूँ? That would be disaster for me. मेरे लिए बहुत बड़ी आपदा हो जाएगी और आप लोगों के लिए। So why would I put myself or you in such a situation? तो क्यों मैं अपने आप को या आप लोगों को ऐसी आपदा वाली स्थिति में डालूंगा? Think about it. सोचिए इसके बारे में थोड़ा। Would I take this risk, knowing what I know? तो If it's not ordered and authorized? अगर मैं जो मैं जानता हूँ उसके आधार पे क्या मैं ये खतरा उठाऊंगा? You think I'm that stupid? आपको लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ? Does it make sense? क्या इसका कोई अर्थ बनता है? Okay. ठीक है। Some very interesting questions tonight. बहुत दिलचस्प सवाल आए आज की रात। Anything else? कोई अन्य चीज? Wow, you're loaded up. आप लोग पूरे तैयार हैं आज? You guys are giving me life, man. आप लोग मुझे जीवन दे रहे हैं। I was waiting for some serious conversation. मैं कुछ गंभीर बातचीत के लिए इंतजार कर रहा I was था। getting bored, to be honest with you. मुझे बहुत बोर लग रहा था, ईमानदारी से कहूँ तो। Yeah. So he's saying, I am not sincere, but you are sincere. No, I'm not. How do you know I'm sincere? If you're not sincere, then how do you know I'm not sincere? That I'm sincere? तो वो पूछ रहे हैं कि मैं एकनिष्ठ नहीं हूँ, लेकिन आप एकनिष्ठ हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं अगर आप खुद एकनिष्ठ नहीं हैं, तो आप कैसे देख पा रहे हैं कि मैं एकनिष्ठ हूँ? That means you don't know what is sincere. इसका मतलब आपको पता ही नहीं एकनिष्ठता होती क्या है। And then if you're not sincere, then where will your intelligence and your faith come from? तो अगर आप एकनिष्ठ नहीं हैं, तो आपको बुद्धि और श्रद्धा आपकी कहाँ से आ रही है? क्या लगता है? So then an insane person whose intelligence, mind and senses are controlled by Maya, them calling you sane, it's not really a glorification. तो अगर कोई पागल व्यक्ति जिसका मन बुद्धि इंद्रिय माया के नियंत्रण है, बुद्धि माया से आ रही है, अगर वो मुझे कहेगा कि मैं एकनिष्ठ हूँ, तो ये कोई सराहनीय बात नहीं है। Right? If someone's insane and not sincere, and they say, yeah, but you're sane and you're sincere. अगर कोई अगर सही व्यक्ति नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है, अगर कोई वो आपको आकर कहे कि आप बहुत गंभीर हैं, एकनिष्ठ हैं, तो ये कोई सही गुणगान नहीं हो, महिमा। How do you know that? आपको कैसे पता चलेगा? How can you say? कैसे आप कह सकते हैं? How are you judging them? कैसे आप उसका फैसला ले रहे हैं? So what's the point? तो क्या बात है? So the point is that that is why I am asking, what is your judgment on this question? Who is a guru? I just answered the question. तो वो पूछ रहे हैं कि आपका क्या फैसला है कि गुरु कौन होते हैं? तो मैंने Pray to आपको दे Krishna. दिया। Pray to previous acharyas. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि कृष्णा से प्रार्थना कीजिए, गुरु आचार्य से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको कृपा बरसाएं आपके To ऊपर, give you intelligence and faith and understanding आपको बुद्धि दें, श्रद्धा दें और आपको समझाएं of where you should go कि आपको कहाँ जाना चाहिए for spiritual shelter and protection, आध्यात्मिक आश्रय और रक्षण लेने के लिए, and to be able to get the answers that you need to advance in your spiritual life. और ताकि आपको वो सारे उत्तर मिल सकें, ताकि आप जो आपकी जरूरत है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति That's the करने most के लिए। important thing. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। But the common sense thing is who's presenting Prabhupada's teachings as it is. लेकिन सबसे सामान्य ज्ञान ये है कि कौन प्रभुपाद की शिक्षाओं को यथारूप में प्रस्तुत कर पा रहा है, Not adding, not subtracting anything. ना कुछ जोड़े ना कुछ घटाए। Prabhupada said that is why I'm representing, that's the proof of my representing Parampara, is I'm not adding or subtracting anything. Perfect knowledge, perfect source, not adding or subtracting anything. No manufacturing, no concoction. प्रभुपाद कहते हैं यही प्रमाण है मेरे परंपरा होने का, ना तो मैं कुछ जोड़ रहा हूँ, ना मैं कुछ घटा रहा हूँ, ना कुछ मनगढ़ंत चीजें बचा ला रहा हूँ, ना मनोधर्म कर रहा हूँ, यथारूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। That's also a symptom, ये भी एक संकेत है, a sign. एक संकेत है। We're not saying in my opinion, according to my estimation. हम ये नहीं कह रहे कि मेरे विचार से, मेरी आकलन से,
This is what the Guru Sadhu Shastra said. कि गुरु साधु शास्त्र ने ये बात कही है And this is what it means. This is what they're saying that it means. और ये कह और जो गुरु साधु शास्त्र कह रहे हैं इसका ये अर्थ है And then when I tried to apply that, I got a great result. और जब मैंने उसको जीवन में लगाने का प्रयास किया मुझे बहुत ही अच्छा लाभ मिला And whoever else applied it, they got a great result. और जिसने भी इसको जीवन में लगाया उसको बहुत बड़ा लाभ मिला It's that simple. इतना सरल है Anything else? कोई अन्य बात Yeah? He's saying, tell I'm Maharaj. having to earn my prasadam tonight, huh? ऐसा लग रहा है आज मुझे अपने प्रसाद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी They're not just giving me, they're making me earn it, you know? आज मुझे इसको कमाना पड़ रहा है लग रहा है अपने प्रसाद को I like that. मुझे पसंद है ये बात Tell Maharaj, I would like a name. Like, who is it? Krishna Das. It's a perfect name. तो वो पूछ रहे हैं कि मुझे एक नाम Is दीजिए it वो गुरु man or lady? तो गुरुदेव बता रहे हैं वो Man? कृष्ण दास Yeah, Krishna Das, that's your name. कृष्ण दास ये है आपका नाम You're the Das of Krishna. आप कृष्णा के दास हैं Now we have to become real Das. और अब हमें कृष्ण असल दास बनना है What else they want? I feel like Santa Claus, you know? इसको और कैसे ऐसा लग रहा I'm है like- सेंटा क्लॉज है First you're checking if you're bad or good, right? पहले वो देख रहे हैं ये अच्छा है या बुरा है What else you want? I'm gonna feel like very generous mood tonight. You know? मुझे ऐसा आज में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आपको और क्या चाहिए बताइए Yeah? It's funny, first they're saying, how will we know? Next thing they're asking like 2 minutes later, you know, can you give me a spiritual name? Well, who convinced you so fast? That's my question. कुछ दिन पहले तो सवाल उठा दिए इसको हम कहे नहीं अभी तुरंत आश्वस्त हो गए पूछ रहे मुझे अपना आध्यात्मिक नाम दीजिए Like giving him like a homework assignment, you know, this is the work you have to do, you know? और मैं उनको होमवर्क दे रहा हूँ कुछ कार्य करने के लिए दे रहा हूँ And then by the time it gets to the internet, there's some delay. और जब इंटरनेट से उनके पास तक ये जानकारी पहुंच And गई it थोड़ी finally देर हो comes गई back, and it's like, oh, I need a spiritual name. जब तक ये वापस आता है मेरे पास I'm तो like, who कहते हैं convinced this person? कि मुझे आध्यात्मिक नाम चाहिए इन व्यक्ति को आश्वस्त कौन कर रहा है This is like miracles, you know, instant miracles. ऐसा लग रहा है कि तुरंत चमत्कार हो रहा है Magic. जादू Hocus pocus. Dominocus. Right? Wow, that's tantric, man. क्या तंत्र बोल He's रहे हैं quoting tantras. ये तंत्र बोल रहे हैं Tantras, mantras. तंत्र मंत्र Yantras. यंत्र Let's pray the Lord Nishringadev. Namaste. नरसिंह देव से प्रार्थना करनी होगी Many temples I got kicked out of. The last song I heard was तो जितने मंदिरों से मुझे बाहर निकाला गया लास्ट में जाते समय ये गाना सुनाया जाता सब लोग मंदिर में ये गाना गा रहे होते I always took it the Lord's blessing me and protecting me from such asat sangha. You know what I मैं mean? उसको मानता था That's how I took it. भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया ऐसे असत संग से मुझे बचाया है It's like, thank you, Krishna. धन्यवाद कृष्ण I tried to help them. They weren't interested. We pulled as many sincere sold out as possible. तो हमने उनको मदद करने का प्रयास किया और जितने एकनिष्ठ लोग थे हम उनको बाहर निकालने का प्रयास We किया went behind enemy lines. तो हम शत्रु के क्षेत्र में हमने घुस के प्रयास किया This is why they love you. इसीलिए वो मुझे सीधा प्रेम करते हैं This is why I'll never leave. और इसीलिए मैं कभी जाता नहीं Because I'm trying to help Prabhupada. क्योंकि मैं प्रभुपाद की मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ I'm trying to establish Srila Prabhupada's books and teachings. श्रील प्रभुपाद की किताबों और शिक्षाओं को मैं स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ Why don't they love me for that? क्यों मुझे वो प्रेम नहीं करते इस बात के लिए Because it's not convenient presentation for them. क्योंकि उनको ये सही प्रस्तुति नहीं लगती उनके लिए
And I welcome the let's come, sit, have a discussion in front of everybody. और मैं उनको कहता हूँ आपका स्वागत है, आइए मेरे साथ बैठिए और हम चर्चा करेंगे, सबके बीच में बैठ के एक साथ हम चर्चा करें. Let's show everybody. Let's have a discussion. You put your argument, I'll put my argument, and let's see who's convinced. तो चलिए सबके सामने हम ये करेंगे, सबको दिखाएंगे. आप अपनी बहस लेकर आइए, मैं अपनी बहस लेकर आऊँगा और लोग बैठ के वहाँ देखेंगे और स्वयं आश्वस्त होंगे. One time one Maharaja was saying, he's very dangerous. एक बार एक महाराज ने कहा ये बहुत खतरनाक है. And then I turned to one Maharaj next to me. और फिर मैं एक महाराज जो मेरे साथ बगल में बैठे थे, मैंने उनको कहा, Lokanath Maharaj. लोकनाथ महाराज मेरे बगल में बैठे थे. How this person is just allowed to make such like bold, big statements like that? Like, shouldn't he prove something? तो मैंने महाराज से कहा कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसी बात मेरे बारे में कहा कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ पूरे सभी के सामने, तो कम से कम उसको साबित करके दिखाया कि मैं कैसे खतरनाक हूँ. Then Maharaj was like, yeah, I was thinking the same thing. और फिर लोकनाथ महाराज ने भी कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ, वो साबित करके दिखाया. And then Lokanath Maharaj said, you know, maybe you could explain how he's dangerous. और फिर लोकनाथ महाराज को पूछा कि हो सकता है आप थोड़ा बताइए कि कैसे ये इतने खतरनाक है, थोड़ा बताइए लोगों को. You like my impersonation? क्या आपको पसंद आया कैसे मैं उनकी बात? It's pretty good, right? मैंने बहुत अच्छे तरीके से उनकी नकल की. And then the Maharaj was like, okay. और फिर वो महाराज जो थे जिन्होंने मेरे बारे में ऐसी बात की, उन्होंने कहा ठीक है मैं They बताऊंगा. took the microphone. उन्होंने जो है माइक्रोफोन लिया. And now he's going to tell why I'm so dangerous and deviant and bad and all of this thing. और उन्होंने सोचा कि मैं बताऊंगा कि वो क्यों ये इतने खतरनाक हैं और इतने भटके हुए हैं और ऐसी बातें करते हैं, बुरे हैं इतने. And everyone's like, wow, this is going to be interesting. और सब लोग सोचते थे वाह ये बहुत दिलचस्प होने वाला होगा. और फिर वो माइक्रोफोन लेके बोलने के लिए गए. And he was trying to say something. और फिर वो कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे. Krishna like was holding him by the throat. और ऐसा लग रहा है कृष्ण ने उनको गला दबा के रखा है. एक शब्द मुंह से नहीं निकाल पा रहे थे. He was like trying to say, वो कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे. and not one word will come out of him. और एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला. And what happened was the blood in his face, because he's a white guy, right? Sometimes you can see it was going like this. और धीरे-धीरे क्या So हुआ? he turned like orange, red. His face looked like his cloth, you know what I mean? तो क्योंकि वो उनका शरीर जो सफेद चमड़ी थी, गोरे व्यक्ति थे, तो उनके जो खून जो है उबलने लगा धीरे-धीरे और ऊपर उठते-उठते पूरे चेहरा उनका लाल हो गया. तो जैसे मेरे कपड़े लाल हैं, उनका चेहरा उस तरह लाल हो गया. Looked like tomato. टमाटर की तरह लगने लगा उनका चेहरा. And not the one word came out of his mouth. और उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला. And then before he had a stroke, और उसके पहले कि they made him sit down. उनको कोई दिल का दौरा पड़ता, They मैं took उनको the बैठने को कहा. microphone out of his hand. और माइक्रोफोन मैंने उनके हाथ से लिया. And I wanted to say, yeah, और मैंने कहा देखो इनको, there you go. देखो ये मुझे That's what दिखाने I'm वाला. talking about with these people. I've dropped the mic, man. और मैंने I माइक should have took the mic more. मुझे ऐसा माइक छीन के उनके हाथ से नीचे पटक देना चाहिए. देखिए कुछ भी नहीं बोल पाया. Enough said. हो गया, बहुत बोल लिया. That wouldn't have been nice though, right? मुझे लगता है उतना अच्छा नहीं They would have होता. saw it as like uncultured. देखने में लगता है कितना असभ्य आदमी है. So I had to contain myself. मैं अपने आप को मैंने रोक कर रखा ये सब करने से. And I was praying he didn't have a heart attack. और मैं प्रार्थना कर रहा था कि उसको दिल का दौरा ना पड़ जाए. Seriously. गंभीरता से. What else you want to know? और क्या जानना चाहते हैं आप? I was surprised you came back. मैं तो ये इस बात से आश्चर्य कि आप वापस आए. Uh-oh. He's gonna have to drop the mic moment now. आप ऐसा उनके भी सर में वो चुप्पी वाला Last time he said, you're not gonna like what I have to say. पहले वो पसंद नहीं कर रहे थे मैं क्या कह रहा था. That's not true, Maharaj. Huh? That's not true. Didn't you say that last night? क्या कल आपने ये नहीं It's कहा? not gonna be exactly like something like you're gonna like it or something. But No, actually, I spent the day looking for Prabhupada's quotes. And I was searching, I searched a lot of things. sure. I even have a whole file with it.
Let's compare notes, man. Let's compare notes. तो प्रभु कह रहे हैं मैंने ही प्रभुपाद के बहुत सारे वाक्य देखे हैं शास्त्रों में और मेरे पास भी मैंने तैयारी की है पूरी। तो गुरुदेव बता रहे चलिए आइए हम तुलना करते हैं मेरे नोट्स और आपके नोट्स के बीच। But since you asked what if I have other questions. You see, I prepared for you. मैंने आपके लिए तैयारी की है। That's good. But what happened was, I was a little bit like, I don't want to like hit you over the head. You know what I mean? लेकिन मैं आपको जो जरूरत से ज्यादा नहीं देना चाहता। So I needed to come like a natural little. तो मैं चाहता था कि बहुत अगर स्वाभाविक रूप से चीजें बाहर just talking about all this other thing, and then you were like, all right, let's hear it, man. और अब मैं जब अलग-अलग चीजों के बारे में बात करने लगा तो आप I had to come back. कि चलिए इसके बारे में हम सुनते हैं तो मैं इसलिए मैं वापस आना पड़ा मुझे शास्त्रों में। So after the last quote you mentioned, the question in my consciousness had changed. The what? The question Yeah. about the sincerity. I could see also the limit of my own sincerity. I could see where I am sincere and where it starts like to fade in. It's like, yeah, he's there, but so it's good. So you were measuring your own sincerity? That's good. तो प्रभु कह रहे हैं कि जैसे आपने आखिर जो वाक्य बताए थे प्रभुपाद उसमें से मैंने देखा कि मेरी चेतना के अंदर कितनी एक निष्ठता है वो धीरे धीरे गायब होने लगी। तो गुरुदेव ने बताया आप ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको आंकने का प्रयास करें अपनी एक निष्ठता को। We can always do more. और हम हमेशा कुछ बेहतर कर सकते हैं। Always do more. और हम हमेशा कुछ बेहतर करना चाहिए। Always feel like we're not up to the standard. हमें हमेशा ये महसूस करना चाहिए कि हम अभी तक सही स्तर पे नहीं पहुंच We पाए। should not rest on our laurels. You know, we should not be complacent. हमें ढीला ढाला नहीं पड़ना चाहिए कभी। Like I did enough. कि हाँ मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया। So the question that came, and each devotee is unique and have a different relationship with Krishna, different goal which he aims at. Different devotees have different goals. Different aspirations, let's say. Different devotees have different aspirations. That's for example, all the Goswamis, 6 Goswamis of Vrindavan, Sankalpa, Kalpadruma, Vilapa, Kusumanjali, all these books are the aspirations of the Goswamis for eternal service. And it's different according to Well, there's 4 rasas, Golok, Vrindavan. Yeah. So it's different. And my question was, how can we how can we engage in personal service to Srimati Radharani and to her lotus feet? We have to understand who is representative of Srimati Radharani, who's coming in Mahaprabhu's parampara. They are representative of Srimati Radharani. So if we don't surrender and serve there, then what is our connection to Srimati Radharani? तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं अलग अलग भक्तों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं उनके अलग अलग रसों के 4 तरह के रस हैं। तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कैसे हम जो है उस सेवा में व्यक्तिगत सेवा में श्रीमती राधा रानी के चरण कमल में सेवा में लग पाए। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि श्रीमती राधा रानी के प्रतिनिधि कौन है जो महाप्रभु की परंपरा में है। अगर आपने जाके उनसे शरणागत कर उनसे संबंध नहीं बनाया तो आप क्या सेवा करेंगे श्रीमती राधा रानी की। So Prabhupada said the Guru, he's coming from 2 ways, from Balaram, Nityananda Ram and Srimati Radharani. तो गुरुदेव बताया करते थे गुरुदेव 2 तरीके से आते हैं बलराम नित्यानंद राम और श्रीमती राधा रानी से। So what guru we need is based on what platform we're on. तो हमें किस तरह की गुरु की जरूरत है ये आधारित है हम किस स्तर पे अभी वर्तमान में मौजूद हैं। So the goal is to, in Mahaprabhu's line, is to serve Srimati Radharani, to serve Krishna. तो महाप्रभु के परंपरा में लक्ष्य जो है कैसे श्रीमती राधा रानी की सेवा की जाए कृष्ण But की to सेवा। be able to do that, we need to become qualified. लेकिन उसको करने के लिए हमें स्वयं योग्यवान बनना होगा। So all these other desires, gross and subtle desires, all these anarthas, that all has to come out. तो सारे स्थूल या सूक्ष्म अनर्थ और इच्छाएं इसे हमें बाहर निकालना होगा। So that purification and anartha nivritti, that is Balaram, Nityananda, Ram's work. तो वो शुद्धिकरण वो अनर्थ निवृत्ति बलराम नित्यानंद राम का कार्य है। And then once you become pure devotee, और जब एक बार आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे and we develop love for Krishna, और कृष्ण प्रेम पाएंगे then we can be handed over directly to Srimati Radharani and her devotees. तब हमें सीधे सीधे श्रीमती राधा रानी या उनके प्रिय भक्तों के हाथ में सौंप दिया जाएगा।
But first we must become liberated. लेकिन पहले मुक्त होना We होगा. must come to Brahmabhuta Prasannatma stage, which is the seed of Prem Bhakti is planted there. हमें ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा स्तर तक पहुंचना होगा जहाँ पे प्रेम भक्ति का बीज रोपा जाता है. So that means this other stage, the long, hard purification stage, that's where we're at. That means we're coming under directly Balaram, Nityananda, Ram. अगर हम इस तरह की लंबी प्रक्रिया में अनर्थ निवृत्ति की प्रक्रिया में मौजूद हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में, यानी कि हम नित्यानंद राम बलराम के अंतर्गत हैं. Because it says Balaram has a plow. क्योंकि कहते हैं बलराम के पास एक हल होता है. Right? So the heart is like a barren, like a stone. तो हृदय जो है बंजर पत्थर की तरह है. And it has all filthy things up there, rocks and branches and twigs and trash, right? और सारा कचड़ा, टहनियाँ, कचड़ा, कूड़ा, करकट सब पड़ा है यहाँ. No moisture, no softness, just a barren land. कोई नमी नहीं है, कोई कोमलता नहीं है, पूरी तरह बंजर जमीन है. That means all of that has to be lifted up, isn't यानी कि it? इन सारे को उठाकर फेंकना है. So that's why it says, Srila Gurudev explained that Balaram has a plow, and he's doing all of that work, all that heavy work to get ready to make that land fertile and ready to receive Bhakti Lata Bij. और इसलिए बताते हैं हमारे गुरुदेव कि बलराम वो भारी कार्य कर रहे हैं ये सारे इसको बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का, ताकि उस प्रेम भक्ति लता बीज को उस पे रोपा जा सके, तैयार हो सके वो जमीन. So we know what our goal is, तो हमें पता है हमारा लक्ष्य क्या है, but we also know what our work is to be able to be accepted into that, into that line and to be able to, go to Krishna. और लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है हमें क्या कार्य करना पड़ेगा कि हमें इस परंपरा में स्वीकार किया जाएगा और अंत में हम कृष्णा तक पहुंच पाएंगे इससे माध्यम. So we should always remember our goal. तो हमें हमेशा हमारा लक्ष्य ध्यान में रखना What is चाहिए. our ultimate destination point? हमारा अंतिम गंतव्य क्या है, And then what is the process to become qualified to get there? और क्या वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम योग्यवान बन पाएंगे वहां तक So पहुंच all of पाएंगे. that is to be understood in the right, how do you say, with complete understanding तो इन सारी चीजों को पूर्णता से समझने की जरूरत है, and in the right context. सही परिस्थिति के साथ. So the Guru will deal with us and preach to us according to time, place, circumstance, candidate. तो गुरु हमारे साथ बर्ताव करेंगे या हमें सिखाएंगे देश, काल, परिस्थिति और शिष्य क्या All है. the opportunity is, you could say, that's the same. और जो परिस्थिति जो है अलग अलग होगी. Mahaprabhu is coming to give 4 rasas in Golok Vrindavan. महाप्रभु जो है 4 रस जो गोलोक वृंदावन में मौजूद है वो देने के लिए आ रहे हैं. And the differences are, based on rasa, but that comes after liberated in Surup Siddhi stage. लेकिन अंतर ये सारे रसों में है, लेकिन ये आता है स्वरूप सिद्धि स्तर के बाद का है. So people say, as conditioned souls, still so many anarthas, so much contamination, what is my swarup? तो बद्ध जीव जिसके अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारा कलमश है, वो सवाल पूछते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है. And I say Krishna Das. और मैं कहता हूँ कृष्ण दास है आपका स्वरूप. Krishna Dasa. कृष्ण दासी. First become a servant. पहले एक सेवक बनिए. Because even all the way to Srimati Radharani, they all consider themselves servants. क्योंकि श्रीमती राधा रानी तक सभी खुद को दास मानते हैं. So become perfect servants of the servant of the servant. तो सही दास बनिए, दास के दास. Then with all of their mercy, then you can get darshan और उन सबकी कृपा से आपको दर्शन मिलेगा and do that divine seva. और फिर वो दिव्य सेवा मिलेगी. Does that help you? कि आपकी मदद हुई उससे. So it's a process. तो ये एक प्रक्रिया है. But because this is the hard part of it, we don't want to do the hard part. और क्योंकि ये कठिन भाग है और हम ये कठिन भाग को करना नहीं चाहते हैं. We want to take it cheaply, easily. सस्ते तरीके से, आसानी से इसको लेना चाहते So हैं. they don't have a guru. तो गुरु नहीं आपके पास, There's no sambandha jnana. कोई संबंध ज्ञान, There's no abhideya that Krishna is accepting. कोई अभिधेय नहीं है जो कृष्ण आपसे स्वीकार And कर all रहे of a हैं. sudden, you're doing prayojana or the mood of separation. और अचानक से आप प्रयोजन कर रहे हैं विरह के भाव में आके. That's cheating. ये है ठगी. Sorry to say. क्षमा कीजिएगा. And it's unpalatable truth. और ये कड़वा सत्य है. Because they want to feel that it's all right, क्योंकि वो ऐसा महसूस करना चाहते हैं ये सब सही but है, it's not all right. लेकिन ये सही नहीं.
It's a disturbance. ये एक परेशानी है। Maybe you're not disturbed, but the personalities who are supposed to be serving are disturbed. लेकिन हो सकता है आप परेशान ना हो, लेकिन जो व्यक्ति सेवा कर रहे हैं वो परेशान हो जाएंगे। All right? ठीक है, For now, अभी के लिए one step at a time. क्रमानुसार। And then last time, कोई आखिरी चीज? yeah, Hari-Krishna, you came back. अब वापस आ गए। Fantastic. बहुत अच्छी बात I है। usually think I scare everybody away. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबको डरा के भगा So when दिया। they come back, I'm like, wow, they came back. तो जब वापस आते मैं कहता हूँ वाह ये वापस आ गए। That's what I say. Wow, you came back. इसलिए मैं कहता हूँ वाह ये वापस आ गए। Even this character came back. कहते हैं कि ये वापस भी आ गया। I'm calling him a character now. मैं इनको एक कैरेक्टर कहता हूँ। That's so disrespectful, isn't it? कितने अपमान की बात है ना ये। I hope he doesn't think I was calling him a character. मुझे उम्मीद है वो ये ना सोचे कि मैं उनको एक कैरेक्टर कह रहा हूँ। I hope he's not too smart. काफी ज्यादा बुद्धिमान ना हो। I'm going to get nervous. मैं अब थोड़ा सहमने लगा हूँ। So how you can understand like actually level of sincerity of some person if he is praying to Krishna and saying, Krishna, please engage me in devotional service, but then some opportunity to serve is coming and he is avoiding that. He don't want actually to serve, but when some opportunity for sense gratification, he is all fired up. So how to actually understand like level of sincerity of someone? Yeah, I saw devotees were very morose, and then I got them married, and all of a sudden they're leaping in the kirtan, and, right? And I'm like, wow, he looked like he came to pure devotional service last night. Right? तो प्रभु का प्रश्न है कि कैसे कोई जो कई बार हम कैसे पता चले कौन एकनिष्ठ है या नहीं, क्या अस्तर है। कुछ लोग क्योंकि प्रार्थना करते हैं कृष्ण मुझे भगवान आपकी सेवा में लगाइए, लेकिन जब सेवा करने का मौका आता है तो वो सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते, और जैसे कोई इंद्रिय तृप्ति का मौका मिलता है तुरंत उत्साहित हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि जैसे हमारे कुछ भक्त हैं, वो कुछ दिन पहले पूरे उदास थे, जैसे ही हमने कहा उनकी शादी करवाने लगे हम, दूसरे दिन कीर्तन में पूरे उछल कर नाच रहे हो, जैसे कि उनको शुद्ध भक्ति मिल गई है। So we have like a little joke, like when someone all of a sudden becomes so enthusiastic after they get some sense gratification, right? तो हम कई बार थोड़ा मजाक करते हैं, looks like Brahma Bhuta Prasanna. किसी को जो थोड़ा इंद्रिय भोग करने का मौका मिल जाता है हमारे भक्तों को, फिर उसके बाद ऐसा लगता है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है, पूरे खुशी में रहते हैं। So if we are not sincerely surrendering for the pleasure of Guru Krishna, will not be able to purify and control our mind and senses. अगर हम एक निष्ठता से स्वयं को गुरु कृष्ण को शरणागत करके उनको सुखी करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। So you see by the result. तो आप अपने फलों के आधार पे निर्णय कर पाएंगे। Uncontrolled mind and senses means so much anxiety, so much disturbance, so much unhappiness. अनियंत्रित मन और इंद्रिय का मतलब बहुत सारा दुख, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चिंताएं आएंगी। So that's a very easy, quick way to know whether you're getting mercy from Guru Krishna. तो ये बहुत आसान और तेज सरल तरीका है देखने का कि आपको गुरु कृष्ण की कृपा मिल रही है या नहीं। And if we're not able to purify, control mind and senses, that means we're not getting mercy. Then what is the meaning of us thinking that we're sincere? और अगर हम अपने मन इंद्रिय को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं सेवा के माध्यम से, तो अगर हम स्वयं को मान रहे हैं बहुत एकनिष्ठ हैं, गंभीर हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। Then like who are we trying to convince? तो यानी कि हम किसको आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं? So Prabhupada said you judge by the results. तो बात कहते हैं आप फल के आधार पे निर्णय कर सकते हैं। So if your mind is purified and mind and senses are controlled and you're peaceful and you're happy, that can only happen
if you're pleasing and getting mercy from Guru Krishna, otherwise you cannot get that result. अगर आपके मन इंद्रिय नियंत्रित हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, आप सुखी हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, इसका मतलब आपको गुरु कृष्ण की कृपा मिल रही है. And if we're not getting that result, then what is the meaning of our sincerity? और अगर हमें ये सब लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे एक निष्ठता का क्या अर्थ है? Or our seriousness? या हमारी गंभीरता? If we surrender and then please Guru Krishna, and you see by the result that they must be happy and pleased with you, then you can think, okay, this is the direction I should go. तो अगर आप गुरु कृष्ण को शरणागत सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और लाभ देख रहे हैं, आपको सुख शांति का अनुभव हो पा रहा है, तब समझ पाएंगे कि गुरु कृष्ण आपसे सुख शांति मिल रही है और आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. Very practical. ये बहुत व्यवहारिक. Prabhupada said, if you do everything nicely, you'll be enthusiastic and you'll be happy. प्रभुपाद कहते हैं अगर आप सब कुछ अच्छे तरीके से करेंगे तो आप बहुत उत्साह में रहेंगे और बहुत सुखी रहेंगे. If we're morose और अगर हम उदास हैं and like zombies, और मुर्दे व्यक्ति की तरह हैं, right? It means tamagun. ऐसे हम अगर चल रहे हैं तो हम तमोगुण में हैं. Right? Sometimes I look out the window, I see devotees coming, I get scared because they look like zombies coming to the class. कभी मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ क्लास के समय कुछ भक्त आ रहे होते हैं अंदर. Then I have to like say like extra prayers. कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मुर्दे लोग क्लास में आने वाले हैं, तो फिर मैं और ज़्यादा प्रार्थना करने लगता हूँ. I start lifting weights. मैं पीछे वजन उठाना शुरू करता हूँ. Because I know it's going to be heavy lifting. क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है आज मुझे भारी कसरत करनी है. That's when I wish I had the Hari-katha stick, you know. इसलिए मैं सोचता हूँ काश मेरे पास हैरी पॉटर वाली छड़ी होती. Now you got the blessings. Okay, chill. चलो इसको आशीर्वाद दे दिया. चलो. Who else can I preach to? और किसको प्रचार करूँ मैं आज? Oh no. Should we try with him? क्या हम प्रयास करें इनके साथ? Did he sew the clouds together tonight? क्या आज उन्होंने सारे बादल जोड़ लिए एक साथ? I'm always hopeful for him, but he always is disappointing, you know. मैं हमेशा आशा करता हूँ इनसे बहुत सारी, लेकिन ये हमेशा मुझे निराश करते हैं. I feel like the father with the child, you know. It's like you know, come on, you know, you can walk, you know. वो पिता की तरह जैसे बच्चे को कहते हैं कि Just knocks his head off of the table. You know? कि मेरा बच्चा चलेगा और बच्चा टेबल से सर के बल गिर रहा है. You can make it tonight, you know. आज की रात चलेगा. फिर गिर जाता है. Maharaj, this is a question on the point of Mayavada. About what? Mayavad. I don't know about Mayapur. I don't like Mayapur. प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं. मेरा प्रश्न मायावाद से संबंधित है. They think they are. Mayavadis are the offenders. तुझे पता है मुझे मायावाद के बारे में पता नहीं है. मायावादी अपराधी हैं. Do you like Mayavadis? क्या आपको मायावादी पसंद है? I'd like to declare a war against Mayavad. He wants to declare war against Maharaja. Sure. कह रहे मैं मायावादी के खिलाफ जंग छेड़ना चाहता हूँ. Those Mayavadis better be scared. He's coming after them. मायावादी में इसे डर जाना Somebody चाहिए. better send a message out to the Mayavadis. You know, this guy is coming. He's right up the road. He's coming to declare war against these people. किसी को संदेश पहुंचाना चाहिए मायावादी को कि ये आ रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ने. So He goes in the midst of them. It's like going into like great white sharks, you know. ये उनके बीच जाएंगे ऐसा लगेगा जो है सफेद सार्क के बीच में कोई गए हैं. It's like a little fatty like seal, you know. And he's like declaring war against the great whites, you know. जैसे छोटा सा कोई मछली है और वो सार्क के खिलाफ युद्ध करने गया. I'm declaring war against you. And these guys are they're like, who wants to take him first? You know what I mean? What time did you have your last lunch, you know? तो ये मायावादी जंग लड़ने गए और वो सार्क की तरह हंस रहे हैं. तो आज किसने अपना लंच नहीं लिया है वो जाके declaring war against the great white sharks. कह रहे ये मछली है और कह रहे मैं सार्क के खिलाफ युद्ध लड़ने आया हूँ. They better be on guard. I'm just saying. कहते हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि मैं आया हूँ. I'm coming for them. मैं आ रहा हूँ उनके लिए. And after them, The
The killer whales. और उसके बाद जो और खूनी शार्क के पास जाएंगे. You know, killer whales, they bite, they kill the great white sharks. जो खूनी शार्क होते हैं वो जो बड़े शार्क जो सफेद शार्क होते हैं And they like cut out the liver of the great white shark. They specifically bite out the side of the great white shark. और ग्रेट व्हाइट शार्क जो होते हैं उनको बीच से वो जो उनका जो बीच का भाग होता है उसको वो खा लेते हैं. So someone asked Prabhupada, why are you always preaching about the Mayavadis and all these impersonalists? तो किसी ने प्रभुपाद से एक सवाल पूछा कि वो आप मायावादी के खिलाफ इतना प्रचार करते हैं. And Srila Prabhupada said, I'm preaching to you people. प्रभुपाद ने कहा मैं तुम लोगों को प्रचार कर रहा हूँ. You're the Mayavadis and impersonalists. तुम हो मायावादी और निराकारवादी. He's declaring war against himself. ये खुद के खिलाफ ही युद्ध छेड़ रहे हैं. I declare it boldly. I'm declaring war against my own stupid mind. मैं खुद के बेवकूफ मन के साथ युद्ध करने वाला हूँ. I'm firing shots in the air. मैं हवा में बंदूक चलाने वाला हूँ. It's going to be deadly. बहुत ही खूनी होगा वो. You feel better now that you've made that bold statement? आपको अच्छा लग रहा है कि आपने ये हिम्मत वाला वाक्य बोला? Every action starts with a thought. हर एक कार्य किसी विचार से शुरू होता है. With an idea. एक सोच से शुरू होता है. Every action starts with an idea. हर एक बड़ा काम किसी एक सोच से शुरू होता है. Be careful, Sanatan. सावधान रहे सनातन. He's looking for impersonalists and Mayavadis. ये मायावादी और निराकारवादियों को ढूंढ रहे हैं. Sometimes when the people go to shoot themselves, sometimes they miss and hit the people around them. कभी कोई लोग खुद को मारने के लिए गोली मारने जाते हैं तो चूक जाते हैं, अपने आसपास के लोगों को गोली चला देते हैं. Self-inflicted. खुद आसपास नुकसान पहुंचा देते हैं. Okay? Any last thing? कोई आखिरी चीज? Mataji, let's give the other kids a chance. दूसरे बच्चों को भी थोड़ा मौका दीजिए. I'm sorry. There is an explanation that Acharya, he cannot change anything from previous Acharya. So when Srila Prabhupada came to the Western country and he saw like people there, he kind of little bit like change according to place, circumstances and candidates, that you have to chant 16 rounds, not 64. So disciples of Srila Prabhupada, they can use that as an excuse that they also changing according to like place, circumstances and candidates, and that is why. Did Prabhupada order and instruct you to be an acharya? तो माता जी प्रश्न पूछ रही हैं कि पूर्व आचार्य हमेशा जो वर्तमान आचार्य पूर्व आचार्य के निर्देशों को उन्हीं का प्रचार करते हैं. तो जैसे श्रील प्रभुपाद देश में गए तो उन्होंने वहाँ की देश काल परिस्थिति के आधार पे कहा कि आपको 16 माला जप करनी चाहिए 64 माला के अलावा. तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि आपको आदेश दिया श्रील प्रभुपाद ने आचार्य बनने के लिए. So if Prabhupada didn't even order you to become an acharya, तो अगर प्रभुपाद ने आपको आचार्य बनने के लिए आदेश नहीं दिया है, what authority do you have to change anything? तो आपके पास कौन सा अधिकार है कुछ भी चीजों को बदलने का? That's the first thing. ये सबसे पहली बात. And the other thing is, you know, we cannot imitate Srila Prabhupada's position. और दूसरी चीज ये है कि श्रील प्रभुपाद के स्थान की हम नकल नहीं कर सकते. And Prabhupada said, if you can't do more than what I did, then at least do what I'm doing. और प्रभुपाद ने कहा अगर आप वो नहीं कर सकते जो मैंने किया तो बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम वो करने का प्रयास कीजिए जितना मैंने किया. But don't change anything. लेकिन कुछ भी बदलने का प्रयास मत करना. So specifically, Prabhupada said, don't change anything. तो विशेष करके प्रभुपाद ने कहा कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है. So the instruction is not there that just like I change certain things according to time, place, and circumstances, I'm giving you
authority and permission to change things according to time, place, circumstance, and canon. They never received instruction like that. तो प्रभुपाद ने कभी किसी को ये आदेश नहीं दिया कि जिस तरह मैंने देश काल समय परिस्थिति के आधार पे कुछ निर्देशों को बदला, मैं आपको भी आदेश देता हूँ कि आप देश काल समय परिस्थिति के आधार पे चीजों को बदल सकते हैं। प्रभुपाद ने ये निर्देश नहीं दिया कभी। So Prabhupada didn't order you to become, could be, he didn't order and instruct you to become an acharya. तो पहली चीज हो सकता है श्रील प्रभुपाद ने आपको आचार्य बनने के लिए आदेश या निर्देश नहीं दिया हो। And even if he did, और अगर हो सकता है उन्होंने दिया भी हो आचार्य बनने के लिए, he said don't change anything. उन्होंने दूसरी निर्देश ये भी दिया है कुछ बदलना मत। So either way, you shouldn't change anything. तो दोनों ही तरीके से आप बदल नहीं सकते हैं। So that argument is null and void. तो आपका बहस शून्य हो गया। Yeah. You see how Prabhupada's helping me? अब देखिए कैसे प्रभुपाद मेरी मदद कर रहे हैं। Because I'm not that smart. क्योंकि मैं इतना बुद्धिमान हूँ I'm नहीं, dependent. मैं निर्भर हो रहा हूँ। When I say that, Sanat's like, he's saying he's not that smart. And then he would go for 2 hours speculating on why did Maharaj say he's not that smart. जब मैं कहता हूँ कि मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ, तो सनातन मन मनोधर्म करने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इतना बुद्धिमान नहीं है। And if he's not that smart, then why am I accepting him? What does that say about me? तो अगर ये इतने बुद्धिमान नहीं है, तो मैं इनको स्वीकार क्यों करता हूँ? अब मेरे बारे में क्या कहेंगे? Doubting everything. आप ये सब कुछ संदेह करेंगे। So that's why I'm almost afraid to say anything. इसलिए मुझे डर लगता है कुछ भी बोलने में। Because you may take it in an opposite way. ये हो सकता है उसको उल्टे तरीके से स्वीकार करेंगे। So, your point last night, Maharaj, was that the guru becomes bona fide by the previous guru. Yeah, when guru instructs He you. becomes qualified. Yeah, He becomes qualified by the previous guru. yeah. I said it's different. Huh? I said differently. But it's a little different because if he's not qualified, then why would he be authorized? Anyway, my point was. No, but it's an important point. Yeah, but tell me. Because then I went to look on, because many times I heard Prabhupada saying that my disciples should become disciples. So Prabhupada is instructing. No, he's saying, I want that you become qualified. I want that all my disciples become pure devotees and preachers and gurus. But become qualified. तो प्रभुपाद ने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनके सारे Isn't that giving them the qualification, the capacity, the empowerment? No, They Prabhupada themselves- says, but first become qualified. You I see, mean, I have the quote because I was looking at that. I also look at that quote for There's very 35 years. Yeah, I know. So Prabhupada says, yes, when I instruct you to become guru, then you become guru. Right? But first thing is, you must become qualified. Otherwise, how you receive such order and instruction? But isn't Prabhupada giving him that same affirmation? Where did he say that you should become, this is my order and instruction to become a guru? Many times. It's Where? Show me one. Show me one. You find it, right? You just show me one place where Prabhupada orders and instructs someone to become a guru before he's qualified. तो प्रभु कह रहे हैं कि प्रभुपाद ने निर्देश दिए हैं कि उनके शिष्यों को वो चाहते हैं उनके शिष्य गुरु बने। प्रभुपाद तो गुरुदेव ने बताया, प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि पहले वो उन्होंने कहा आप पहले योग्यवान बनिए, उसके बाद आप गुरु बनिए, तब आप अधिकार पाएंगे गुरु बनने के लिए। तो प्रभुपाद ने ये बातें कही, ये कथन कहा है। प्रभुपाद ने कभी ये कथन नहीं कहा कि मैं आपको आदेश देता हूँ गुरु बनने के लिए। अगर आप वो कैसा कहीं प्रभुपाद ने दिया है तो आप मुझे वो निकाल कर दिखाइए। प्रभुपाद तो उनको निकाल के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। So this is Hyderabad, this December 10 of 76. Okay, wait a second. It's audio, transcript? Transcript. Transcript. Prabhupada's giving a class? Yeah. Yeah. And when is it?
10 of December 76, Hyderabad. 76? 10 दिसंबर 1976 हैदराबाद में ये प्रवचन दिया गया है। December 10. December? Okay. December? Yes. In 76? In Hyderabad? Yeah. December 3rd? 10. 10. Farm management? Does it say room conversation farm management? December 10th, Hyderabad, 1976? Or is it a Bhagavad Gita class? There's only one on December 10th. Oh, there's also Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur disappearance day? Yes, that's it. This one? Yes, that's it. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरुभाव दिवस के दिन ये प्रवचन दिया था प्रभुपाद ने। And then where is it? और कहाँ दिया था? So the section that I cut off. He's saying that the section that I found. Yeah. Opening the is in the real in the principle. It is not that you have become a student and now you will remain student. No, one day you shall become also guru and make more students, more. That is Chaitanya Mahaprabhu's mission. Not that perpetually, yes, one should remain perpetually a student, but he has to act as guru. That is mission of Chaitanya Mahaprabhu. It is not that because I am acting as guru, I am not longer student. It's the what? That is not because I'm acting as a guru that I am no longer a student. But it's two separate points. So the first part of it is that one day, You should. my hope, my expectation, my desire is that you will become a guru, a qualified guru. प्रभु ने उसमें से पढ़ा कि प्रभुपाद उस प्रवचन में कह रहे हैं अपने शिष्यों से, ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बस शिष्य बने रहेंगे। ऐसा होगा भविष्य में आप लोग को गुरु बनना होगा और फिर आप लोग शिष्य बनाएंगे। और इस तरह से ये आगे ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का आंदोलन है। और ऐसा नहीं है कि आप शिष्य हैं और आप गुरु बन जाएंगे। गुरु जो है वो भी हमेशा शिष्य ही रहता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ दो अलग अलग बातें हैं। तो प्रभुपाद वो अपने शिष्यों से कह रहे हैं, मैं आपसे आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद है ऐसी कि भविष्य में आप लोग योग्यवान होकर गुरु बन पाएंगे, शिष्य नहीं रहेंगे। So one day in the future, किसी एक दिन भविष्य में। In another lecture. but this point is important because you're saying that that's an instruction, and I'm saying a hope. that's a hope and a desire and a encouragement that you will take it seriously and you'll become qualified in such a way that you can handle that. तो यहाँ दो अलग अलग बातें ये हो रही है। आप कह रहे हैं कि यहाँ निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ यहाँ प्रभुपाद उनसे एक आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि धीरे धीरे आप इस मेरी बातों को गंभीरता से लीजिएगा और एक दिन स्वयं को योग्यवान बनाइएगा कि ताकि आप भी उन परिस्थिति को संभाल सकें भविष्य में। And then the other question is, what type of guru? और दूसरा प्रश्न ये है, किस तरह के गुरु? Right? What if you're a sannyasi and you're a preacher? क्या होगा अगर आप एक सन्यासी हैं और एक प्रचारक हैं? type of shiksha guru. तो वो भी एक तरह के शिक्षा गुरु हैं। Right? So that's also guru. तो वो भी एक गुरु है। Right? So you can't say that someone who's a sannyasi and a preacher and acting like a shiksha guru, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कोई सन्यासी है और प्रचार कर रहे हैं और शिक्षा गुरु के रूप में कार्य कर that रहे is हैं, not acting as a guru. तो वो गुरु के रूप में So कार्य what नहीं कर रहे kind of guru? हैं। तो किस तरह के गुरु की प्रभुपाद This बात कर रहे doesn't necessarily mean bona fide diksha guru in parampara. हैं? इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि प्रामाणिक दीक्षा गुरु परंपरा में बनने के लिए, ऐसा प्रभुपाद ने नहीं कहा। It was just to counteract the point that you mentioned that Prabhupada, that there needs to be an instruction. And in these quotes, Prabhupada is giving that recognition, a hope, but to those who take Yeah, it but I serious. just gave you last night
all of Prabhupada's quotes where Prabhupada said one must receive an order and instruction by the previous acharya. So that's much clearer requirement to become bona fide Diksha Guru and Parampara versus an encouraging statement that I hope all of you can become qualified, because then we can spread Krishna consciousness much more effectively. Prabhupada repeated it again and again and again, that hope, that wish, that directive that he was giving to his students. He was repeating it. But then how do you, okay, then if that's your understanding, how do you reconcile all of Prabhupada's quotes that one must receive an order and instruction directly from the previous acharya in order to become a guru? So where is the order and the instruction there? That's a hope that someday you'll become qualified to take that position. तो हमने दो अलग अलग कथन बताए। मैंने बताया कि आपको प्रमाणिक गुरु से अधिकार आदेश पाना होगा व्यक्तिगत रूप से, कि वो आपको प्रमाणिक गुरु बनने का आदेश मिल रहा है ये, और आप जो बता रहे हैं कि उनको उत्साहन दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, आशा की जा रही है कि भविष्य में आप लोग एक योग्यवान बन के कृष्ण भावनामृत का प्रचार के बहुत तेजी से पूरे विश्व में कर पाएगा अगर बहुत सारे प्रचारक उपलब्ध होंगे। तो प्रभुपाद यहाँ उनसे उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ निश्चित रूप से बता रहा हूँ, प्रभुपाद ने कहा है आदेश मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। आप दोनों वाक्यों को एक साथ कैसे जोड़ोगे बताएंगे, मुझे बताइए। And if it takes many preachers to spread the movement worldwide, अगर बहुत सारे प्रचारकों की जरूरत है पूरे विश्व में इसका प्रचार करने के लिए, then they're also acting like a guru. तो वो भी एक गुरु के तरह कार्य कर रहे हैं। That's why I said they're acting like a shiksha guru. और इसलिए मैंने ये कहा कि वो शिक्षा गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं। Right, just like when Prabhupada was there, many sannyasis were there traveling and preaching and acting in many of the temples. They were like the guru, shiksha guru of all of the devotees that were living in the temple. Right? जब प्रभुपाद भी थे वो प्रचार कर रहे थे, उनके समय बहुत सारे सन्यासी थे जो अलग अलग मंदिरों में जाकर वो उस मंदिरों में व्यवहारिक रूप से उनके गुरु, शिक्षा गुरु के रूप में उनको मार्गदर्शन कर रहे थे। But when it came time to get initiated, they were brought to Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada initiated them. It's because he was the bona fide Diksha Guru in Parampara. लेकिन जब दीक्षा देने की बात आती थी तो शिष्यों को प्रभुपाद के पास लेकर जाते थे, क्योंकि वही प्रमाणिक दीक्षा गुरु हैं परंपरा में, उनके अलावा कोई। Otherwise, there's like one and two name in the Parampara, and then when it comes to disciples of Prabhupada, there's going to be like what, 1,000 names? वरना जब 10,000 names. वरना परंपरा का जब नाम देखेंगे वहाँ पे एक नाम, दो नाम ऐसे ज़्यादा दिखेगा, और प्रभुपाद के बाद अब इस्कॉन आएंगे तो क्या वहाँ 10,000 नाम या 1,000 नाम ऐसे मिलेंगे? So there's a distinction between the preacher acting like a shiksha guru and the representative in the parampara. तो एक अंतर है कि एक प्रचारक के रूप में कृष्ण भावनामृत में शिक्षा गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं, और दूसरा एक दीक्षा गुरु के रूप में प्रमाणिक परंपरा में प्रमाणिक गुरु के रूप में। So there's a very limited or small amount of Prabhupada's disciples who were personally instructed to take that role, because there Who was was ordered and instructed is the question. तो आपका प्रश्न अब यही है कि किनको आदेश मिला या किनको निर्देश मिला, अधिकार मिला प्रभुपाद से। that is a small amount of them. You see, when Prabhupada left, all of these original gurus, was it 11 of them? Yes. Right? All of them were saying that Prabhupada ordered and instructed us to become gurus. तो जब प्रभुपाद ने ये शरीर छोड़ा तो उनके बाद जो 11 सन्यासी मौजूद थे, गुरु थे, उन्होंने ये कहा कि प्रभुपाद ने हमें आदेश दिया है, अधिकार दिया है गुरु बनने के लिए। Because they understood you must be ordered and instructed to become a guru. क्योंकि उनको पता था कि आपको आदेश और अधिकार मिला होना चाहिए गुरु से, गुरु बनने के लिए। But then, there was discussion with different, I don't want to mention names, different members of that group of gurus, and then it came out that Prabhupada never ordered and instructed them to become Diksha gurus. लेकिन उन छोटे समूह के बीच जब चर्चा हुई तो चर्चा में ये बात उनके सामने आई कि असल में उनमें से किसी को भी आदेश अधिकार नहीं मिला था गुरु बनने के लिए। There's certain devotees were. I remember there was this one class. Unfortunately, I cannot remember who. See, here's my point. Yeah. Because what happens is when I make this statement, everyone starts asking me about this Maharaj and that Maharaj, right? So
All I'm saying is, this is the instruction and this is the principle. That's what I can tell you. Now, if somebody wants to say, Prabhupada ordered and instructed me, anyone can say whatever they want. And the other point was about the dreams. Yeah, you wanted to find out about that, right? No, I was just remembering two episodes. One is a very famous story. That what? Which is a famous episode from Lokanath Swami, the guru of Narottam Das Thakur. Yeah. Who was instructed by Lord Chaitanya twice to give Diksha to Narottam Das Thakur in a dream. In a dream? Yes. So do you think he didn't get a confirmation from bona fide Vaishnava guru, even if he had a dream? Do you think that he didn't get confirmation of that? Even if he was inspired in a dream? So he still had to get confirmation, just like Krishnadas Kaviraj Goswami, right? He was directly told, also by Lord Nityananda. But he went to the temple and he sought Vaishnavas and the deities' confirmation to make sure that this is really what he wanted. So even if you got inspiration in a dream, it still has to be confirmed because it's not a small thing, right? That's one way. And then the other thing is that we cannot try to say we're like, Lokanath Swami or, some eternal associate of the Lord. We cannot imitate that, right? तो गुरुदेव, Did you get that? तो गुरुदेव ने सबसे पहले ये बात बताई, जब मैं इन सिद्धांतों की बात करना शुरू करता हूँ तो लोग मुझसे सवाल पूछना शुरू करते हैं इस महाराज उस महाराज के बारे में। मैं कहता हूँ देखिए, प्रभुपाद ने ये सिद्धांत दिए हैं, ये निर्देश दिए हैं, तो जो कोई भी कहना चाहे मुझे प्रभुपाद ने आदेश दिए निर्देश दिए वो कह सकते हैं, लेकिन ये प्रभुपाद के निर्देश है। और दूसरी बात जो प्रभु ने बताई कि लोकनाथ गोस्वामी को सपने में आए थे कि नरोत्तम दास ठाकुर को उनको दीक्षा देनी चाहिए, तो अपने सपने की बात को मना किया था। तो गुरुदेव ने बताया कि अवश्य उन्होंने सपना देखा होगा, लेकिन उसके बाद वो पुष्टिकरण करने के लिए भी दूसरे वैष्णवों के पास उसका पुष्टिकरण करने के लिए जाते हैं, केवल सपने को ही वो सब कुछ, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर फैसला है। और उसके बाद रघुनाथ दास कविराज गोस्वामी को भी उनको जब सपने आए थे, नित्यानंद प्रभु ने उनको जब सपने में कहा था, तो उसके बाद वो विग्रह के पास गए थे, वैष्णवों के पास गए थे, उनसे प्रार्थना की थी कि और उनको पुष्टिकरण करे, उनको जो सपना आया है वो सत्य है या नहीं। तो और उसके साथ ही हम ऐसे लोकनाथ गोस्वामी जैसे नित्य सिद्ध नित्य पार्षद प्रेमी भक्तों की नकल भी नहीं कर सकते हैं, वो जिस तरह के कार्य कर रहे हैं। But I appreciate because we want to try to reconcile everything. So no problem. तो मैं आपकी सराहना कर रहा हूँ क्योंकि आप जो है अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। I remember one place where one devotee came and he was trying to say that something like you don't have to be a Mahabhagavata to be, a guru, something like this, right? तो मुझे याद है एक बार एक भक्त ने आकर कहा क्लास में कि आपको एक महाभागवत होने की जरूरत नहीं है गुरु बनने के लिए। And he showed me one quote. और उन्होंने मुझे एक वाक्य दिखाया कहीं पे। And in the quote, you could read it like one way or the other way. और उस कोट में ऐसा लग रहा था पढ़ने में आप एक तरीके से पढ़ सकते हैं और उसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। So you could read it apparently or absolutely. तो आप उसको अपार विचार से या तत्व विचार से पढ़ सकते हैं। So then I looked up, I studied it. तो फिर मैंने उसका अध्ययन किया। And I found where there was say 10 places. तो जहाँ मैंने देखा 10 और जगह में, and 9 of them absolutely were making this statement. और उनमें से 9 वाक्य जो है बिल्कुल एक ही बात बता रहे थे। And one of them you could read it one way or the other. और उनमें से एक जो वाक्य था उसको आप एक तरीके से और दूसरे So दोनों out तरीके of से 10 statements, he took the one that you could read either way
तो उन 10 वाक्यों में से उसने एक को चुना जिसमें दो बातें सामने आ रही And थी, he एक was तरीके से reading दूसरे तरीके से it पढ़ one particular way, सकते। और उसको बस एक तरीके से वो पढ़ रहे थे and I was looking at it from a more absolute point of view. और मैं उसको जो है तत्व विचार दर्शन से And पढ़ then I रहा था। brought 9 other quotes और फिर मैं 9 अलग और भी शास्त्र कोट्स लेकर आया that established that point absolutely. और जो उस तत्व को प्रमाणित किया So उसी it's तत्व basically like 9.5 to a half versus a half. तो यहाँ पे जो दोनों दो के बीच प्रतिस्पर्धा है, एक तरफ 9.5 और दूसरी तरफ आधा। And he chose to accept the apparent consideration on the half, और उसने चयन किया कि जो आधा भाग है उसको उसने उठा के जो अपार rather than विचार to है। consider the absolute consideration, which was established 9.5. और जो तत्व विचार जिसमें 9.5 भाग सही था उसको छोड़ के उन्होंने कम वाले भाग को Then I अपार could विचार understand. He just wants to come to that conclusion. तो मैं समझ पाया So I कि ये won't केवल bother. अपार विचार में जाना चाहते हैं, तो मैंने उनको और परेशान नहीं किया। But if he was really open, he would have considered all of Prabhupada's other quotes. लेकिन अगर वो खुले दिमाग के हैं तो प्रभुपाद के अन्य सारे कथनों के ऊपर भी वो विचार करें। But it was too much contrary to what conclusion he wanted to come to. लेकिन हम दोनों काफी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि वो किस निष्कर्ष पे आना चाहते हैं और मैं किस So it निष्कर्ष was पे आना like चाहता हूँ। inconvenient information. तो उनको वो जानकारी उनके सुविधा के अनुसार नहीं थी। So that's good that you're trying to like make sense of all of this thing. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इन सारे का कुछ अर्थ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। Because Mayavadis, they come with the false conclusion first. क्योंकि मायावादी जो है सबसे पहले गलत निष्कर्ष पे पहुंचते हैं And then they take the Shastra and they twist it around, they do word jugglery. और फिर वो शास्त्र को उठाते हैं उसके बाद उसको तोड़ शब्दों का हेर फेर करने का प्रयास So करते they're हैं। quoting Shastra. तो ऐसा लगेगा शास्त्र की बात कर रहे हैं, And they're निकालने की doing बात some कर रहे word jugglery in terms of the interpretation, हैं। और फिर वो कुछ हेर फेर कर रहे हैं शब्दों का और तोड़ मरोड़ कर रहे because हैं, they already started with their false conclusion. क्योंकि उन्होंने गलत निष्कर्ष के साथ ही अपनी शुरुआत की है सिद्धांत की। I was also doing this work because I do agree with the conclusion which you shared about Guru, but I also got into a lot of problems because of that. You got into problems with this understanding? Yeah. Welcome to the club. That's why I agree with It's you. a very lonely club, man. But the people you have with you will be solid people. Don't expect a big, crowd. And Shyam was saying yesterday when we got back, and he said, "So you got some answers?" And I said, "No, I just got confirmations." Because I knew the answers and I agreed already with, I was already convinced, it was just a confirmation. And so doing this home at work was more to see also how you deal with it. Right. Because I also have to deal with the other ones who come to me and Right. argue. So Right. I want to see somebody who has more mature and who had to fight for it for a longer time, with more Exactly. experience in the fight, Yeah. how Yeah. to work around it to establish the absolute truth, which is absolute, which cannot be changed. It's not Exactly. relative. So Exactly. there's only one. Exactly. But it's troublesome to implement it. Yeah. No, I appreciate that because we were, trained with the wrong understanding. That's the problem, right? So now we have to counter that with the truth, at least for our own benefit. Now, who will want to weigh and measure that presentation versus how we were trained previously? Not everyone's willing to be, independent, objective, strong enough to chase the truth, even if it's, antisocial or considered like politically incorrect. All your friends will reject you, the gurus will reject you, they'll throw you out of the temple. So it's not the easy way to go. You understand? I don't think there's choice. But to get the truth and to chase the truth and to get the benefit of that, that's not also meant for everybody. This is the prize. And it can be, this is the difficult way. But you gotta line up the answers, man. You gotta have the answers, and I have the answers. If you just consider it, right? You didn't ask in a challenging way. You're basically just saying this is what we're told on how we answer that particular question, right? And it's just saying one day
Well, what about today? That means it's not happening in the present sense, right? So what will be the triggering event where you receive order and instruction? That still has to come. Well, what if Prabhupada left his body? Right? Now how do they get the order and the instruction? Even if they did become qualified. That's the next question. In a dream? No. That means you present Guru. Only he who's authorized can say whether that person is qualified and should be authorized or not. Because he's the existing present authority in representing that parampara. And this is outrageous to them. I didn't understand. I didn't understand. I could not follow. Should I explain it again and then you understand what I'm saying? Something. Let's say someone says, oh, Prabhupada wants me to become a guru. चलिए कहते हैं कि प्रभुपाद कोई कहेगा कि प्रभुपाद ने चाहा था कि मैं गुरु बनूं. So he wants me to qualify myself. तो उन्होंने चाहा कि मैं अपने आप को योग्य बनाऊं पहले. So while you're in the process of qualifying yourself, तो जब मैं अपने आप को योग्य बनाने का प्रयास कर रहा the था, work's not done yet, और मैंने अपना काम पूरा and नहीं किया Srila था, Prabhupada leaves his body. और उसके पहले ही प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ दिया. Right? But the parampara is always presently manifested. लेकिन परंपरा सदैव प्रकट रहता है. And the only time that it's not presently manifested is when Krishna's come. और उसी समय परंपरा नहीं होती है जब कृष्णा स्वयं आते हैं. Because he said, well, no one's representing the parampara, I guess I have to go. कृष्ण देखते हैं कि ठीक है कोई परंपरा के प्रतिनिधि नहीं बाकी है, तब मुझे खुद ही आना पड़ेगा परंपरा के. Because now he wants to preach. क्योंकि अब वो खुद प्रचार करना चाहते हैं. Right? But otherwise, parampara is always manifested. और उसके अलावा परंपरा सदैव प्रकट होती है. Because Krishna is always trying to help some souls somewhere in the process of bhakti, right? कृष्ण सदैव उन जीवात्माओं की मदद करना चाहते हैं जो भक्ति प्रक्रिया में किसी न किसी स्थान तक आगे बढ़ रहे हैं. So there always has to be an external manifestation of the super soul. तो सदैव कोई न कोई परमात्मा का प्रकट रूप मौजूद होता है. Now let's say that you're not qualified to be an external manifestation of the super soul. तो चलिए मान लेते हैं कि कोई योग्य नहीं हो पाया अभी तक कृष्णा का परमात्मा का बाह्य प्रकट And रूप then बनने your के लिए. guru left. और उनके गुरु ने शरीर छोड़ दिया है. Now how are you going to become तो qualified अब आप योग्य कैसे बनेंगे? if the guru left? ये गुरु जब छोड़कर जा चुके हैं. That means you have to connect to present manifestation of super soul. इसका मतलब वर्तमान में जो मौजूद हैं परमात्मा के बाह्य प्रकट रूप उनके पास To जाके आपको जुड़ना होगा. continue the hearing process, ताकि आप जो श्रवण की प्रक्रिया वहां से फिर से शुरू कर to सकें. get purified and to develop faith and understanding of the science. ताकि आप शुद्ध हो सके और इस विज्ञान में आपकी श्रद्धा बढ़ सके. And then let's say you become qualified. और फिर चलिए हम कहते हैं कि आप धीरे धीरे योग्य बन गए. फिर Then that guru who is authorized, he may instruct you. तो फिर जो गुरु जिनको प्रमाणिक अधिकार मिला था फिर वो आगे आपको अपने निर्देश देंगे. You know, when you say he's going to leave his body, he may say, okay, now, just like Prabhupada, just like Srila Govardhana Swami gave me this instruction, I'm giving you the same instruction. और जब वो शरीर छोड़ने वाले होंगे तो जो अपने आप को योग्य बना पाया है तो वो जैसे श्रील गौरव महाराज ने कहा कि प्रभुपाद ने जैसे मुझे निर्देश दिए हैं फिर उन्होंने कहा कि मैं अब आपको निर्देश देता हूँ आगे शिष्य बना. Otherwise, the only alternative would be like, well, Prabhupada, 30 years ago, he had a hope that one day we would be gurus. और ना ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसा सोचा था, आशा की थी कि 30 साल के बाद हम जो योग्यवान हो जाएंगे गुरु बनने के लिए. Okay, but where do you receive the order and the instruction now? लेकिन ठीक है 30 साल के बाद वो आपको आदेश वो अधिकार कैसे मिलेगा? Now they say, well, the GBC. और फिर वो कहते हैं कि जीबीसी मिलता है. But where did any of the acharyas say that a committee who are managing, a managing authority of an institution is the spiritual authority representing parampara? Where does anybody say that? कहाँ पे किसी आचार्य ने लेकिन ये बात की है कि कोई समिति मिलकर निर्धारित करेगी कि कौन अब प्रमाणिक प्रतिनिधि है परंपरा का. So they have no authority to give that instruction. तो उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है ये निर्देश किसी को देने के. And they know it. और उनको ये बात पता भी. Otherwise, why not just take a vote and say, okay, you're representative of parampara? वरना क्यों मतदान लेके वो किसी को ये नहीं कह देते ठीक है ये ही अब परंपरा. Even they themselves with their own policy are not saying that they're authorized to do that. और वो खुद के ही पॉलिसी में ये कहते हैं कि वो अधिकार नहीं है उनके पास ये बताने के लिए कौन गुरु है या नहीं. All they're basically saying is if somehow or other some order and instruction comes to you, I have no objection.
वो बस इतना ही कहते हैं, कहीं से कुछ भी आपको निर्देश अगर आ गया कि आपको आदेश अधिकार मिला है, हम लोग उस पर कोई खिलाफ सवाल नहीं उठाएंगे। So if they really believe that the order and instruction comes from the GBC, then why don't they just say, we will give you the instruction to become bona fide Guru and Parampara? Why don't they just make that the policy if that is philosophically correct? तो क्यों जीबीसी ऐसा सिद्धांत या पॉलिसी नहीं बना रही है, अगर ये सैद्धांतिक रूप से सही है कि वो निर्धारित करेंगे किसी को प्रमाणिक गुरु होना चाहिए या नहीं परंपरा में? They don't and they can't. तो वो ऐसा कर नहीं सकते और करते भी नहीं है। That's why they come up with this, the no objection, clause. तो इसीलिए वो जो है हम कोई उसके विरोध में नहीं है। ये We're not ordering and instructing you, but we're just not objecting if somehow or other, you get some order or instruction. तो कह रहे हैं कि हम आपको अधिकार नहीं दे रहे, आदेश नहीं दे रहे, लेकिन हम इसके खिलाफ भी नहीं है कि कहीं से आपको कुछ मिल गया कि आपको आदेश मिल गया, निर्देश मिल गया, आपको गुरु बनना चाहिए। So how does let's say Prabhupada a disciple from a parampara guru, whose guru has left the acharya after the acharya leaves the body, if he didn't he needs a guru. Yeah. He needs another guru. Who is bona fide by the acharya. Yeah. Or in the line from previous acharya. तो प्रभु पूछ रहे हैं कैसे अगर कोई मान लीजिए प्रभुपाद के शिष्य हैं, प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया और कोई स्वयं को योग नहीं बना पाया, तो गुरुदेव बता रहे हैं इसका मतलब उसको वर्तमान में मौजूद आचार्य को जाके शरणागत करना, यानी कि उनको एक गुरु की जरूरत है ताकि वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लग सके। So different Prabhupada disciple, they were lamenting because they never got order instruction from Prabhupada. कई सारे प्रभुपाद और कई सारे प्रभुपाद के शिष्य ये शोक कर रहे थे कि वो इतने गंभीर एकनिष्ठ नहीं थे क्योंकि प्रभुपाद से निर्देश मिल पाए, तो वो इसका शोक करते थे। So sometimes they would come to Srila Govinda Swami. तो कई बार वो श्रील गौरव से महाराज के पास आए and say, I never asked Prabhupada, neither I received direct order and instruction from Prabhupada in my seva. तो उन्होंने कहा कभी भी हमने प्रभुपाद से पूछा नहीं और ना ही प्रभुपाद ने हमें कोई सीधा निर्देश दिया किसी सेवा को करने के लिए। तो Can you please ask Prabhupada, what he wants me to do? तो उन्होंने पूछा क्या प्रभुपाद से पूछ सकते हैं कि प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं? So that you're going to Prabhupada's parampara, right? And then you're connecting to Prabhupada's parampara through your godbrother. तो आप प्रभुपाद की परंपरा से जुड़ रहे हैं और प्रभुपाद के परंपरा में अपने गुरु भाई के माध्यम से प्रभुपाद की परंपरा में जुड़ने का accepting him as a pure value medium of Krishna parampara. और उनको आप शुद्ध माध्यम मान रहे हैं कृष्ण परंपरा का। That's why Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, when he's talking to his godbrothers who are disciples of Bhakti Vinod Thakur, इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब अपने गुरु भाइयों से बात कर रहे थे जो सभी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य थे, he said, unless you surrender to the present link of the parampara from Bhakti Vinod Thakur, उन्होंने कहा अगर आप वर्तमान में मौजूद आचार्य को शरणागत नहीं करेंगे जो भक्ति विनोद ठाकुर की प्रमाणिक परंपरा है, you'll have no connection to Bhakti Vinod Thakur just by your casual reading of his books and teaching. आपको भक्ति विनोद ठाकुर के पास कोई उनके साथ कोई संपर्क नहीं बना पाएंगे केवल उनकी किताबों को पढ़ के। And just Prabhupada also said, if you think you can read and understand my spiritual master's books without surrendering and hearing from me, you have no access to my spiritual master. और प्रभुपाद ने भी कहा था आप सोचते हैं मेरे आध्यात्मिक गुरु के किताबों को उनकी शिक्षाओं को आप उनको पढ़ करके वो समझ जाएंगे, आपके पास कोई उनके पास अनुमति नहीं है उनके साथ पहुंचने की अगर आप मुझे शरणागत नहीं करते हैं वर्तमान में मौजूद आचार्य को। That means present surrender, menial service, submissive oral reception from Guru, Mahaguru, Guru, Parampara. तो इसका मतलब आकर शरणागति करनी होगी, विनम्र भाव से सेवा करनी होगी, श्रवण करना होगा, उनसे जिज्ञासा करनी होगी उस प्रमाणिक गुरु में जो महाप्रभु की परंपरा में। When I was preaching in Armenia, one devotee was there saying, Bhakti Vinod Thakur is my guru. जब मैं आर्मेनिया में प्रचार कर रहा था एक भक्त ने मुझे आकर कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर मेरे गुरु हैं। I was like, wow. मैंने कहा वाह। So then you're just leaving everyone after that out? You said, yeah, Bhakti Vinod Thakur is my guru. तो मैंने कहा उनके बाद तो जो भी थे आपने सबको छोड़ दिया, आप सीधे भक्ति उनका हाँ मेरे So they don't understand, Prabhupada calls it the mystery of disciplic succession. और प्रभुपाद बताते हैं परंपरा एक रहस्य है। So if we don't receive that intelligence and faith from Krishna, then how will you understand who's pure value medium of Krishna? तो अगर आपको वो बुद्धि और श्रद्धा नहीं मिलेगी कृष्ण से, आपको कैसे पता चलेगा कौन कृष्ण का शुद्ध माध्यम है?
You won't hear Krishna to them. You'll just say, "Oh, this Maharaj just gave me his opinion." आप कृष्णा को सुन नहीं पाएंगे उस महाराज से, आप सुनेंगे ये महाराज ने मुझे अपना कुछ विचार दे रहे हैं। So Krishna is the speaker of the Bhagavatam. तो कृष्णा भागवतम के प्रवक्ता हैं। So perfect hearing from perfect source means to directly hear Krishna. तो पूर्ण श्रवण, पूर्ण स्रोत से इसका मतलब सीधे-सीधे कृष्णा को श्रवण करना। There's a thing that bewilders my mind. That is, ISKCON is still going on, and the movement is increasing. Many devotees still joining buildings and books and all this going on. I just cannot understand, and I don't know who are the acharyas and this group, because there are great devotees still in our movement who are taking care of the movement. I cannot understand how do they deal with it? How do they accept? How do they? I don't know. I can just not, and I don't know that. I guess it's a personal question. How in America they have Sunday church in a stadium that has 80,000 people. तो How did 80,000 people come to listen to that preacher? तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कैसे जो है ISKCON इतना चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, किताबें छप रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो कैसे इतने सारे लोग आ रहे हैं? तो गुरुदेव पूछ रहे हैं कि कैसे ईसाई धर्म का एक अमेरिका में बहुत बड़ा स्टेडियम में लोग 80,000 लोगों की संख्या में भीड़ आती है, एक प्रचारक वहाँ बात करता है उसको सुनने के लिए, क्या क्यों इतने लोग वहाँ पे आ रहे हैं? That's why it says, okay, come, chant, dance, do service, take prashadam, chant Hare Krishna, try to study the books, right? इसलिए वो कहते हैं कि आइए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कीजिए, नाचिए, गाइए, प्रसाद लीजिए, किताबों को पढ़िए, अध्ययन कीजिए, सेवा कीजिए, get purified, gradually get some sukriti, और धीरे-धीरे शुद्ध होइए, कुछ सुकृति मिलेगी आपको, right? And start trying to understand things, और चीजों को धीरे-धीरे समझने का प्रयास कीजिए, right? Then start asking deeper questions about philosophy and how all these things are working and connecting with each other. और तत्व के ऊपर, सिद्धांति के ऊपर गहरा प्रश्न, जिज्ञासा करने का शुरू कीजिए, कैसे ये सारी चीजें काम कर रही है, उसको And समझने then का you'll प्रयास। find the people that helped you in the beginning only helped you up to a certain point. और आप देख पाएंगे जो लोगों ने आपको शुरुआत में मदद की, वो आपको एक किसी स्तर तक आपको लेकर आ पाए, और या फिर आपको मदद Whether करने they का helped or प्रयास not किया, is another question. वो मदद कर पाए या नहीं वो तो अलग प्रश्न है। So then you have to just keep progressing and allowing Krishna to give you the association which answers your questions according to Guru Sadhana Shastra and destroys your doubts. तो आपको बस इसी तरह आगे बढ़ते रहना होगा और कृष्णा को अनुमति देनी होगी, गुरु साधु शास्त्र के आधार पे वो आपको मदद करते रहें, आपके प्रश्नों को उत्तर देते रहें, आपके संदेहों को नष्ट करते रहें। Right? How many disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कितने शिष्य जो हैं? How many temples was it? 68 or something? 64? She had 64 temples with thousands and thousands of disciples. तो उनके 64 मंदिर थे, हजारों हजार शिष्य थे उनके। And out of all of them, Srila Prabhupada. और उनमें से सभी में एक श्रीला प्रभुपाद केवल। He was the one. He was the one who represented. My Srila Govinda Swami said, Srila Prabhupada received all of the mercy and all of the Shakti from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. और श्रील गौरव महाराज ने बताया श्रील प्रभुपाद ने सारी शक्ति, सारी कृपा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्राप्त की। And others, they couldn't do it. और बाकी लोग उसको कर नहीं पाए। They went to Europe, they went to Germany, they went to England, they came back and said it's not possible. Still, Prabhupada installed the GBC. He was hoping. I mean, he said, if you love me, you cooperate. Yeah. So that was his desire, that we work together, that the movement keeps expanding. And contrary to the previous acharyas, he didn't centralize that power. He distributed to a committee, to the GBC. So he did something which is unprecedented in the Guru Parampara, because until then we had a predecessor, but Prabhupada said no. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also wanted like GBC. Yeah. Right? Yeah. And then he said, just manage everything, and then self-effulgent acharya will come out and be revealed, who will be spiritual authority. And So you have the committee managing an institution, and then self-effulgent acharya will come out. So just continue managing, working together, right? But what happened was, before they could, self-effulgent acharya was revealed, they said, you know what? We're not seeing anybody, so let's be gurus.
What do you think? You want to be a guru? I feel like being a guru. Right? So Prabhupada said, then two people took it upon themselves to want to be gurus. So they didn't wait, they were not patient. They didn't wait for the self-effulgent acharya representative of Parampara to come out. And so they did the same thing here. They just, Prabhupada left and they said, okay, we're all ordered and instructed by Prabhupada to become gurus. Right? And then you see what is the history. Disaster. So what was Prabhupada's intent and instruction after he left? More precisely. Because Srila Prabhupada instructed Srila Govinda Swami to make, Prabhupada said, just like when I came to America, I had no men and money, right? I came on the order and instruction of my guru, I'm giving you the same instruction. So all of the instruction, so when in Bhubaneswar, Srila Prabhupada, Gurudev Srila Govinda Swami said that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur left all of his mercy and Shakti with Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada left all of his mercy and his potency right here in Bhubaneswar. Now for me it wasn't difficult to understand it because I already understood by mercy of Guru Krishna that he is the purifier medium of Krishna Mahaprabhu's Parampara. So for me it was just confirmation and also Gurudev establishing Parampara. Just like Srila Prabhupada, why did Prabhupada in the beginning, he wrote in Bhagavad Gita, what is the Parampara? So if the Guru in the Parampara doesn't establish the Parampara by all of these different ways, then how will we understand who and what is Parampara? So only the one in Parampara can establish Parampara. Otherwise everyone's saying, we're Parampara, I'm Parampara, you're Parampara. So there must be some authority so that those persons who are ordered and instructed in that Parampara, only they are authorized to establish what is Parampara. And nobody else. And this drives them crazy. But philosophically and historically, it's absolutely true. I guess just the unprecedented situation which we have worldwide now is never seen before, and we have a huge amount of devotees, money. I mean, everything is a new scale, and it needs to be dealt with because the mission needs to be expanded. It's chaos. It's complete chaos because there's no head. You understand? That's why they're all fighting and arguing with each other, right? They don't agree on the philosophy. They're making ladies gurus, right? No offense. And then they're, consolidating the power. It's all power politics, right? It's everything Prabhupada said, don't do. Don't do psychology. Don't do yoga. Don't do all of these things. Don't introduce, don't manufacture anything. Don't change my books. And is there a place? And they're asking me, am I ISKCON? Is there a place where Srila Prabhupada mentions that the GBC should be under a head? I never heard that. Under a head? Yeah. You just mentioned that the GBC is a chaos because it has no head. Means no... If there's a head there, the results, I'm not saying there's a head there. No, but my question is... Now, first of all, right? So now Prabhupada said that you are the ultimate managing authority. Right? Prabhupada never said you are the ultimate spiritual authority. But did he say that the managerial authority should be under spiritual authority? Whoever is representing Mahaprabhu, Prabhupada's Parampara, he's automatically spiritual head. Now whether that's one person or two or three or five, that's a whole nother point.
but the principle is the same, because that parampara establishes the spiritual authority. It reminds me, Indra, he said that the kind of the GBC is like the Kshatriya ashram, Varna, that should always be. It's more like Vaishya. And they should be under. Show me the money. Show me the money. But that they should always be under a Paramahamsa Vaishnavas and under higher guidance. And, Prabhupada didn't even want sannyasi to be part of the GBC. He said the Grihastas should be the GBC. The sannyasis should be traveling and preaching, doing Harinam, giving Bhagavatam class, preaching to the devotees. Right? He doesn't want them bogged down in power politics, fighting over temples and power and manpower and money for sannyasi. So Prabhupada said, don't consolidate, don't make power politics, right? And sannyasis, they should travel and they preach. These guys are the biggest politicians I ever saw in my life. Most of them. the question to be answered, not So they're not following Prabhupada's orders and instructions. So therefore, what spiritual authority do they have? How did Prabhupada criticize Gaudiya Math? He said they didn't follow the orders and instructions of the Guru, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, so they became useless, spiritually powerless. Why do you think they're introducing bridge preaching? Who will join if you don't give all this sense gratification, gross and subtle sense gratification? Who will join? That's why you have yoga, festivals, and you have, all of this, huh? What is it? Kirtan Mela. Kirtan Mela, all of this stuff. They're all out in Vrindavan in the field, right, with the Grahasta ashram in there, right? They're all doing yoga, right, during japa period, right? Can you think Prabhupada walking there and watching all of these next generation of hippies, right? The parampara of hippies, right, doing yoga during japa period. You think Prabhupada would be all fired up about that? Even one sannyasi, he was doing traveling road show with the yoga and all of the. Prabhupada said, stop this nonsense. So they're not following Prabhupada's instruction. And why? Because purity is the force. You see? And because they're not authorized, empowered, and pure, they have to introduce like a carnival, a circus. It's like a circus show with the clowns. Right? Some fantastical, festival, circus. And because they can't preach, then they just water everything down. And Prabhupada said, don't water it down. What is bridge preaching? It's completely watering it down. I remember when I was at a Rath Yatra a few years ago in Philadelphia, and they asked me, because I was sannyasi, can you preach to some students and stuff? I said, I'll be happy to meet everybody. So when I went to go in the tent to meet everybody, some senior devotees stopped me and they said, Maharaj, I just want to say, don't say anything about following regulative principles. Don't say anything about surrendering to Krishna. Don't say, and they gave me a list of 20 things I can't say, right? And I literally was like, I have no idea what to say. So this is how Prabhupada preached? This is how Prabhupada trained his followers, disciples to preach? And then you want to say you're the ultimate spiritual authority? Don't get me started, man. It's all power politics.
Right? Who you have a few friends in some high places? Yeah, we can make you a GBC candidate. We can make you a guru if you're really good. I had the sannyas committee telling me that we don't want to give you sannyas, but we'll make you a guru. And I said, well, you know, my Guru Dev and authority said I should take sannyas and preach, and then gradually, if some people come, then I could be guru, because my Guru Dev asked me to do that ceremony. And I said, yes, but some people didn't want to give you sannyas, but we want to offer you guruship. This is all going on. So this is all spiritual authority. This is the unpalatable truth. So if you speak the unpalatable truth in the institution, you will not be welcomed. I mean, I can understand we are human beings and prone to fault, to make mistakes. Even in GBC, I mean, all of us. But okay, then be a human being, make your mistakes, take a humble position, and surrender to some spiritual authority to get rectified. yeah, and that's my question, because Prabhupada left us everything, so he must have left the authority to which the GBC can. Maharaj just left the world. So who did Maharaj order and instruct to carry it on? That's the question. Maharaj asked me. He said, just like Prabhupada ordered and instructed me to make my own man, I'm giving you the same instruction, brother. So 3 times, Maharaj called me and he instructed me to make my own man. Just like Prabhupada told me to make my own man, my own disciples, I'm giving you same instruction. Now thank God, Gurudev said that in front of my senior godbrothers. Because nobody would believe me. They'll just say, oh, he's just making it up. Oh, he had it in a dream. Right? Nobody would take it seriously. But because my godbrothers, senior godbrothers, heard it and confirmed it, they said, definitely Maharaj, for whatever reason, ordered and instructed Murali to do what he's doing. Gurudev told me, sannyasa is meant for you. I want you to be like Ramananda Roy. Allow Krishna to speak through you. What does that mean? What kind of instruction is that? How the Guru is giving this instruction? I want you to become like Ramananda Roy and allow Krishna to speak to you. What does that mean? Sounds a lot like pure via medium, doesn't it? Make your own man, just like Prabhupada told me, I'm telling you. And then just before Maharaj left his body in Bhubaneswar, then I had a meeting with Maharaj. And Maharaj told me in front of the devotees, I want you to help me to manage my projects. So Gurudev accepted me, initiated me, trained me, instructed me to open temples and to preach what he taught me, to help other people, and sannyasa is meant for you, and act like Ramananda Roy, be like Ramananda Roy, allow Krishna to speak to you, and make your own man. Just like Prabhupada told me, I'm telling you. Now people want to say he's crazy or it's conspiracy theory. You can say whatever you want. But like I said last night, or tonight, I'm not foolish and stupid enough to do this service unless I'm ordered and authorized. I'm not that crazy. Now, did some of my godbrothers, they're acting like Guru. Then I went to one of my godbrothers, I won't mention his name, and
And anyway, Jayapataka Swami, he gave me sannyas in ISKCON. So he's my sannyas guru. That was approved by GBC. And he initiated me here in the temple. And one of my godbrother, when I saw, he became guru. So I went to say hello. I bowed to him. Right? I just want to go see him. And as I was coming to him, he said, Maharaj, I'm not a guru. And I was like, I'm not even asking him. From his side, he automatically said, I'm not a guru. He said, I'm a manager guru. A manager guru. And I just said, okay, well, I never heard Srila Govinda Swami or Prabhupada or any acharya talking about a manager guru. If you're a manager, be a grihasta and manage it. So I didn't have to ask him anything. He said everything because he knows I know. He knows me very well. He was there and heard Srila Govinda Swami. He was the president of the temple. He knows Srila Govinda Swami instructed me to do this service. I have it also on the tape. I recorded it. So why he just spontaneously saying, I'm not really guru, I'm just a manager guru? Because he knows he's not supposed to be a guru. And is there validity to that position? Is there validity to that position? Did he what? What is the validity of that position? No validity. From spiritual point of view, zero validity. It's a Maya. It's a cheating guru. He's exactly doing opposite of what Srila Govinda Swami preached. So how he can be a guru? How you can represent the parampara? If you do and say opposite of what the previous acharya was teaching. But again, we measure, how is it? We measure it by the results. We measure it by the results. What is the result? So if certain disciples are... So he gets a couple of cheating disciples around him, so that means he's not a cheating manager guru? Yeah, but what if those disciples become purified by the chanting? There's no Shakti in the mantra. If you disregard order and instruction of the guru, you're aparadi. The guru aparadi. There's no Shakti in the mantra. Krishna Parampara will not manifest in your chanting or your katha. It's completely mundane, materialistic. What if still qualities are manifesting, like... What qualities? Vaishnava qualities. He has no Vaishnava quality. He's a politician. He's a politician. He's a manager guru. He's a politician. And there's no tattva vichar, there's no guru, sadhu and shastra, no potency in what he's saying. Right? He's not preaching what my spiritual master preached. So he's illegitimate. Asara. But still following so many of the instructions. Huh? Still following so many of the instructions. Chanting Hare Krishna, all this process are still being followed. Are they completely nullified just because of one default? I'm asking. You think it's just one? This person is, an offender to my spiritual master. So if you commit the Vaishnava Guru aparad, that's Hatimata. Then that means all of your bhakti, everything is uprooted. So what potency is going to be there? What mercy are you going to get?
If all advancement is based on mercy, if you disregard order instruction of Krishna, Krishna Parampara, there's no mercy, then what is the meaning of your advancement? What is the mechanism for your advancement? It's based on mercy. Right? So if he rectifies it, and you get mercy of Guru and Krishna and Vaishnava, then it's possible to get free from that. Until then, it's unresolved. You know, he doesn't want to discuss with Srila Govinda Swami's preaching and teaching. So I'm not interested in this association. They want the worship, they want to be gurus, they want the money, they want followers, they want temples, they want power, that's what they got. But why does Srila Govinda Swami ask me to manage all of his projects? And not them? That's another question. They're older, they're from that place, they're more senior. Why didn't Srila Govinda Swami instruct them to do it? And I'm not saying this I don't need to like puff myself up. I'm just telling you the facts. It's up to you whether you accept that or not. I don't need to tell you this to try to convince myself. I've already made the instruction in my life and my soul. I'm all in. So that's not why I'm telling. I'm telling to give you understanding and hopefully faith and intelligence to understand what is my authority to be doing and saying what I'm doing. Isn't it? Just like if you go to the doctor's office, right? What's the first thing you do? You look, okay, what school did this guy go to? You know, which advanced degree did he have? What type of training does he have? Right? You're trying to understand what is this person's authority and qualification, first of all. So if I'm accepted and into Mahaprabhu's parampara and initiated, that means that is mercy of Mahaprabhu, Krishna, Gurudev, Prabhupada's parampara. That's Sambandha Jnana. Right? That's connection to Krishna through parampara. That's important. Now, what does Abhideya means? What are the instructions that you receive in that parampara and through that parampara? And I'm just telling you what my instructions are. What my Gurudev repeatedly asked me to do. And I'm doing it. That's my authority. That's what authority gives me the right to even sit here and try to explain anything to you. Otherwise, I would have no right. I would have no authority. And if my Guru didn't understand that I heard and understood properly, why would he send me out to be a preacher? When I thought I understood, he didn't let me go out and preach. Right? Because you know, he didn't understand enough yet. The training's not complete. And then after 2 more years, then he said, okay, now go. Then I went. Opened a temple near Boston, in the United States. And then Srila Govinda Swami came there for 1 week. And while he was there, that's where he instructed me in front of my godbrothers to do what he's doing. But I was Grihastha. I was married, I had 2 children. So I said, why is Gurudev, why is he giving me this instruction? It was bewildering.
And then two at a time. One time Gurudev was in California, then he called one disciple, my other senior godbrother, and he said, Maharaj, Gurudev wants to speak with you. I said, okay. Then Maharaj called me 2 days after he left there, and he said, again, I'm telling you, you should make your own man. Just like Prabhupada told me, I'm telling you. That's the only thing he said on the phone call. So he repeatedly is, and then I'm like, okay, I have this instruction, I don't know when exactly I'm supposed to do that. And then Gurudev said, stay in Grihastha ashram, handle your responsibilities there, and then like Raghunath Das Goswami, the time will come, Guru and Krishna will get you out of Grihastha ashram. And that's exactly what happened. So I'm just trying to, because you're new, you don't really know me, I'm just trying to give you a little bit of background for you to understand how and why I'm here and doing what I'm doing and how I'm boldly speaking like I'm speaking. Because Maharaja asked me to speak like that. Be bold, be fearless, don't hesitate, don't preach for, don't compromise anything. Not for vox populi, not for any institutional consideration. Right? You can, otherwise you cannot speak the truth. Oh, I'm looking up what you made me look up. Anyway. So, yeah. I have one small point. Wow, I thought this was going to be like short and sweet, you know? This is like a session. छोटा या मधुर होगा लेकिन काफी लंबा This is चलेगा। a yoga session. योगा सेशन कर रहे थे हम। Tapo Divyam yoga session. तपो दिव्यम योगा सेशन हो रहा था। Of your brain. आपके दिमाग का कर रहे थे हम। And your body sitting there. और आपके शरीर जो वहाँ बैठा है। Yeah. You were saying like how only parampara can establish parampara. Who else knows parampara? Exactly, and similarly, like in Bhagavatam itself is telling its glories, and when Krishna comes, he himself establishes that he is Supreme Personality of Godhead. He establishes what? That he is the Supreme Personality of Godhead, Yeah. absolute truth. Yeah. It's kind of a similar thing, like, because they are the highest authority there, so only they can establish their. Krishna establishes himself, then he spoke to Lord Brahma, right? And then that way he established this parampara, disciplic succession, isn't it? And Lord Brahma is saying, because I heard directly from the Lord in the heart. And then then Krishna, only Krishna can establish the parampara. That's why Krishna knows who is his own man. So when someone asks, oh yeah. तो प्रभु गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे कृष्ण ने सबसे पहले स्थापित किया कि मैं सर्वोत्तम भगवान हूँ और उन्होंने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और उसके बाद ब्रह्मा जी ने ये स्थापित किया कि हाँ ये परंपरा है, तो इस तरह से परंपरा एक के बाद आगे आती जा रही है। So one reporter asked Srila Prabhupada, after you Srila Prabhupada, who will be the next leader in this country? एक पत्रकार ने अमेरिका में श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपके बाद इस्कॉन के अगले आचार्य कौन होंगे? And Prabhupada said, Krishna will say. और प्रभुपाद ने कहा कृष्ण बताएंगे। And then one Rameshwar Maharaj started saying to the reporter, Krishna will give intelligence, and then he giving this type of answer. And Prabhupada said, no, Krishna will directly say. और उसमें से एक रामेश्वर महाराज जो पत्रकार को बताने लगे कि कृष्णा किसी तरह से एक बुद्धि देंगे कि वो किसको गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, कृष्णा सीधे सीधे बताएंगे। So the bona fide guru, he knows what is Krishna's intention for somebody. तो प्रामाणिक गुरु जानते हैं कृष्णा किसी जीवात्मा से क्या चाहते हैं।
So that means my spiritual master knows what is Krishna's intention for me. इसका मतलब मेरे आध्यात्मिक गुरु जानते हैं कि कृष्णा मुझसे क्या चाहते हैं। That's why Gurudev said, I came here for you. इसलिए गुरुदेव ने कहा मुझसे कि मुरली मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। Won't you help me? क्या तुम्हारी मेरी मदद नहीं करोगे? Won't you cooperate with me? क्या मेरा सहयोग नहीं करोगे? What should I do? तो मैं क्या करूँ? Bhubaneswar. मुझे भुवनेश्वर आना चाहिए। Hear from me. मुझसे श्रवण करना। Learn from me. और सीखना मुझसे। And then I was brand new in Bhubaneswar. I was just there for 1 or 2 weeks. और मैं बिल्कुल नया था भुवनेश्वर में, 1-2 हफ्ते के लिए आया हुआ था। And I was with a bunch of people. Maharaja was walking around the temple and he's telling about the history of how Prabhupada sent him there. और हम कुछ भक्तों के साथ थे और गुरुदेव के साथ तो मंदिर में इधर-उधर घूम रहे थे और गुरुदेव अपनी कहानी बता रहे थे कैसे प्रभुपाद ने उनको भुवनेश्वर आने के लिए आदेश दिया था। And how he was just staying on the highway, sometimes in the tent where they were fixing the road because he had no place to stay. और कैसे वो हाईवे के किनारे वो जो रोड का निर्माण कर रहे थे उनके साथ टेंट में रहते थे क्योंकि वहाँ पे कुछ निर्माण नहीं हुआ था उस समय। You know this highway, right? He knows, right? They're just like they're inside of the tent. They're in some shack or something. तो वो किसी टेंट जो किसी बोरे से बनाया गया था उसके वहाँ पे वो रहते। So Gurudev had nothing. तो गुरुदेव के पास no man, no money, कोई लोग नहीं थे, no कोई place पैसे to नहीं थे, stay. कोई रहने के लिए Just some जगह patch of था, land with nothing on it. बस एक जमीन का टुकड़ा और उस पे कुछ भी नहीं था। So sometimes he would have to sleep like that. तो कभी-कभी वो उसमें वैसे ही सोए रहते थे। And then he'd go to some local Vaishnava ashram and take some prasad. और आसपास के कोई वैष्णव आश्रम में जाके कभी प्रसाद ले लेते थे। That's how he started. इस तरह से उन्होंने शुरुआत की। So he was telling this story. तो वो अपनी इस तरह से कहानी सुना रहे थे। And we were all listening to Maharaj. हम महाराज को सुन रहे थे। And all of a sudden Maharaj said, "Where is he?" और अचानक से महाराज ने पूछा वो कहाँ है? And I was behind Maharaj. और मैं बस महाराज के पीछे ही खड़ा था। And there were like 10-15 devotees there. और 10-15 भक्त और थे। So Maharaj says, "Where is he?" तो महाराज ने पूछा वो कहाँ है? So everybody's like, who's Maharaj looking for? तो सभी लोग सोचने लगे महाराज किनको ढूंढ रहे हैं। And then Maharaj turns right around. और महाराज तुरंत And he पीछे looks मुड़े at me. और मेरी तरफ देखा। And he says, "I want you to become like Ramananda Roy. उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ तुम रामानंद राय की तरह बनो। I want that you allow Krishna to speak through you." मैं चाहता हूँ आप कृष्णा को अनुमति दो आपके माध्यम से वो लोगों से बात And then करें। turns back around और फिर तुरंत गुरुदेव आगे and मुड़े starts telling the rest of the highway story. और फिर से हाईवे की कहानी बताना शुरू कर दिया। So how do you take that? तो आप इसको कैसे समझेंगे? How will you understand? कैसे आप इसको समझ पाएंगे? Did you get this kind of instruction? क्या आपको इस तरह का निर्देश मिला है? So the bona fide guru knows Krishna's intention for you. तो प्रमाणिक गुरु जानते हैं कृष्णा का क्या उद्देश्य है आपके लिए। So therefore he trained me and qualified me and explained many things to me to get me ready for the seva. और इसी उन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया, मुझे योग्य बनाया ताकि मैं ये सेवा कर पाऊँ। And here I am. और मैं यहाँ हूँ। Trying my best to share, my experience and my faith and my realization with you. मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ, अपना अनुभव, अपना साक्षात्कार और अपना श्रद्धा आपके लोगों के साथ I बांटने के never लिए। asked for this. मैंने इसके लिए कभी मांग नहीं की थी। And then once I found out what it is, I never would have asked for it. और एक बार जब मुझे पता चल गया ये क्या है, तो मैं तो कभी इसके लिए मांगता तक नहीं अपने Because जीवन में। it's horrible. क्योंकि बहुत ही भयानक काम है। Because it's such a thankless task. क्योंकि बिना धन्यवाद के ये कार्य करते रहना होता है। Because you get everyone with false ego and with no training and so much mental speculation, fault-finding mentality. Right? They don't know Guru Sadhu Shastra. क्योंकि सभी And then you're approaching their false ego and you're trying to get them to listen to you. Right? You think that's easy? तो सभी के पास मिथ्या अहंकार है, सभी मनोधर्म कर रहे हैं और आप उनको गुरु साधु शास्त्र में कोई श्रद्धा नहीं, उनको गुरु साधु शास्त्र समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो मिथ्या अहंकार में है, तो ये इतना आसान काम है क्या? And then the uncontrolled mind and senses, they're doubting you, they're questioning you, they're challenging you, they're criticizing you. और Right? उनका अनियंत्रित मन और इंद्रिय आपका दोष निकाल रहा है, आपके ऊपर संदेह कर रहा है, तो और आपको चुनौती देने का प्रयास कर रहा And है। then all you're doing is, look, I'm just trying to help you out, man. और Right? आप बस यही कर रहे हैं कि उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं।
If you're not interested, no problem. I won't bother you. अगर आपको कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मुझे कोई And if समस्या someone नहीं है। else is more inspiring and helpful to you, then go, no problem. और कोई अन्य आपको ज़्यादा प्रेरणा दे रहा है, आपको ज़्यादा मदद कर पा रहा है, तो आप उनके पास जाइए, कोई समस्या नहीं है। You can go to my manager, guru, God brother. आप मेरे मैनेजर गुरु, मेरे गुरु भाई के पास जा सकते हैं। You better have some money आपके पास अवश्य बहुत पैसे हैं and a resume, और आपको पैसे लेके जाने होंगे और अपना रेज्यूमे लेके जाना होगा। and you better be prepared to say what your father does for work. और आपको बताना होगा कि आपके पिता क्या करते हैं, Because after all, he is a manager guru, right? कि वो एक मैनेजर गुरु है। It's not fun for me to have to say it's like that, but that's the truth of the matter. तो ये कहने में मुझे मजा नहीं आता है, लेकिन यही सच्चाई है। And if I don't say, then people will say, "Oh, he's disciple of Gaur Govinda Swami. Oh, let me go and surrender that." तो अगर मैं ऐसा नहीं कहूँगा, वो कहेंगे ओ श्री गौर महाराज के शिष्य हैं वो, तो मैं जाता हूँ और उनको जाके शरणागत करूँगा, Then you get shit. और फिर वो ठगे जाएंगे। So I can't try to be popular with my god brother and allow innocent person to get cheated. तो मैं अपने गुरु भाइयों के बीच प्रसिद्ध होके नादान लोगों को ठगने नहीं देना चाहता। So anyway, we went really long time. तो हम काफी लंबी देर तक जा चुके I हैं। never expected all of that, मैंने कभी इन सारी चीजों की कल्पना नहीं but I की, guess it had to come out. लेकिन मुझे उम्मीद है यही चीजें बाहर आनी थी। And now pray to Krishna with the information you have. How do you understand it? अब आप कृष्णा से प्रार्थना की थी, इतनी जानकारी को आप कैसे समझ पाएंगे? And let Krishna guide your intelligence and your faith to accept it or not to accept it. और कृष्णा को अनुमति दीजिए आपकी बुद्धि, आपकी श्रद्धा को मार्गदर्शन करने के लिए कि आप इनको स्वीकार करना चाहिए या नहीं। One time person came to Tallinn, he came to the temple, तो एक बार टैलिन में एक भक्त एक मंदिर में आए, this guy, and he was just like, he's like checking everything out, like looking at everything. और वो एक इस तरह सब तरफ देख रहे थे, सब तरफ छानबीन कर रहे थे। And I'm like, like, what are you doing? और मैंने उनको पूछा कि आप क्या कर Do रहे you हैं? need something? आपको कुछ He चाहिए? said, I'm a security professional, बोलते हैं मैं जो है पेशेवर सिक्योरिटी कार्य करता हूँ, and I'm just coming here to see like what's happening here. और मैं बस यहाँ देखने के लिए आया हूँ यहाँ आसपास क्या हो रहा है। I said, look, just pray to Lord Nityananda. मैंने कहा देखिए बस नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कीजिए, Sincerely pray to Lord Nityananda. एक निष्ठ तरीके से नित्यानंद प्रभु को And प्रार्थना he'll tell कीजिए, you yes or no. और फिर आपको If बताएंगे you हाँ really या want ना, अगर आप असल में जानना चाहते हैं। And if you don't have faith and you don't pray to Lord Nityananda, you're not going to know yes or no. और अगर आपको श्रद्धा नहीं है, आप नित्यानंद से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आप हाँ या ना नहीं जान पाएंगे। Only he can convince you. केवल वही आपको आश्वस्त कर सकते हैं। So why will I send you to a person who's the only person that can convince you? तो क्यों मैं आपको उस व्यक्ति के पास भेजूंगा, वही जो एकमात्र व्यक्ति जो आपको आश्वस्त कर सकते हैं, If I'm not authorized to do this. अगर मैं खुद प्रमाणिक नहीं, आधिकारिक व्यक्ति He's नहीं the होकर one person who can say he's not authorized. वही एकमात्र व्यक्ति है जो आपको बता पाएंगे कि ये व्यक्ति Why प्रमाणिक will नहीं I है। give you faith and encourage you to pray to Lord Nityananda? तो क्यों मैं आपको प्रेरणा दूंगा या श्रद्धा दूंगा नित्यानंद प्रभु को Unless प्रार्थना I'm करने के लिए, 100% convinced. जब तक मैं खुद 100% आश्वस्त हूँ या नहीं। Pray to Lord Nityananda कि आप नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना and let कीजिए him say, और उनको कहने का मौका दीजिए, instead of you trying to figure it out. कि इसके बजाय कि आप पता लगाने का प्रयास करें। Otherwise, it's some days yes, sometimes no. वरना कभी-कभी आप सोचेंगे हाँ, Even in the सोचेंगे class, sometimes he's my guru, others I don't know. नहीं। यहाँ तक कि अभी क्लास में बैठे-बैठे सोचेंगे, Maybe. कभी-कभी सोचेंगे ये मेरे गुरु हैं, हो Yes. सकता है नहीं, हाँ, No. ना, Maybe so. हो सकता है। You'll never come to a conclusion. कभी आप निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाएंगे। So everybody, thank you very much. सभी का Appreciate it. बहुत-बहुत धन्यवाद। Shri Shri Gauritai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Sarvaveda Bhaktavinda ki, Gaur Premanande. Thank you everyone. His Holiness Murali Swami Shri Gurudev ki. It's going to be an interesting ride, isn't it? बहुत दिलचस्प सफर रहा आज का। Life won't be boring for you. जिंदगी इतनी बुरी नहीं होगी। Huh?